Hello everyone, welcome to Mock Zone MBA preparation. So this is a XAT Decision Making 100 question marathon series. So it will be very useful before your XAT examinations. So please do watch it till the very end. So guys देखो ये थोड़े से लिंक्स है, ये डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दिया जाएगा. So do follow these groups if you want more support from us. Okay, and baki, you know that you need to like and subscribe the channel for more updates and series like these. Okay, chalo guys, so let's get started. So हम sets properly previous 5 years वाले questions that के discuss करेंगे. So here goes your first set. Chalo, let's start going through this. So first set is Mr. Singh lived in a sprawling housing society. He employed two part-time domestic helps, Vimla and Sharda. Vimla was responsible for cleaning and dusting, while Sharda took care of cooking. ठीक है, दो mates थे, Vimla cleaning and dusting, and Sharda cooking के लिए responsible थी. Now once Sharda fell ill and consequently took over for 3 days. अब यहाँ पे क्या है, शारदा बीमार पड़ गई and she consequently took leave for 3 days. अब जब शारदा रिटर्न हुई काम करने के लिए, शी लर्न दैट मिस्टर सिंग्स गोल्ड रिंग, अ गिफ्ट फ्रॉम हिज मदर, वाज मिसिंग. सस्पेक्टिंग थेफ्ट, मिस्टर सिंह हैड टर्मिनेटेड विमला. ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो विमला थी जो कि क्लीनिंग एंड डस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसको टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया. नाउ मिस्टर सिंह आस्क्ड शारदा टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग द हाउस along with an offer to double her salary. So Sharda accepted the offer as her previous two jobs were lost due to frequent health related absences. ठीक है, तो उसने ले लिया शारदा ने अब ये जॉब. She was struggling to make ends meet. This offer would go a long way to help her. तो उसको भी जरूरत थी शारदा को, तो she accepted this offer from Mr. Singh. Now next day, while cleaning under the dressing table, Sharda found the gold ring. Overjoyed, Mr. Singh expressed his gratitude by presenting Sharda a reward of ₹1,000 rupees. However, he made no mention of reinstating Vimla. अब यहाँ पे क्या हुआ, शारदा को गोल्ड रिंग मिल गई, बट जो विमला को मिस्टर सिंह ने निकाल दिया था, अब इवन आफ्टर गेटिंग बैक द गोल्ड रिंग, ही डिड नॉट ब्रिंग बैक विमला अगेन. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब यहाँ पे. So first question is Sharda was contemplating का मतलब सोच रही थी whether she would inform Vimla that she found Mr. Singh's ring. So which of the following considerations will best dissuade Sharda? Dissuade का क्या मतलब होता है, discourage करना, बताने के लिए. So if you know the meaning of this word, then only you will be able to solve. So which of the following will best dissuade Sharda in sharing the information? मतलब शारदा को ऐसा क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रोक देगा ऑफ टेलिंग विमला अबाउट द रिंग. तो ऐसा कोई रीजन ढूंढना है जो कि शारदा को रोक दे विमला को बताने से कि क्या है सच्चाई. नाउ लेट्स सी. मिस्टर सिंह विल प्रोबेबली टर्मिनेट शारदा इफ ही गेट्स टू नो दैट शी हैज रिवील्ड दिस इंफॉर्मेशन. सी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिस्करेज शारदा फ्रॉम लेटिंग विमला नो. राइट, यही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो उसको आगे बढ़ने से मना कर देगी कि विमला को नहीं बता दी, बिकॉज अभी जितने भी पैसे मिल रहे हैं, मिस्टर सिंह इज हर एम्प्लॉयर, राइट. अगर उसके खिलाफ जाके बताने के लिए बोलेगी तो उसका खुद का नुकसान हो जाएगा ना. सो यस, दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबल आंसर, बट लेट्स सी द अदर ऑप्शंस फर्स्ट. यहाँ पे नेक्स्ट क्या है देखो. Had Vimla done her job properly, she would have found the ring and avoided this incident. अब देखो, पुरानी बातें हो गई है, विमला को ऑलरेडी निकाल दिया गया है. यू कैन नॉट चूज एनी ऑप्शन विच सेज कि उसकी गलती थी, अगर अच्छे से कर लेती तो मिल जाता. सो दिस इज नॉट सॉल्विंग माय क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि शारदा को कौन सा चीज डिस्करेज करेगा इन शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद विमला, राइट. तो दिस इज डेफिनेटली नॉट माय करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बी
एलिमिनेट हो गया. नाउ लेट्स सी द थर्ड वन. विमला ऑलरेडी नोस शी हैज नॉट स्टोलन एनीथिंग, so telling her will not give her any new information. Again, option C, again it's not the best because it's true that विमला, उसको खुद को पता है कि उसने चोरी नहीं की, बट लोगों को या फिर मिस्टर सिंह के आगे सही प्रूव भी तो नहीं कर रही. एंड ऑल्सो हमारा क्वेश्चन है कि शारदा को कैसे प्रिवेंट करेंगे. अब उसको पता है तो शारदा को इससे क्या मतलब है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अगेन नॉट सॉल्विंग एनी पर्पस. अब ऑप्शन डी देखो. Sharda is not keeping well, and Mr. Singh warned her that her subsequent absences could lead her to termination. अब यहाँ देखो, it doesn't directly relate to the situation with विमला. यहाँ पे शारदा का अपना खुद का स्ट्रगल के बारे में बात हो रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है. बट विमला को कैसे मना हो, अगेन दिस इज नॉट helping me to solve the problem. Right? So this option is also out of context for us. Now let's look at the last one. Whenever Sharda was absent, Vimla used to help her by taking over her responsibilities. अब देखो, विमला को तो हेल्प कर रही थी जब भी शारदा एब्सेंट रहती थी. सो अगेन दिस इंस्टेड, ये तो अच्छी बात हो गई है ना. हमें कुछ ऐसा ढूंढना है कि शारदा को मना कर दे, मतलब शारदा उसके पास ना जा पाए. ये तो उल्टा पॉजिटिव वे में लिखा हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. So you can clearly see now that option A is our only correct option. ठीक है? So let's see the next question now from the same set. 2 months passed, and owing to Sharda's improved health and dedication, Sharda started working in 3 more houses. However, Vimla was dismissed from her jobs in 2 more houses, primarily due to the ring incident. Now, news of the discovery of the lost ring had not become public, and Sharda wanted to help Vimla. Sharda is contemplating over possible actions. अब वो सोच रही है कि क्या किया जा सकता है जिससे कि मैं विमला को हेल्प कर पाऊं. Now, which of the following actions by Sharda will best help Vimla? मतलब शारदा ऐसा क्या करे जिससे विमला को फायदा हो. So you need to choose that particular option. So let's analyze these options. So confront Mr. Singh about concealing the discovery of the lost ring from the housing society residents. अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ क्या है, ये तो उल्टा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा ना शारदा एंड बिटवीन मिस्टर सिंह. तो वो ऐसा क्यों ही हेल्प करेगी. शारदा ऐसे एक्शन लेगी नहीं ना जिसमें मिस्टर सिंह के साथ उसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. एंड इट विल डेफिनेटली नॉट हेल्प विमला. So this is not the correct option. Second, inform Vimla that the ring has been found and advise her to demand compensation from Mr. Singh for tarnishing her image. अब देखो, वो tarnish थोड़ी ना हुआ image. उसको लगा चोरी हुई है तो obviously कुछ ना कुछ तो करता ना. So it's not about tarnishing the image. And also यहाँ पे विमला को some satisfaction मिल सकता है compensation के नाम पे, राइट? बट यहाँ पे द प्रॉब्लम है, इट्स नॉट गारंटीइंग द फैक्ट कि वो अपना जो जॉब है उसको फिर से मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे गारंटी नहीं करता. तुम वहां पे जाके टार्निश करने के लिए कॉम्पनसेशन डिमांड कर लो, बट इट वुड नॉट हेल्प विमला कि उसको फिर से उसका जॉब मिल जाए. सो दिस इज ऑल्सो नॉट सॉल्विंग द पर्पस. थर्ड वन इज इन्फॉर्म एज मेनी डोमेस्टिक हेल्प्स इन द हाउसिंग सोसाइटी एज पॉसिबल दैट शी हैज फाउंड द रिंग. अब यहाँ पे डेफिनेटली दिस कुड हेल्प spread the news about the ring, but it not might reach the people who terminated Vimla's employment ना. डोमेस्टिक हेल्प को बता दोगे, बट जो उसको विमला को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा उन तक न्यूज नहीं पहुंचेगी ना. इट माइट बी पॉसिबल. सो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, quit the job at Mr. Singh's house and ask him to consider offering the job. अब देखो, शारदा खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहिए, राइट? कि खुद का जॉब गिव अप करके तुम विमला को मेरी जॉब दे दो. अगेन दिस विल नॉट, इवन दो इट इज हेल्पिंग विमला, बट अगेन शारदा के लिए तो वो सेटबैक हो जाएगा ना. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड डिसीजन मेकिंग बाय शारदा. तो ये नहीं होगा.
लास्ट वन देखो, divulged to Vimla's employers in the housing society that she has found the ring. Yes, this to some extent definitely will help विमला ना, जहां जहां वो काम करती है, अब जाके शारदा अगर बता देगी दैट आई हैव फाउंड द रिंग एंड इट हैज नथिंग टू डू विद विमला, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन विमला's कॉज ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है, यस दिस इज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द अदर ऑप्शंस। ठीक है, सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। द न्यूज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द लॉस्ट रिंग इवेंचुअली बिकेम पब्लिक। अब जाके पब्लिक हो गई वो न्यूज। The domestic health in the society were chagrined by the treatment meted out to Vimla and the fact that the news of the discovery was not made public immediately. ठीक है, ऑब्वियसली थोड़े से दुखी थे कि ये तुरंत पब्लिक क्यों नहीं किया गया जब ये सब सच्चाई बाहर आ गई थी। तो नाउ दे वांटेड टू एंश्योर दैट दे वुड नॉट गेट टारगेटेड एवरी टाइम इफ समथिंग गोज मिसिंग। ऑब्वियसली कि अब कोई तीसरा इंसान नहीं चाहेगा ना कि कोई भी किसी के घर में काम करेगा, अब विमला के साथ हो गया, व्हाट इफ हमारे साथ अब होने लग जाए। सो दे काइंड ऑफ फॉर्म्ड एंड क्या बोलते हैं, यूनियन फॉर्म कर लिया कि हमारे साथ अब ऐसा ना हो आगे चल के, तो क्या ऐसा डेवलप करे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी विल बेस्ट मिनिमाइज द चांस ऑफ एम्प्लॉयर्स, मतलब जो काम पे लगाते हैं, सस्पेक्टिंग द डोमेस्टिक वर्कर्स ऑफ थेफ्ट इन द फ्यूचर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा जिससे कि एम्प्लॉयर्स भी ज्यादा अब सस्पेक्ट ना करे एंड ऑल्सो जो डोमेस्टिक हेल्प जो प्रोवाइड करते हैं उनके भी ऊपर बात ना आए हमेशा। सो लेट्स एनालाइज द ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट the domestic workers will undergo a daily search by the security guards when leaving the society. Yes, definitely. अब देखो, this would best summarize the chance of employers suspecting their domestic workers of theft. अब इससे क्या होगा, अब क्योंकि डेली सर्च होगा, ये पोटेंशियल थेफ्ट एंड ऑल्सो जो ओनर्स के माइंड में होगा, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका माइंड अब क्लीन रहेगा ना कि क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड चेक करेंगे, सो दे विल ऑल्सो बी ऑफ दैट पर्टिकुलर माइंडसेट कि हाँ चलो अब चोरी होने के चांसेस कम रहेंगे। सो यस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट कुड सॉल्व आवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी इसको मैं साइड रखता हूँ, लेट्स एनालाइज द अदर ऑप्शंस। व्हेन अ डोमेस्टिक वर्कर इज टर्मिनेटेड ऑन अ सस्पिशन ऑफ थेफ्ट विदाउट प्रूफ, दे विल हैव टू बी पेड एटलीस्ट 1 मंथ सैलरी इन फुल। अब देखो इस वाले ऑप्शन के साथ क्या है, this might discourage the employers from terminating workers without solid proof of theft ना, ये ठीक है, but it does not directly address the issue of the suspicion ना। सस्पिशन बंद कैसे हो वो भी तो हमें एनालाइज करना था ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, द करेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल द डोमेस्टिक वर्कर्स शुड बी सबमिटेड टू द हाउसिंग सोसाइटी। अब देखो ये हेल्प तो करेगा डेफिनेटली इन ट्रैकिंग डाउन अ वर्कर इन केस ऑफ अ थेफ्ट, बट अगेन इट डज नॉट प्रिवेंट सस्पिशन ऑफ थेफ्ट ना। अब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके दिमाग में ये ना रहे कि कभी भी चोरी हो सकती है, ये अगेन इस वाले ऑप्शन से कम नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अब डी वाला देखो, इफ देर इज अ सस्पिशन ऑफ theft, the security guards will first conduct a thorough search of the affected house. अब देखो, this could again potentially prevent some false theft accusations, but again यहाँ पे क्या है, ये completely eliminate नहीं कर रहा chance of employer suspecting their domestic workers ना। अब thorough conduct कर दोगे, but suspicion तो पहले होगा ना कि doubt ना हो, तो again this is not solving my given problem. Last one, when a domestic worker is terminated on suspicion of theft, the employer will have to publicly apologize if the domestic worker can prove their innocence. अब देखो, वही घूम घूम फिर के वही बात आ गई, जो एम्प्लॉयर्स है वो अपना सस्पिशन कम रखे एंड एट द सेम टाइम
इन लोगों को भी जो हेल्प करते हैं, इन लोगों को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, तो बेस्ट ऑप्शन यू कैन क्लियरली सी इज इट्स इन ऑप्शन ए इटसेल्फ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू सेट नाउ। In Symbolis, an upcoming medium-sized IT services organization, only 1% of the employees were rewarded an annual performance bonus. Okay? Now, this annual performance bonus was decided by a committee formed of different functional heads. When Mrs. Nalini Kattayam received the annual bonus for the first time in her 5 years at Symbolis, Miss Shalini Sampath, a colleague with 7 years of tenure at Symbolis, told Nalini that this annual bonus was less a reflection of Nalini's performance and more a recognition of those who have fostered a strong rapport with the powers that be. तो इसका क्या मतलब है? शालिनी क्या कर रही है, बोल रही है तुम्हें तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं दिया गया ये, इट्स जस्ट कि तुम्हारा अच्छा पावर, जो भी लोग पावर्स में है या लीडरशिप पोजीशंस में, उनके साथ अच्छे रैपो होने की वजह से तुम्हें ये परफॉर्मेंस बोनस दिया जा रहा है। इट्स नॉट सोनली बिकॉज ऑफ योर परफॉर्मेंस। नाउ इंसिडेंटली शालिनी हैड नेवर रिसीव्ड एनी परफॉर्मेंस बोनस इन हर टेन्योर एट द कंपनी। अब क्या हुआ, शालिनी को कभी परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिला एट द कंपनी, उसको खुद नहीं मिला। ठीक है, सो लेट्स see the questions now. Shalini's comments deeply hurt Nalini, especially since she had always considered Shalini to be a close friend. Nalini felt like declining the bonus given her respect for and relationship with Shalini. Which of the following reasons, if true, will best dissuade Nalini from declining the bonus? अब यहाँ देखो again dissuade word given है, इसका मतलब नलिनी अब सोच रही थी, क्योंकि उसका अच्छा रिलेशनशिप था विद शालिनी, तो क्या पता वो सही बोल रही थी, सो आई शुड नॉट टेक द परफॉर्मेंस बोनस। बट अब एक ऐसा रीजन ढूंढो कि नलिनी को डिस्करेज करे फ्रॉम डिक्लाइनिंग द बोनस। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज शालिनी गुड एट हार्ट इज नोन फॉर मेकिंग इनसेंसिटिव कमेंट्स। सो यस, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है दिल की अच्छी थी, बट वो इनसेंसिटिव कमेंट्स पास ऑन करने के लिए जानी जाती थी। सो ऑब्वियसली ये बात उसको अगर पता चल गया तो नलिनी परफॉर्मेंस बोनस ले लेगी ना। सो दिस इज, आई कैन सी इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन गिवन दिस फैक्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड ऑप्शन इज, अभी और एनालाइज कर लेते, देन वील कम बैक टू दिस ऑप्शन। Shalini is known for confronting her boss whenever they change deadlines. अब देखो शालिनी कन्फ्रंट करती है बॉस से whenever they change deadlines. This does not provide a good reason for Nalini to accept the bonus ना। उसका बॉस के साथ क्या रिलेशनशिप था या वो उससे मैटर नहीं करता ना। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज कंप्लीटली रॉन्ग। सी वाला देखते हैं, इन हर क्लोज ग्रुप Nalini is the first person to receive the bonus. अब देखो again this does not directly address Shalini's comment that the bonus is more of maybe your favoritism. इसको favoritism ही तो बोलोगे ना, रैपो अच्छा था जो लीडरशिप पोजीशन में था तभी जाके तुम्हें मिल रहा था, शालिनी ने यही बोला था। अगेन यहाँ पे नलिनी को फर्स्ट पर्सन मिल रहा है, अगेन दिस डज नॉट हेल्प मी टू चूज द रीजन बाय नलिनी को अब बोनस ले लेना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वेरी फ्यू पीपल हु आर नॉट कंसिडर्ड लॉयल रिसीव द बोनस। अब अगेन देखो दिस कुड पोटेंशियली मेक नलिनी मोर इंक्लाइन टू डिक्लाइन द बोनस ना, क्योंकि it is implying that the bonus is given to loyal people, right? So again, this particular thing does not address why Nalini, it like basically क्या हो रहा है,
it does not address Nalini's concern about the fairness of the bonus distribution na? So here again this does not meet out the reason why Nalini को ले लेना चाहिए bonus. Next, Shalini's irrelevant comment about her previous boss pushed her out of that team. अब देखो ये जो ऑप्शन है दिस इज मोर ऑफ शालिनीज पास्ट एंड हर रिलेशनशिप विद हर प्रीवियस बॉस ना. अब यहाँ पे अगेन इट डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट रीजन फॉर नलिनी टू कीप द बोनस ना. तो उसका पास्ट में क्या रिलेशनशिप था इट डज नॉट मैटर. बस अभी प्रेजेंट में हम क्या देख रहे हैं कि वो दिल की अच्छी है बट वो पास ऑन कर देती है कमेंट्स. इस वजह से उसने बोल दिया होगा ये सब. सो दैट डज नॉट मीन कि फेवरेटिज्म की वजह से मुझे मिल रहा होगा एंड नाउ आई शुड एक्सेप्ट दिस. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलो, so let's quickly see the next question. Since receiving the performance bonus, Nalini noticed a change in how her teammates behaved with her. They appeared indifferent towards her. Although there were no major issues, Nalini could not help but sense that her teammates began to perceive her as having a closer relationship with the top brass, मतलब top of the leadership, following her recent accomplishment. मतलब basically जलने लगे थे. Maybe that could be the reason they were withdrawing from Nalini. Next, Nalini assumed that her teammates might be influenced by Shalini. ठीक है, तो नलिनी को क्या लगा कि शालिनी ने इन सबको इन्फ्लुएंस कर दिया होगा एंड नाउ कॉन्सिक्वेंटली दे सीम टू बी अवॉइडिंग इनफॉर्मल इंटरेक्शंस विद हर. तो शालिनी की वजह से मेरे जो टीममेट्स हैं मुझसे अवॉइड कर रहे हैं ऑफ हैविंग इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, राइट. नाउ एज नलिनी हैड टू रिलाई ऑन द सपोर्ट ऑफ हर टीम्स, व्हाट कुड नलिनी बेस्ट डू टू नॉर्मलाइज हर रिलेशनशिप विद देम. तो अब ऐसा क्या करे नलिनी ताकि वो अपने टीममेट्स के साथ नॉर्मलाइज कर सके रिलेशनशिप. सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन, डू नथिंग इन दी होप दैट थिंग्स विल नॉर्मलाइज इन टीम. अगेन हमें कुछ एक्शन लेना है. डूइंग नथिंग इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन. सो सिंपली इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट एनालाइज करते हैं. कॉन्फ्रंट शालिनी एंड आस्क हर टू स्टॉप स्प्रेडिंग रूमर्स. अब देखो this could lead to conflict and does not address the issue with the rest of the team ना. टीम के साथ उसको अपना जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करना है ना. शालिनी को जाके क्यों करेगी. सो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इनवाइट हर टीममेट्स फॉर डिनर ऑन अ वीकेंड. सी दिस को डेफिनेटली improve the relationship with their team members, right. उसके नलिनी के टीम मेंबर्स के साथ improve हो सकता है बट इट डज नॉट be effective or it cannot be effective given the current circumstance ना. अब डिनर के लिए ऐसे बुला लो और तुम कोई बुरा मान जाता है तो ऑब्वियसली होता है कि वो नहीं आएगा इंसान. सो अगेन दिस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप विद पीपल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. स्टार्ट सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट देयर बॉसेस टू हर टीममेट्स. अब देखो यहाँ पे क्या हो गया. it it will create a negative environment na, and this is very unprofessionalism. So definitely not the correct way of normalizing things. ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखो अब यही बचा है. सो टॉक टू हर टीममेट्स रिगार्डिंग देयर इंडिफरेंस टुवर्ड्स हर. यस डेफिनेटली. अब किसी के साथ प्रॉब्लम होता है तो सामने से जाके कन्फ्रंट करोगे ना कि क्या हुआ है, किस वजह से तुम लोग वो कर रहे हो, मेरे साथ इंडिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हो. So directly talking to the teammates would help her cause. So option E is the best course of action for Nalini to restore the relationship with her teammates. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है सेट का. A significant project recently arrived at Symbolis and Nalini was chosen to spearhead it. Spearheaded basically means team lead करना. She was given the autonomy to create her own team to collaborate and drive this project to success.
Now, Nalini wanted to build a team where each of the team members worked with great camaraderie. Camaraderie basically means good friendship and having good relationship with each other, right? As Shalini had previous experience of working with the client, Nalini offered her to join the team. अब क्योंकि शालिनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस था क्लाइंट के साथ काम करने में, सो उसने बात की कि टू जॉइन माय टीम. Now, however, Shalini expressed her willingness to work on the project only on the condition that she would be appointed as a team leader. अब शालिनी ने क्या कंडीशन रखा कि मुझे टीम लीडर बनाओ, मैं तभी तुम्हारा टीम ज्वाइन करूंगी. Now, Nalini was aware that the client was very difficult to work with. Of the three previous projects with the client, only the one where Shalini was the team member was successfully completed. तो obviously उसको पता है शालिनी को हम साइड में रख के भी काम नहीं कर सकते. She should be a member of the team, right? Now, what would be the best course of action for Nalini? क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टीम बनाने के लिए रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ शालिनी इन द टीम. अब क्या किया जा सकता है फ्रॉम नलिनीज पर्सपेक्टिव, यू नीड टू थिंक नाउ. ठीक है, तो पहला ऑप्शन एनालाइज करते हैं. फॉर्म अ टीम विदाउट शालिनी एंड इन्फॉर्म हर बॉस. अगेन एज आई टोल्ड यू, शालिनी वुड बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द टीम, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में वही प्रोजेक्ट पास हुआ था जिसमें शालिनी वॉज अ टीम मेंबर. तो अगेन कोई भी ऑप्शन जो शालिनी को इंक्लूड करने को मना करे, दैट विल बी रॉन्ग. Second is ask Shalini to reconsider as this project can be important to both of them. Yes, one of the best course of action. See, यहाँ पे क्या हो रहा है? It encourages open communication and at the same time वो negotiate भी कर पाएगी शालिनी के साथ, right? Which is definitely key to resolving conflicts ना. तुम डायलॉग करोगे एक दूसरे के साथ एंड रिकंसिडर करने के लिए बोलोगे, तभी तो जाके नेगोशिएट भी कर पाओगे. ठीक है, सो डेफिनेटली नलिनी कैन, इसमें क्या होगा कि नलिनी विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंस एंड हाउ शालिनीज एक्सपीरियंस एंड स्किल्स कैन कंट्रीब्यूट टू द टीम ना. तो दोनों का विन विन सिचुएशन होगा. सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस ऑप्शन अभी के लिए सेफली. बाकी देख लेते हैं. इफ वी फाइंड एनी बेटर चॉइस देन वील गो अहेड विद दैट, अदरवाइज यही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट, टेल हर बॉस दैट शालिनी शुड लीड द टीम एज शी हैज वर्कड विद द क्लाइंट बिफोर. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. दिस इज अंडरमाइनिंग नलिनीज अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी. उसको अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी दिया गया था ना, तो यहाँ पे अब नलिनी को लीड करने के लिए बोला गया था. वो किसी और, क्योंकि सिंस शालिनी इज गुड, यू कैन नॉट से अपने बॉस को जाके कि अब चलो वो मानना, अब वो डिमांड कर रही है तो उसको बना दो. दिस शुड नॉट हैपन. इफ यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड टेक इट फुल्ली. ठीक है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ एड्रेसिंग एनी सिचुएशन. नेक्स्ट देखो, कंप्लेन अबाउट शालिनीज एटीट्यूड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. अब देखो ये एस्केलेशन हो जाएगा. एचआर को, एचआर के पास जाके तुम ये सब बोलोगे तो शालिनी के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट और हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस वोंट हेल्प मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि मुझे शालिनी को भी टीम में चाहिए, प्लस आई शुड बी लीडिंग इट फ्रॉम नलनीज पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. लास्ट वन इज रिक्वेस्ट हर बॉस टू ऑर्डर शालिनी टू ज्वाइन द टीम. अब देखो ये इफेक्टिव नहीं होगा बिकॉज इट डज नॉट एड्रेस शालिनीज कंसर्न ना. शालिनी का भी तो कंसर्न था कि मुझे टीम लीड बनाओ. बट अब इस ऑप्शन में अगेन कमिंग बैक टू दिस ऑप्शन, यहाँ पे शालिनी को रिकंसिडर करने के लिए बोल दिया ना कि तुम अपना रिकंसिडर कर लो क्योंकि तुम्हारे करियर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होगा. एंड सिंस आई हैव बीन चोजन टू लीड द टीम, दिस विल ऑल्सो गेट सॉल्व. ठीक है, तो वो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. सो आई कैन सी दैट ऑप्शन बी इज द ओनली बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर नलिनी विच वी कैन हैव. ठीक है, चलो.
चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Raman had been working tirelessly as a project manager in the IT department of Flying Groceries, a renowned app-based supply chain company, for the past 3 years. Having graduated from a top-tier engineering college, he dived straight into the corporate world, managing projects with great zeal that inspired his seniors. मतलब काफी अच्छा काम कर रहा था. Now, at the end of the first year with Flying Groceries, impressed with his hard work, Raman's boss Suraj, the founder CEO of Flying Groceries, fast-tracked his promotion and made him delivery manager, responsible for multiple projects of a vertical. Suraj promised Raman the position of Chief Operation Officer, मतलब COO, in the fifth year of his tenure. In search of a greater career trajectory, Raman pursued entrance exams for business school. अब क्योंकि उसने सिर्फ engineering कर रखा था, but obviously, in order to have a good career trajectory, he looked for business schools. Now his efforts bore fruits as he secured a place in the country's best business school. Known for a strong alumni base, stellar placement records, and demanding academic requirements, Raman was delighted. He had 3 months to join the business school. Flying Groceries demanded that any employee who wished to leave the organization should give at least a month's notice. ठीक है, ये criteria था. Raman decided to continue working and enriching his work experience, which will be beneficial when applying to companies after graduating from the business. Therefore, he decided not to share the news of the offer letter with anyone else for the time being. क्योंकि नोटिस पीरियड सिर्फ एक ही मंथ का था, बट इट वाज सम मंथ्स बिफोर ही कुड जॉइन दैट इंस्टीट्यूशन, सो ही डिसाइडेड कि मैं अभी तक ये बात नहीं बता. सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ. So first is Flying Groceries was planning to implement a much needed update to enhance the functionality and user experience of their app. According to Suraj, the update was expected to take at least 6 months. अब सूरज कौन था? CEO of the company, right? And it was expected to take at least 6 months to complete. Suraj wanted Raman to lead this project because his leadership was critical for the project's success. However, Raman knew that he would be there only for 3 months. उसके पास 3 months का सिर्फ टाइम था. So he was not sure whether he should accept the project or not. Obviously, बड़ी responsibility and वो in between अगर छोड़ के चला जाएगा तो ये सब दिमाग में उसके चला होगा. So let's look at the question. Which of the following information, if true, will best assist Raman in accepting the role? अब कौन सा ऐसा रीजन है जो कि रमन को ये लीड प्रोजेक्ट लीड का रोल एक्सेप्ट करने के लिए मनाएगा? First is, during his time with Flying Groceries, Raman finished some projects ahead of the schedule. देखो, this particular option wouldn't help Raman to decide on the project. Huh? It's just because he completed some projects ahead of the schedule, it does not guarantee that he can finish this within the 3 months of the time frame. ठीक है, क्योंकि सूरज के लिए एक्सपेक्टेड था वो एटलीस्ट 6 months लगेगा. तो इवन इफ स्केड्यूल से टाइम से पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, बट दैट डज नॉट मीन कि 3 महीने मतलब निकलने से पहले पहले ही विल बी फिनिशिंग. सो दिस डज नॉट गारंटी कि वो एक्सेप्ट करेगा. मतलब दिस डज नॉट हेल्प रमन इन डिसाइड, राइट? नेक्स्ट, Raman could requisition more human resources to his team for the next 3 months. अब देखो, ये अगेन हेल्प नहीं करेगा कि रमन को डिसाइड करने में कि अभी ले लेना चाहिए, बिकॉज बाद में HR रिक्रूट कर लेगा टीम मेंबर्स, बट दैट डज नॉट गारंटी द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट ना. एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कंपनी उसको थोड़ा सोचना तो पड़ता है ना. सो ऑब्वियसली जस्ट बाय रिप्लेसिंग, मतलब मेरा रिप्लेसमेंट आ जाएगा, थिंकिंग दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब ये हेल्प नहीं करेगा. नेक्स्ट, सूरज माइट एडवाइस अगेंस्ट द अपडेट if he got to know that Raman was leaving soon. अब देखो, इस डर की वजह से कि सूरज अगेंस्ट हो जाएगा रमन से, इसलिए मैं अभी के लिए प्रोजेक्ट ले लेता हूं, बाद में मना कर दूंगा. दिस इज ऑल्सो नॉट एन एथिकल वे ऑफ थिंकिंग कि उसको ले लेना चाहिए या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, द लास्ट 2 projects Raman led were successfully completed by his subordinates during his exams. अब देखो, ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बोल रहा है कि लास्ट टाइम जब उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था तो जो उसके सबऑर्डिनेट्स या कलीग्स है, दे वर रिस्पॉन्सिबल इनफ
to complete that project successfully behind his absence, right? So obviously ये वाला जो ऑप्शन है ये रमन को हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कि मेरे एब्सेंस में अगर मैं निकल गया दैट हिज अदर कलीग्स विल बी कॉम्पिटेंट इनफ टू फिनिश और कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। तो अभी के लिए दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको रिजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली डी विल बिकम द आंसर। रमन हैड प्रीवियसली टेकन मेनी प्रोजेक्ट्स होम एंड द बिजनेस स्कूल वुड हैव नो क्लासेस ड्यूरिंग द वीकेंड्स। अब देखो बिजनेस स्कूल ज्वाइन करने के बाद यू कैन नॉट वर्क, सब ऑफिस का पॉलिसी होता है। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट आंसर, सो डी इज द ओनली वन। सो फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स रमन रिजाइन। ठीक है, रमन ने रिजाइन कर दिया। सूरज वॉज शॉक्ड बाय रमन्स रेजिग्नेशन। अब क्योंकि लास्ट में उसने बोला, क्योंकि एक महीने का नोटिस पीरियड था ना, एंड सेकेंड मंथ में उसने रेजिग्नेशन का वो डाल दिया। सो ऑब्वियसली रमन वॉज शॉक्ड एंड सॉरी सूरज वॉज शॉक्ड एंड आस्क्ड हिम टू रिकंसिडर हिज डिसीजन। व्हेन रमन एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू सूरज फेल्ट बिट्रेड, मतलब धोखा दे दिया मुझे लास्ट मोमेंट में बता के। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन देम एंड दे swore टू नेवर वर्क टुगेदर अगेन। Raman joined the business school. However, he soon realized that the summer internship placements were approaching. Consequently, he would require verification of his responsibilities from flying groceries. Obviously, internship placement के time भी verify होता है if you are having work experience. तो उस वजह से उसको tension होने लगी. Now let's see what is the question. Which of the following actions is the most appropriate for Raman to obtain his verification? कौन सा स्टेप एथिकली भी रमन के लिए सही रहेगा, दैट वी नीड टू चूज। रमन शुड राइट अ सिंसियर एंड प्रोफेशनल अपॉलजी लेटर एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर द आर्ग्यूमेंट रमन हैड विद सूरज। अब देखो द प्रॉब्लम इज यहाँ पे पर्सनल रिलेशन विद सूरज थ्रू अनऑफिशियल मीन्स डज नॉट गारंटी कि उसको वेरिफिकेशन में हेल्प करेगा। देखो सिंसियर अपॉलजी लेटर लिख दोगे बट दिस इज एन अनऑफिशियल वे, ठीक है। सो दिस कैन नॉट and also this is not an appropriate way to obtain the required documentation, so this won't follow. Next, Raman should write an email to Suraj emphasizing Raman's roles and responsibilities and request him to approve them. देखो although इसमें more official है and on point compared to this particular option A, but again it does not guarantee a smooth process for Raman to obtain the documentation ना। मतलब even if it is with official channels, सूरज might delay the process or downplay his responsibilities ना, जानबूझ के कुछ और दिखा दे। So again this does not serve Raman's purpose. Next, Raman should contact the HR representative to facilitate the verification of Raman's responsibilities. Yes, देखो this is the most appropriate way for Raman to obtain whatever he has worked on, क्योंकि it is making the HR's responsibility to provide the valid documentation, which is definitely true. HR की responsibilities होती है. So this is the best. अभी के लिए रखते हैं. Let's eliminate the other ones also. Raman should reach out to mutual acquaintance within the company and ask her to interview. अब देखो, although mutual acquaintance within the company is definitely a good way कि verify करे, but again, if you ask the फॉर्मर कलीग हु लैक्स अथॉरिटी, क्योंकि कलीग है ना, उसके पास अथॉरिटी थोड़ी ना है, तो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ गेटिंग एनी वेरिफिकेशन. Raman should re-establish communication with Suraj through social media platforms. Again, this is an informal way. You cannot do. So only option is option C. Next one देखो. Raman received a verification letter from Flying Groceries outlining his basic job responsibilities during his tenure there. However, Raman required a document to substantiate the additional responsibilities he undertook at Flying Groceries by going beyond his call of duty. Sadly, he did not have any documentation of such additional responsibilities. ठीक है, यहाँ पे additional responsibilities जो अलग अलग काम किया उसको proof चाहिए. So what is the best way to help substantial the additional responsibilities Raman undertook? अभी हमें best निकालना है कि एडिशनल वाला कहां से पता कर पाए.
Raman should create documentation detailing quantifiable metrics and result about his extra work based on his memory. Again, देखो, based on the previous memory, it does not solve the purpose. ये verify नहीं कर सकते. Memory based कुछ भी verifiable नहीं होता. So this is definitely not the correct answer. Next, Raman should collect testimonials on his additional responsibilities from his ex-teammates. Yes, देखो, this is one of the best way. टेस्टिमोनियल्स ले, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या अंडरटेक किया था. अब देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरह मेन वेरिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सो दिस इज, तुम फॉर्मर कलीग्स के साथ उनका टेस्टिमोनियल लेके यू कैन वेरी वेल प्रेजेंट दिस. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे. अभी के लिए वील कीप इट सेफ. लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस. रमन शुड राइट अ पब्लिक पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. अगेन, taking down anything to public media or social media platforms is not recommended, hence definitely reject करेंगे. Next, Raman should call Suraj and explain that he will not be able to get a consulting or an operations job without verification. So this is more of you are just begging that person, right? उसको जाके बोल रहे हो कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, प्लीज मुझे दे दो. That is also not the correct way. नेक्स्ट, रमन शुड रीच आउट टू द रिसेंटली रिक्रूटेड चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर. आप देखो, वो रिसेंटली रिक्रूट हुआ है कंपनी में. अब उसके पास जाके वो सप्लाई चेन ऑफिसर थोड़ी ना जाके वो बोलेगा, उसकी टेस्टिमनी देगा. एंड ऑल्सो ही माइट नॉट बी फेमिलियर विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना, जो उसने सूरज ने ले रखी थी. सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. सो यू कैन सी नाउ ओनली ऑप्शन बी will be the best course of action. ठीक है. नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं. नेक्स्ट सेट, कास्ता, a small industrial town, hosted a steel plant and its associated ancillary companies. Most of its residents were steel plant employees from different states of the country. While the town offered employment opportunities, it lacked an airport. For those wanting to fly, the nearest airport was in Michaelganj, 100 kilometers from Kasta. To reach the airport, people rented taxi services available at Kasta, and Prabhu was one such taxi service provider. Prabhu's rates were reasonable. A trip to airport cost rupees 2200, but for a round trip, the fare was rupees 3000. Yet, it was not just the affordability that made him popular, his reputation for punctuality. क्या उसका प्लस पॉइंट था? Apart from affordability, punctuality and reliability was unmatched. When it came to ensuring the safety of women traveling alone, he would always be the first choice. Such was his trustworthiness that even the steel plant would solicit his services when expecting solo female visitors. Moreover, whenever residents encountered issues with their personal cars, they would turn to Prabhu for help. However, the world shifted when the COVID pandemic struck. Travel restrictions and safety concerns limited Prabhu's trips to Michaelganj for over a year and a half. Financial strain followed with accumulating interest on his home loan. तो उसको भी obviously problem आने लगी. Now he was weighed down by debt, but things improved once COVID-19 travel restrictions were lifted. Obviously उसको ट्रेन एयरपोर्ट से टू एंड फ्रो वाली जो सवारी होती थी वो ज्यादा मिलती थी. तो ऑब्वियसली कोविड-19 में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हो गया था, एंड वंस इट वाज lifted, then only he was able to earn something, right? Now, having faced financial hardships during the COVID-19, he sought to offset his losses by raising the fare. तो लॉस कम हो उसको, उसने क्या किया, अपना प्राइस बढ़ा दिया. Yet, he was aware of the stiff competition in town where many others offered services at a similar fare as his. ठीक है. तो काफी टाइट कंपटीशन भी था. So let's see the question. इस पे क्या बना है question. First is, Prabhu decided to increase the taxi fare for all future trips. He planned to charge rupees 3000 for one way trip. पहले क्या था, 2200 था. वन साइड ट्रिप का 2200 था एंड राउंड ट्रिप का 3000 था पहले का. अब हो गया वन वे का 3000 एंड 1000 मोर, मतलब टोटल 4000 फॉर अ राउंड ट्रिप. So which of the following facts will best help Prabhu's regular customers
इन एक्सेप्टिंग द इंक्रीज इन फेयर। अब देखो उसका प्लस पॉइंट क्या था, इवन दो उसने फेयर इंक्रीज कर दिया, उसका सेलिंग पॉइंट क्या रहेगा प्रभु का, कि मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन है ना, तो हमें यही आंसर में कोई ना कोई ऑप्शन में ढूंढना है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप। अब देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली इज वन पॉइंट की हाँ चलो लोग मान जाएंगे, बट अगेन दिस इज नॉट द पॉइंट ऑन विच प्रभु कैन परसुएट द कस्टमर ना, कि वो मेरे पास ही आएंगे। सी, वंस यू बिल्ड ट्रस्ट विद द कस्टमर्स, तुम प्राइस बढ़ा भी दोगे तो देन ऑल्सो द कस्टमर विल कम टू यू बिकॉज यू आर अ रिलायबल पर्सन एटलीस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग वो होता ही है, इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगा ही, बट दिस डज नॉट टेल अस कि क्यों प्रभु के पास लोग आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज प्रभु इज पंक्चुअल एंड रिलायबल। यस, देखो ये पॉइंट है, दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ प्रभु, कि इवन दो मैंने प्राइस बढ़ा दिया बट प्रभु इज स्टिल पंक्चुअल एंड रिलायबल, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अभी के लिए। आई कीप इट सेफ, आई एम नॉट मार्किंग इट एज करेक्ट, बट अभी के लिए रख रहा हूं, आई एम नॉट रिजेक्टिंग दिस डेफिनेटली। नेक्स्ट, प्रभु इज फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप्स। सी देखो, सिंपैथी के बेसिस पे तुम बोलो कि मैं प्राइस बढ़ा दूंगा सो दैट यू कैन पे, कस्टमर को ऐसे तुम नहीं अट्रैक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली नॉट द करेक्ट आंसर। प्रभु ऑफर्स रिपेयर सर्विसेज टू रेजिडेंट्स कार्स रिलेटेड इश्यूज। अब देखो ये एडिशनल सर्विसेज है जो प्रभु प्रोवाइड करता है, बट दिस डज नॉट कीप योर रेगुलर कस्टमर्स टू कम टू यू ना। तुम रिपेयर सर्विसेज ये तुम्हारा एड ऑन सर्विस है, बट दिस डज नॉट एक्सप्लेन कि रेगुलर कस्टमर्स तुम्हारे साथ ही क्यों जाना पसंद करेंगे, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रभु सर्व्स मेनी टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द स्टील प्लांट। अब देखो ये बहुत ही इररेलेवेंट है टू द कंसर्न ऑफ द रेगुलर कस्टमर्स ना। तुम प्रीमियम कस्टमर्स को ले जाते हो, दैट डज नॉट मीन कि रेगुलर कस्टमर्स को इस वजह से तुम अट्रैक्ट कर पाओ। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आफ्टर प्रभु इंक्रीज्ड हिज चार्जेस बाय 30%, द रेवेन्यू ग्रोथ वाज प्रॉमिसिंग इन द बिगनिंग, स्पेशली फ्रॉम द स्टील प्लांट्स ऑफिशियल ट्रिप्स। ठीक है, कहां से, स्टील प्लांट था ना उधर, तो वहां के ऑफिशियल ट्रिप से अच्छा खासा वो होता था, प्रॉमिसिंग ग्रोथ थी। बट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही नोटिस्ड अ डिप इन प्राइवेट बुकिंग्स। On exploring further, Prabhu realized that while women traveling solo still preferred Prabhu's service, some of his regular customers were choosing his competitors when traveling as a family. However, he knew that his competitors, while charging lower than him, although उसको पता है कि उसके competitors कम पैसा ले रहे हैं, were still tardy and sometimes cancelled at last minute. काफी डिले कर देते थे, स्लो थे, एंड कभी कभी तो लास्ट मोमेंट में वो कैंसिल कर देते, मतलब ऑब्वियसली रेगुलर एंड ट्रस्टवर्दी नहीं थे, उसको ये पता था। तो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बेस्ट हेल्प प्रभु टू रिटेन हिज रेवेन्यू। अब इसका मतलब है जैसा प्रभु का रेवेन्यू फ्लो है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो चल रहा है वैसा सही बना रहे प्रभु के लिए। रिवर्ट द प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज टू हिज प्रायर रेट, इसका क्या मतलब है कि प्रभु को पुराने प्राइसिंग में चले जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा एम क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, कि प्रभु को समहाउ अपना जो रेवेन्यू है सेम रखना है। ठीक है, रेवेन्यू फ्लो उसको सेम रखना है, हमारा ये है रिटेन हिज रेवेन्यू फ्लो, मतलब जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो एटलीस्ट वैसा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे जाके अपना और सस्ता कर दोगे जैसा कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग है। ठीक है, तो दिस डज नॉट वर्क इन प्रभुज फेवर, सो डेफिनेटली नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, गिव 50% डिस्काउंट फॉर पर्सनल ट्रिप्स। अब देखो यहाँ पे गिविंग 50% डिस्काउंट वुड डेफिनेटली ड्रास्टिकली इम्पैक्ट हिज रेवेन्यू सोर्सेज ना। अब तुम डिस्काउंट दोगे, अब वॉल्यूम देखो, एक मेथड होता है, या तो तुम अपना प्राइस बढ़ा दो या फिर तुम वॉल्यूम गेम पे खेलो। डिस्काउंट देके वॉल्यूम गेम पे खेलो, बट यहाँ पे हमारे पास कोई हिंट ही नहीं है ना कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल विल बी मोर या फिर वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ गया है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डिस्काउंट देके उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा।
ठीक है, तो दिस ऑल्सो डज नॉट गारंटी कि उसका रेवेन्यू फ्लो उतना ही सस्टेन रहे। नेक्स्ट, स्टिक टू हिज करेंट इंक्रीज चार्जेस। अब देखो, प्रभु का यूएसपी क्या है, दैट वो ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल है, एंड उसको पता है कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स है अभी के लिए लोअर चार्ज कर रहे हैं, बट कस्टमर के पास अगर तुम रिलायबल एंड डिले करके करोगे एंड कैंसिल भी कर दोगे, यू वॉन्ट लास्ट इन दिस पर्टिकुलर गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यस, अगर रिटेन करना, अभी देखो यहाँ पे सोलो ट्रैवलर, विमेन ट्रैवलिंग सोलो, यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, एंड ऑब्वियसली जो स्टील प्लांट का है वहां से सर्विसेज आ रहा है, तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट इज, हाँ चलो अभी के लिए इंक्रीज्ड चार्जेस जो कर रखा है उस पे बने रहे, सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस ऑप्शन सी। ठीक है, लेट्स सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। चार्ज अ प्रीमियम व्हेन विमेन ट्रैवल सोलो। अब देखो, तुम फालतू का जिसके थ्रू पैसा बन रहा है, अब उन्हीं के ऊपर बोलो कि सिंस माय अदर स्ट्रीम ऑफ इनकम इज बिकमिंग लो, तो आप मुझे ज्यादा पैसे दे दो, इससे तो विमेन ट्रैवलिंग सोलो भी भागने लगेंगी ना। वही तुम्हारे मेन कस्टमर्स है, मेजर कस्टमर्स है, अब उनसे ही तुम ज्यादा पैसे लेने लगोगे तो वो भी भागने लगेंगे, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। नेक्स्ट, चार्ज अ प्रीमियम फॉर द स्टील प्लांट्स ऑफिशियल ट्रिप्स। अगेन दिस इज सिमिलर टू ऑप्शन डी, क्योंकि सेम है। देखो, चार्जिंग अ प्रीमियम ऑन टॉप ऑलरेडी इंक्रीजेस प्राइसेस एंड इट माइट डिस्करेज द स्टील प्लांट फ्रॉम अवेलिंग हिज सर्विसेज ना। जो स्टील प्लांट ने कर रखा है वो उसके सर्विस लेना बंद कर देगा अगर ज्यादा पैसे लेने लगोगे। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो यू कैन ओनली सी, अगर अभी के लिए रेवेन्यू फ्लो रिटेन करना है, यू नो कस्टमर कभी ना कभी मेरे पास आ ही जाएंगे, कुछ दिनों के लिए उसके पास जाएंगे, डिस्काउंट के पीछे भागेंगे, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट दे विल रियलाइज कि वो रिलायबल पर्सन नहीं है, हिज कॉम्पिटिटर। सो ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, चलो इस सेट का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। सरोज, द न्यू फाइनेंशियल ऑफिसर एट द स्टील प्लांट, used the services of Manoj when he first traveled from Michaelganj airport to the plant. Now, Manoj was a rival of Prabhu in the taxi service business at Kasta. Manoj, upon learning that Saroj would be responsible for hiring taxi services for the steel plant, charged Saroj only 1500 for that trip. Now, further, he assured Saroj to charge the same for one-way trip and additional rupees 500 for a round trip to the airport. Obviously, थोड़ा सस्ता करने के चक्कर में, ताकि उसको ये मिल जाए सवारी। Now, upon realizing that the plant utilized Prabhu's services for all official trips to the airport, Saroj contacted Prabhu to discuss the rates offered by Manoj and inquired why the plant should continue using his service when Manoj provided the same at a lower price. Obviously, अगर कोई दूसरा competitor कम price में दे रहा है, so why should one use his service? तो उससे question पूछा है. So Prabhu realized that Manoj charged an extremely low price just to push Prabhu out of his business in the steel plant. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस गिवन बाय प्रभु विल बेस्ट हेल्प दिस कॉज। तो मतलब प्रभु को ऐसा क्या बोलना चाहिए सरोज को कि उसका ओवरऑल जो जस्टिफिकेशन है क्यों वो प्राइस ज्यादा ले रहा है उसको जस्टिफाई कर पाए। सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस क्विकली, एंड यू नीड टू नोटिस वन थिंग ओवर हियर इज दैट सरोज इज अ न्यू पर्सन। ठीक है, and he is not familiar with the reliability of Prabhu's service also, right? क्योंकि वो नया है तो reliability is the main thing, and the reason given by Prabhu should be enough to convince him to trust Prabhu over Manoj. तो हमें ऐसा कुछ रीजन ढूंढना है जिससे वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो। ठीक है, बिकॉज सरोज इज अ न्यू पर्सन इन टाउन। सो लेट्स सी, प्रभु शुड warn सरोज दैट Manoj's offer is not sustainable. Again, this is not making any sign कि यहाँ पे सस्टेनेबल उसका बिजनेस नहीं है, so what would सरोज डू? उसको तो प्रभु को अपना वो करना है, जस्टिफाई करना है, so this is definitely not the correct choice. Prabhu should request Saroj to talk to a few of his colleagues before taking any decision.
अब yes, definitely, you should keep in mind Saroj is a new person. तो best person for Saroj to believe would be their colleagues ना, जहाँ पे स्टील प्लांट में काम करता है ये. अगर उनके थ्रू इफ दैट पर्सन हैज अ गुड वर्ड ऑफ माउथ विच वी से, अगर अच्छा वर्ड ऑफ माउथ है देन ओनली वी कैन से ना. एंड सबसे अगर तुम अगर ऑफिस जाते हो, इफ यू आर न्यू टू अ पर्टिकुलर ऑफिस, सो इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू आस्क योर कलीग्स विच इज द बेस्ट वे टू कम, राइट. अगर उन्होंने रेकमेंड कर दिया सो प्रभु सजेस्टेड दैट ओनली. तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस. आई जस्ट कीप इट. लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस. सो प्रभु शुड इंट्रोड्यूस सरोज टू निधि, मिस निधि तावड़े, हिज रेगुलर कस्टमर. अब देखो, निधि तावड़े विल बी अगेन अ स्ट्रेंजर टू सरोज ना, तो स्ट्रेंजर की बातों पे उतना भरोसा नहीं कर सकते देन हिज कलीग्स. कलीग्स विल बी अ बेटर थिंग ऑब्वियसली एनी डे. तो ये डेफिनेटली ऑप्शन बेटर नहीं है देन दिस. Next, Prabhu should offer to lower his price to the one offered by Manoj exclusively for the steel plant. अब देखो, ये ऑल्दो कन्विंस कर देगा सरोज को टू चूज प्रभु, बट दिस विल नॉट बी अ सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर प्रभु ना. सो उसके लिए भी सस्टेनेबल होना चाहिए. एंड ऑल्सो इट वोंट ओनली हर्ट प्रभु, बट एज सुन एज प्रभु वुड वांट टू इंक्रीज हिज प्राइस, सरोज फिर से भाग जाएगा उसके पास, मनोज के पास. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन. Now Prabhu should tell Saroj that Manoj is unreliable and tardy again. दूसरों की बुराई करके तुम कभी किसी को जीत नहीं सकते. डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो यू कैन क्लियरली सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलो लेट्स do this new set now. Mrs. Vinita Lama, a respected figure in the small town of Jampur, found herself stranded on the road once again when her old small hatchback car broke down. Finding herself alone on the deserted road with no one to help, Vinita, in desperation, called Sham Saigal, the general manager of Balaji Motors, the only dealership in Jampur that sells Diplomatico cars, the brand that Vinita drives. So obviously उसके GM को call करके बुलाया, and Vinita knew Sham was from her frequent visits for getting her hatchback car serviced. ठीक है, कार सर्विसिंग के टाइम से वो शाम को जानती है. Now, surprisingly, he arrived within 15 minutes, accompanied by a mechanic from his dealership. Further, he arranged for the vehicle to be towed and kindly offered Vinita a ride home. On the way back, he advised Vinita to exchange her old car with a new sports utility vehicle, that is an SUV, on a good discount from his dealership. Now, he assured her that he would add several additional services to ensure SUV remained in excellent condition for many years ahead. So अब ये set हो गया. Let's try to read the questions. Due to her old car's frequent breakdowns, Vinita decided it was time to replace it. She was afraid whether buying a Diplomatico SUV from Balaji Motors, as suggested by Sham, will be a right decision for her. So, which of the following pieces of additional information will help her most in taking the right decision? So, let's look at the options. She has no idea which SUV to choose and she feels that all SUVs are the same. अब देखो यहाँ पे this particular option highlights Vinita's lack of knowledge ना. यहाँ पे उसको पता नहीं है SUV के बारे में, and it does not directly influence the decision itself. कोई किसी को नॉलेज नहीं हो तो अपने डिसीजन के बेसिस पे वो इन्फ्लुएंस, मतलब अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस इंसान नहीं कर सकता. तो डेफिनेटली दिस विल नॉट हेल्प हर इन मेकिंग द राइट डिसीजन. Let's look at the next one. Her brother, an SUV enthusiast staying in a metro city, has advised her to stay away from Diplomatico cars. अब देखो, हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सा चाहिए दैट विल हेल्प हर मोस्ट इन टेकिंग द राइट डिसीजन. उसको ये नहीं डिसीजन लेना कि कार लेना ही लेना है या नहीं लेना. इट कैन बी ईदर वे. जस्ट उसको डिसीजन लेना है, मतलब yes or a no in purchasing the car. Now, if you look at this, this definitely provides a critical information in order to be for Vinita to make a decision ना, because उसके भाई को पता है and he is an SUV enthusiast, तो उसके पास knowledge and experience ज्यादा होगा. And also it will be a trusted source, trust
ट्रस्ट वर्दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर विनीता ना, तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस इन मेकिंग अ राइट डिसीजन, क्योंकि वो एडवाइस कर रहा है दूर रहने से, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल हेल्प हर मेक द डिसीजन। तो एटलीस्ट ये ऑप्शन अभी के लिए आई विल कीप दिस सेफ। लेट्स एनालाइज द अदर ऑप्शंस। इन जामपुर SUVs have a 6 month waiting period. However, one red color Diplomatico SUV, not her favorite color, is available at Balaji Motors. Again, this particular option तो और उसको कंफ्यूज कर देगा वेटिंग पीरियड की वजह से। इफ यू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन दिस विल नॉट हेल्प, तो डेफिनेटली नॉट द करेक्ट आंसर। Jampur, being an old city with congested roads, has a parking problem in many areas. अब यहाँ पे देखो, although this particular option does not eliminate SUVs entirely, क्योंकि she might still choose one of the benefits ना, कि उसके पास SUV में काफी स्पेस रहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ कंजेशन की वजह से इफ यू मेक दिस डिसीजन इट इज नॉट अ गुड वन, राइट? तो दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। Last option, a new dealership of Panther Motors, the highest selling car brand in the country, is about to come to the town soon. Again, new dealership आ रहा है, but it does not tell Vinita if they offer SUV or not ना। SUV को लेकर डिसीजन लेना है, so that's why this is also not the correct answer. तो this particular option will definitely help her make a decision at least, ठीक है? चलो, next one. Sham's satisfaction from meeting the month's quota for selling SUVs turned to a dismay when one of his young executives nervously told him that he mistakenly punched an extended warranty for free to Vinita's purchase contract earlier that morning. Okay? Now, this could not be reversed from the company system and meant a loss of rupees 19,000 for the dealership. The executive was very sorry and was ready to take accountability. However, the amount was too large to be borne by the executive. Sham was not concerned about placing accountability, but rather the recovery of the loss. He was unsure whether he should ask Vinita for the money. So, the following piece of information are available to Sham. तो इनमें से क्या कर सकते हैं Sham? Let's quickly try to analyze them. First is, अब यहाँ पे ये करना है कि फाइनल क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विल मोस्ट लाइकली स्टॉप शाम टू रिकवर द मनी फ्रॉम विनीता। ऐसे कौन से ऑप्शंस तुम्हें ढूंढना है, चॉइसेस, जिससे कि उसको स्टॉप कर दे विनीता से पैसे लेने के लिए। सो यू नीड टू लुक एट दोस ऑप्शंस। तो शाम इज अवेयर दैट विनीता इज वेरी हैप्पी विद द डील ही गेव टू हर। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, even if she is happy, अब देखो happy, she is definitely happy, but error isn't her fault ना। जो एरर किया गया है डीलर की वजह से उसकी तो गलती नहीं है। सो डज दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सफिशिएंट रीजन कि उसको नहीं लेना चाहिए? नो, राइट? शाम को स्टिल अपना रिकवर करना चाहिए ना, वो हैप्पी है, तो हैप्पी की वजह से यूज से कि नहीं इससे नहीं रिकवर करना चाहिए, इट्स नॉट करेक्ट। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट आंसर। Next, Sham feels the Diplomatico's software system is complicated for new employees, which might have also played a role in the error. Again, this does not help me in justifying why Sham should not collect money from Vinita. So this is also not correct. Vinita has a wide network and can connect Sham with many potential customers. देखो, yes, exactly. अगर तुमने विनीता से पैसे रिकवर करने की कोशिश की, देन यू नो इफ शी हैज अ वाइड नेटवर्क, तो मे बी और पोटेंशियल कस्टमर्स वो ले आएगी ना। इवन इफ यहां से हमें लॉस हो रहा है, वील ट्राई टू कवर फ्रॉम अदर पोटेंशियल कस्टमर्स ना। अगर तुमने विनीता को ही खुश नहीं रखा एंड इफ यू टेक और कलेक्ट मनी फ्रॉम विनीता, these potential customers will also go away ना। So this is one of the good options as to Sham not asking for money. ठीक है? Next, Vinita's brother, a car enthusiast, has enough knowledge of how car dealers operate. अब देखो कार डीलर कैसे ऑपरेट कर रहा है या नहीं, what has it has to do with Sham making the decision। यहाँ पे तो शाम को डिसीजन करना है ना, डिसाइड करना है, सॉरी। तो ये डेफिनेटली विल नॉट हेल्प। सो लास्ट इज दिस,
अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देखो सी तो एक करेक्ट हो गया, तो दिस अब ये भी एलिमिनेट हो गया, सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस इज सी एन ई। तो देख लेते हैं, श्याम फील्स that if he maintains the current sales volume, he might be able to persuade Diplomatica to write off the amount. अब देखो ये जो है, if Sham can convince Diplomatico, that is the car manufacturer, to take the cost of extended warranty, it eliminates the need to approach Vinita altogether ना। अगर इतना वॉल्यूम अगर आ रहा है शाम की फैक्ट्री या फिर कार कंपनी से, इतना सारा सेल्स आ रहा है, तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वो बोल सकता है ना कि हमारी तरफ से काफी बिक रहे हैं, सो इफ यू कैन राइट ऑफ दिस, सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर, इफ दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू श्याम, वो विनीता से पैसे रिकवर नहीं करेगा तब। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 months passed. While returning from a friend's house, Vinita's new SUV was hit by another car. Fortunately, she was not injured, but the SUV was badly damaged. Surprisingly, when Vinita took the car for repairs to Balaji Motors, she was told that the repairs would not cost her anything as the extended warranty on her car covered such accidents. Vinita could not recall purchasing such a warranty, hence, she contacted Sham. Sham informed her that the extended warranty was mistakenly punched into her contract by an executive. As this mistake could not be reversed due to the company's rigid policies, Sham bore the cost of rupees 19,000. He further added that Vinita should consider it as a gift from Balaji Motors for purchasing the highest priced Diplomatico SUV. तो उसको बोला कि आप हमारी तरफ से as a gift for buying such a high priced SUV इसको रख लो, and I am bearing this cost. Now, as Vinita rode back home, she wondered if she should pay rupees 19,000 to Sham, since the extended warranty came to her aid that day. क्योंकि उसको भी लगा कि मुझे काफी सारे पैसे पे करने होंगे, बट नाउ सिंस शी डज नॉट हैव टू पे, तो वो सोचने लगी। सो लेट्स सी, लुक एट द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंपेलिंग रैशनल फॉर विनीता टू जस्टिफाई नॉट पेइंग। अब वो सोच तो रही थी कि 19,000 इफ आई शुड पे बैक टू श्याम और नॉट, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा कोई ऑप्शन बताओ कि विनीता को अपने दिमाग को जस्टिफाई कर पाए कि क्यों उसको नहीं पे करना चाहिए 19,000। सो ऑब्वियसली उसने इतना महंगा कार किया है, एटलीस्ट महंगा कुछ खरीदने का एक वो रहता है ना, इफ यू बाय अ हाई एंडेड व्हीकल और बी इट एनीथिंग, you always tend to ask for warranty or something add as an add-on, right? तो वैसे टाइप का ऑप्शन सोचेंगे। So let's see the options now. She paid more for the Diplomatico SUV compared to the price of a similar SUV for Panther. अब देखो यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन गिवन है, SUV from a Panther, it could have been cheaper without an extended warranty, but this particular option does not negate the fact that the warranty is now covering Vinita's repairs. ऑल द पैंथर से खरीदते तो सस्ता पड़ जाता, बट अब क्योंकि उसको डिप्लोमेटिक से मिल चुका है, विनीता का रिपेयर जो हुआ है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा ना कि उसको नहीं, क्यों नहीं पे करना चाहिए। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, शी इज अवेयर दैट द एक्सपेंसिव एसयूवीज लाइक हर्स डीलर्स ऑफन ऑफर फ्री एक्सटेंडेड वारंटी। अब देखो ये ऑप्शन जो बोल रहा है, उसको ऑप्शन बोल रहा है कि उसको पता है कि एक्सपेंसिव एसयूवीज जो लेते हैं लाइक हर्स, डीलर्स फ्री एक्सटेंडेड वारंटीज देते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द गुड रीजंस ना व्हाई शी शुड नॉट पे रुपीज 19,000 फॉर दी दिस वारंटी, क्योंकि उसको पता है कि एक्सपेंसिव एसयूवीज के लिए डीलर ऑलरेडी करते हैं ऑफर। नेक्स्ट, द मिस्टेक हैपेंड 3 months बैक एंड इज वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। अब 3 महीने हो गए, सो डज दिस एक्सप्लेन कि वाई शी शुड नॉट गिव? नो, टाइम गैप डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट मिस्टेक बेनिफिटेड विनीता ना, so this is not correct. Next, had the accident not happened, she would not have been aware of the warranty. अब देखो, it is this particular option is focusing entirely on the past कि उसको पता ही नहीं था। It does not address, अब इस प्रॉब्लम क्या है, that it does not address the current situation or the potential solution ना, कि ऑलरेडी उसने अब 19,000 कंपनी ने पे कर दिया है कि उसको
पे करना चाहिए या नहीं, दिस वोंट अगेन जस्टिफाई दिस थिंग। ठीक है। नेक्स्ट, श्याम वुड हैव कम बैक टू हर इफ ही हैड नीडेड द मनी। अब शाम को पैसे चाहिए, क्यों चाहिए होंगे? दिस इज एन एब्सोल्युटली वेग रीजन। So you can see only option correct with respect to the given question is option B. ठीक है, चलो। चलो guys, अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सिनेरियो। अब ये देखते हैं इसमें। एबीसी बिजनेस स्कूल was a school with a difference, regarded as one of the top business schools in Western India, but relatively unknown beyond that. The school catered to smaller organizations seeking to hire students for sales and marketing positions. With occasional openings in HR roles, these students were open to secure job opportunities even if they offered relatively lower salaries. Okay? Now, the organization that recruited from ABC did not really care for the talent but appreciated the students' ability to follow orders without questioning them. ठीक है, वहां पे टैलेंट की नहीं, बट जो बोला जाता था उसको बिना क्वेश्चन किए वो फॉलो करते थे। सो दिस वाज द क्वालिटी। नाउ द स्कूल स्ट्रेंथ लेड इन इट्स एलुमिनाई हु कंसिस्टेंटली रिटर्न टू द इंस्टीट्यूशन फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, जो ऑलरेडी जॉब में जा चुके वो कंपनीज फिर से ले आते थे, thereby ensuring the school's continued existence. Given the placement record, the school attracted a specific segment of business school aspirants who wanted a solid job but were not excited about learning. ठीक है, ये उनका एक specific segment भी था. So let's look at the questions now. Recently, some alumni of ABC threatened that their children should be given preference in admissions. ठीक है, कुछ एलुमनाई थे, वो क्या थ्रेटन कर रहे कि हमारे बच्चों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए क्योंकि हम पढ़ के गए, सो आवर चिल्ड्रन शुड आल्सो गेट सम प्रेफरेंस, और दे वुड विथड्रॉ एज रिक्रूटर्स, वरना रिक्रूटर की तरह आएंगे नहीं। सो द डायरेक्टर वाज हाउएवर हेजिटेंट अबाउट allowing alumni to interfere in running the school because the fairness of the admission process had earned ABC high respect within the corporate world that recruited from the school. ठीक है, तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इफ ट्रू विल बेस्ट हेल्प द डायरेक्टर, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, नॉट टू वरी अबाउट पैंडरिंग टू दोस एलुमनाई, मतलब उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं रख के, मतलब उनकी बात ना मानते हुए भी what he can do the best, ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है? So let's see the option number one now. So it is the alumni were the reason that ABC was able to attract corporates. अब देखो, यहाँ पे डायरेक्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ कि वो इंस्टीट्यूशन के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, नॉट एलुमनाई। अगर तुम एलुमनाई को इंपॉर्टेंस दोगे तो डेफिनेटली दे विल से ना वी आर इंपॉर्टेंट, सो हमारी बात मानो। So definitely this is shifting the power to the alumni, which should not help the director. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। Now, some of the alumni were regularly teaching as guest faculty in the schools. अब यहाँ पे देखो, it does not address the admission issue, right? कि अपने बच्चों को एडमिशन चाहिए थी उनको। यहाँ पे guest faculty roles are completely different from what the question is asking. तो ये भी गलत है। Next is the alumni depend upon ABC's success to enhance their employability. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एलुमनाई जो है वो एबीसी के सक्सेस पे डिपेंड करेगा ना। तो इसका क्या मतलब है, तुम अगर अगर कॉलेज का नाम ऊंचा रखना चाहते हो तभी तो तुम्हारा नाम बढ़ेगा ना एज एन एलुमनाई। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई आईआईएम अहमदाबाद का एलुमनाई होता है, so what that person will do is give his or her best na in order to keep that institution's name high. वो कुछ गलत नहीं करना चाहेगा। सो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, अब मुझे लग रहा है दैट दिस विल हेल्प द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल ना, कि म्यूचुअल उस पे, मतलब अगर तुम हमारा इज्जत ऊपर रखोगे देन योर फेम विल आल्सो गो अप ना। तुम्हारा एलुमनाई स्टेटस हमारे कॉलेज से ही है, सो इफ यू गिव दिस एज अ रीजन, यस दिस विल हेल्प द डायरेक्टर नॉट टू वरी ना, क्योंकि तुम हमारे ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो। तो दिस इंस्टेड काउंटर आर्ग्यू कर सकते हो बाय टेलिंग द एल्यूमिनाई कि हमारी वजह से ही तुम लोग हो।
राइट. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. अभी मैं देख लेता हूँ. लेट्स see the other options. We'll eliminate them if we don't find a suitable answer. No business school in the region has allowed alumni any say in managing the operations. अब ये कुछ freedom of speech curb करने की बात हो रही है, which you can definitely not do. ABC has not entertained any request from the alumni till date. Again, entertain करना उनके request या नहीं, this is again not the best solution to say. अब director के हिसाब से this will be the best thing you can speak. ठीक है, next question देखते हैं इसका. Across the country, business schools were ranked by popular magazines. A few business schools in the same region were applying for rankings, hoping that rankings will affect their visibility among corporate houses and recruiters. To achieve a good rank, ABC faculty members who have primarily focused on teaching thus far would need to actively engage in research and consulting activities. अब यहाँ पे रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने की बात हुई है, बट अभी तक किया नहीं था. तो अब अगर करना हो तो जो फैकल्टी ऑलरेडी जो है एबीसी बिजनेस स्कूल में, उनको फोकस करना पड़ेगा ये रिसर्च एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज. नाउ द डायरेक्टर वाज अवेयर दैट आस्किंग द फैकल्टी टू स्विच टू रिसर्च एंड कंसल्टिंग वुड नॉट बी इजी. ऑब्वियसली इजी नहीं होगा क्योंकि पहले हुआ नहीं था, फोकस सारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज which of the following facts will best help the director not to worry about applying for rankings. अब ऐसा कुछ ऑप्शन हमें सोचना पड़ेगा कि रैंकिंग में पार्टिसिपेट या फिर अप्लाई नहीं किए भी बिना तुम्हारा जो बिजनेस स्कूल है वो अच्छे से चलेगा. सो लेट्स सी. द एलुमनाई डू नॉट फॉलो रिसर्च पब्लिकेशन इन जनरल. अब देखो, एलुमनाई से यहाँ पे क्या मतलब है. यहाँ पे एलुमनाई फॉलो करता है नहीं, इट डजेंट मैटर ना. Research is typically a factor for faculty focused ranking. Not, it is not aimed at the placement thing ना. तो यहाँ पे this is definitely not the correct option. Next, the alumni do not care for the teachers or classes in general. अब again यहाँ पे similarly option एक ही तरह ही है, that student satisfaction might be factor in some rankings, but it's not the main focus for placement oriented rankings ना. अब यहाँ पे ranking क्यों होती है? ऑब्वियसली प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी से कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन देखो. तो एलुमनाई आर अवेयर दैट एबीसी ऑफर्स अ रिटेनेबल टैलेंट पूल. अब ये जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स, एज बिकॉज द एलुमनाइज अवेयरनेस ऑफ दिस स्कूल इज रिटेनेबल टैलेंट पूल ना. अब रैंकिंग में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं लोग? ऑब्वियसली प्लेसमेंट सिनेरियो को इम्प्रूव करवाने के लिए ना. तो यहाँ प्लेसमेंट रिलेटेड जहां पे भी बात होगी, that will be one of the best options, right? तो यहाँ पे retainable talent pool जो लिखा हुआ है, this particular portion, it directly addresses a key metric for the school rankings ना. It will increase the employability ना. So this is one of the best options. अभी के लिए I'll just keep it safe. Let's look at the other options quickly. ABC's placement in the previous year were completed in 4 days. Again, quick placement record definitely positive impact देगा ranking पे, but it's not the sole factor, right? कि डायरेक्टर को चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए. दिस इज नॉट अ, दिस इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन. मतलब ये एक, इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस बट नॉट द ओवरऑल. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. एबीसी कुड नेवर ब्रेक इनटू द टॉप 40 रैंक्स. अगेन इट इज अगेंस्ट. यहाँ पे तो ऑब्वियसली डायरेक्टर को उल्टा वरी करना पड़ेगा ना, अगर टॉप 40 में नहीं आया. इट विल नीड टू come into the ranking then in order to have a good reputation. But यहाँ पे best है, alumni को aware होना चाहिए that ABC offers a retainable talent pool. So that's why this one provides us the reason कि क्यों डायरेक्टर को चिंता नहीं करना चाहिए. Next question देखो. A few faculty members complained to the director regarding the lack of attendance and seriousness. अब obviously attendance की तो problem होती है college में. Among many students during classes and exams, the director knew that this had been the case for decades, but became more rampant in the last few years. बहुत frequent हो गया. He was also aware that the classes were mostly rituals conducted to tell the world that ABC believed in education and had little bearing on placements. ठीक है, वो बस बोलने के लिए था ऊपर ऊपर से. Now, however, he believed that the students must be told to attend classes and take exams with serious attitude.
So let's see the question. Which of the following announcement by the director will best ensure the faculty stop complaining? Obviously, faculty के लिए problem हो रही है ना कि लोग बच्चे class attend नहीं करने आ रहे. So what solution can the director give? Let's look at the options. Students who attend every class should be given thank you notes from the director. Again, thank you notes के लिए कोई बच्चा seriously class attend नहीं करेगा. So this is definitely not the correct answer. Next is students should be asked to pay a monetary penalty for missing classes. अब देखो monetary financial penalties all together demotivate कर देगी students को और it might create financial hardships for them because obviously वो कमाते नहीं है ना students है. So this is not the good solution. Faculty members who make classes very engaging should be felicitated during the convocation. अब देखो यहाँ पे students को class attend करने के लिए faculty को अच्छा पढ़ाने के लिए क्यों बोलोगे? मतलब obviously एक अच्छा faculty के पास more students पढ़ते हैं, but faculty को felicitation ceremony में prize देके how will that affect the students to come and attend the classes, right? इससे कोई लेना देना नहीं. This is definitely not correct. Now, only students with at least 85% class attendance will participate in placement. अब देखो बी स्कूल में जाने का मोटिवेशन क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे और योर गोल इज दैट यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट. अब ये बोल दो कि तुम्हें अटेंडेंस कंपलसरी है 85% एंड दिस विल मेक श्योर दैट यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्लेसमेंट्स. हाँ, इसके चलते द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट अटेंडिंग द क्लास ना. Although it looks kind of annoying thing for the students, but this is the best the director could do. So that's why this is one of the better options. Now let's see last wala dekhte hain. Students should be rewarded for contributing to in-class discussions and learning. Again देखो reward जो participation होता है ये अच्छा होता है for long term strategy, but ये immediately address नहीं करेगा attendance problem को. ठीक है, so this is also not the correct answer. So D here is the right answer. चलो नेक्स्ट सेट पे चलते हैं. भारत बिजनेस स्कूल, अ प्रीमियर बिजनेस स्कूल, वाज renowned for the quality education it provided. Its faculty, known for their domain area expertise and excellence in teaching, competed with each other for a better student feedback. Of late, the institute was finding it difficult to upgrade its course content with rapidly changing global business scenario. The difficulties multiplied when the students realized that some of senior faculty would retire on regular basis starting in the near future. To overcome these difficulties, BBS decided to recruit young faculty in all the departments, that is, whatever is available. Now, when the Dean Academic scanned the applications, she found three distinct types of aspirants, that are A-type candidates who are very good teachers, competent at teaching the courses taught by existing faculty members. मतलब बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं जो काफी हद तक सेम पढ़ा सकते हैं जो अभी के फैकल्टी मेंबर्स हैं. सेकेंड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स कौन है? हु वर एवरेज टीचर्स, मतलब ठीक ठाक टीचर्स थे, कॉम्पिटेंट एट क्रिएटिंग एंड टीचिंग न्यू कोर्सेज. अब ये जो एवरेज टीचर्स है इनकी क्या खासियत है? जस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग किस केस में कैसे टाइप का टीचर चाहिए होगा. At creating and teaching new courses that would complement existing courses, obviously help out करेगा ना. तो this taught by the current faculty वो complement करेगा, help करेगा. ठीक है. Now C type of students were also C type candidates were also there who were not so good teachers willing to teach any course BBS required. अब ये काफी ज्यादा flexible teachers थे and obviously इनमें एक positive चीज ये नहीं है कि that they were not so good teachers. So अब नोट 1 में क्या लिखा हुआ है? अ कोर्स इज टर्म्ड कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन इट कवर्स लेटेस्ट कंटेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट देता है एंड कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्टिंग कोर्सेज ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट. एंड सेकंड नोट इज ईच डिपार्टमेंट डिसाइड्स द सुइट ऑफ कोर्सेज टू बी ऑफर्ड. ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस यू शुड रिमेंबर. अब क्वेश्चन पे चलते हैं.
Given the above context, which of the following options will be the best recruitment decisions for BBS? कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट रिक्रूटमेंट डिसीजन देगा? लेट्स सी. हायर बी कैंडिडेट्स so that all types of courses can be offered to students. अब बी की क्या खासियत थी? That they are average teachers but they can complement the current course. अब देखो यहाँ पे टीचर्स रिटायर्ड भी होंगे, राइट? तो अगर वो चले गए तो कॉम्प्लीमेंट करने वाले तो बन जाएंगे, कैंडिडेट्स आ जाएंगे, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्सेज है उसको कौन अच्छे से पढ़ेगा? सो राइट नाउ एग्जिस्टिंग फैकल्टी, इनको हायर करने से कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज तो बन जाएंगे, बट वो चैलेंज हो जाएगा कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कौन हैंडल करेगा. सो अभी के लिए दिस इज नॉट द बेस्ट डिसीजन. नेक्स्ट इज डोंट रिक्रूट एंड रिक्वेस्ट द एग्जिस्टिंग फैकल्टी. अब देखो दिस इज नॉट द सोल्यूशन. रिक्रूट करना है तो करना है बिकॉज दे विल बी रिटायरिंग, सो दिस इज नॉट करेक्ट. हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एज दे कैन टीच. अगेन हमने बी को ही नहीं लिया तो सी को इस टाइम कैसे ले सकते? Next is hire A candidates unconditionally and allow them to teach courses taught by the existing faculty. अब देखो क्या ये बेस्ट टाइप ऑफ डिसीजन होगा? ये तो उल्टा लड़ाई लगा देगा ना. अभी भी वो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है, दे आर नॉट लीविंग, बट इन सम टाइम दे विल लीव ना. क्वेश्चन में यही था, क्वेश्चन स्टेटमेंट में, कि कुछ टाइम के बाद जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी वो रिटायर होने लगेंगे, तो उनको ट्रेन करके अच्छा बनाना है ना. तो अभी के लिए अगर तुम कोई भी कंडीशन बिना रखे तुम टीच करने के लिए बोल दोगे, पढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग फैकल्टी की जगह, दिस विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स ना, जो न्यू टीचर्स आएंगे एंड द एग्जिस्टिंग. ऑल्सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन टू चूज फ्रॉम. लास्ट ऑप्शन देखो, ऑब्वियसली अब यही बचा. सो हायर टाइप ए कैंडिडेट्स ऑन अ कंडीशन दैट दे विल हैव टू डेवलप कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेस. यस, दिस option will best help me, मतलब this will not only help me to maintain the quality of education in the existing course, but यहाँ पे कंटेंट अपग्रेड करने में भी हेल्प करेगा. ठीक है, साथ साथ कंटेंट भी अपडेट हो जाएगा, प्लस जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी उनको भी वो पढ़ा रहे होंगे एंड साइड बाय साइड दे विल पिक इट अप. ठीक है, so this is the best option. Next question is, suppose the dean academics wanted to reduce future conflicts and political maneuvering to ensure harmony among faculties. Obviously, अब नए एंड पुराने एंड नए वालों में झगड़ा लग सकता है, क्योंकि वो रिप्लेस करेंगे ना इवेंचुअली. तो अब झगड़ा ना लगे, क्वेश्चन भी वही बोलता है कि बेस्ट बेस्ट रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकिंग अमंग्स द फैकल्टी. अब पॉलिटिक्स कम हो जाए एंड कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाए, व्हाट विल बी द बेस्ट चॉइस amongst these options? Hire B type candidates to teach complementary courses. अब देखो, yes, this is one of the best decision because focusing on complementary courses definitely will reduce direct competition, right? जो existing faculty है उनके बीच direct competition कम हो जाएगा, but it will also, अब इसके साथ साथ it will also enhance the collaboration between new and ओल्ड फैकल्टीज ना. न्यू वाले अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज पे फोकस करेंगे, क्योंकि टाइप बी एम्प्लॉयज कौन से थे? जो एवरेज थे बट न्यू कोर्सेज डेवलप करने में अच्छे थे, राइट? तो ये कॉन्फ्लिक्ट बेस्ट रिजॉल्व करेगा ना बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड न्यू फैकल्टीज. तो मुझे अभी के लिए ये बेस्ट लग रहा है अभी के लिए. बट लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस. हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एंड अलाउ देम टू टीच ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज. अब देखो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज दे वर डिस्क्राइब्ड एज नॉट सो गुड टीचर्स, राइट? तो यहाँ पे इनको अगर अलाउ कर दोगे तो इट विल कॉम्प्रोमाइज द ओवरऑल टीचिंग ना. कॉन्फ्लिक्ट हटाने के लिए तुम ये थोड़ी ना कि बेकार टीचर को ले आओगे ऑल टुगेदर. यहाँ पे टाइप हायर बी में क्या था? वो एवरेज थे, बट उनके पास बेनिफिट क्या था? वो न्यू कंटेंट डेवलप करते हैं अच्छा. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द बेटर ऑप्शन देन ए. सी वाला देखो, hire A type candidates to teach existing courses and ask existing faculty to teach new courses. अब देखो जो ऑलरेडी पढ़ाते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा. जो ऑलरेडी देखो तुम, अगर इफ यू आर इन अ कंपनी, इफ यू आर एट अ सीनियर पोजीशन, तुम सीनियर हो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लेंथ, टर्म लेंथ तुम जो पढ़ा रहे हो, मतलब काफी टाइम से सर्व कर रहे हो कोई भी पोजीशन,
तुम्हें आके बोल दिया जाए कि तुम नई चीज ले लो, इट विल अगेन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेटली नहीं कर सकते। नेक्स्ट, hire A-type candidates and let the new as well as existing faculty offer same courses। अब देखो यहाँ पे तो ऑल टुगेदर सेम कोर्सेज करोगे, रिडंडेंट भी हो जाएगा, सेम ही चीज पढ़ा रहे हो ना सबको, एंड इट विल इंक्रीज द कंपटीशन बिटवीन न्यू एंड एग्जिस्टिंग फैकल्टीज ना। वो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर सेम चीज पढ़ाने के लिए बोल दोगे टू द न्यू एंड द एग्जिस्टिंग फैकल्टी। दिस इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज हायर बी कैंडिडेट्स को हायर करो एंड अलाउ देम टू टीच ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज। अब देखो ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे टाइप बी में एवरेज टीचर्स बताया गया, बट दे वर कॉम्पिटेंट इन क्रिएटिंग एंड टीचिंग न्यू कोर्सेज, राइट। बट यहाँ पे तुम अगर सारे काइंड ऑफ कोर्सेज उनको पढ़ाने के लिए बोलोगे इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग वन जो कि पुराने फैकल्टी पढ़ाते हैं, यहाँ पे उनका स्ट्रेंथ यूज नहीं हो पाएगा ना। स्ट्रेंथ क्या है टाइप बी कैंडिडेट्स का, कि वो कॉम्प्लीमेंट कोर्सेज पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है उससे, एग्जिस्टिंग कोर्सेज है उससे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर उनको सारे कोर्स पढ़ाने के लिए बोलो। ठीक है, दिस इज अगेन रॉन्ग, सो ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। चलो फटाफट हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। सपोज द डीन एकेडमिक्स wanted to ensure the most efficient utilization of faculty resources. Which of the following hiring decisions will ensure the most efficient utilization? ठीक है, सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन हो फैकल्टी रिसोर्सेज। फर्स्ट इज हायर ए टाइप कैंडिडेट्स एंड लेट द न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग फैकल्टी टीच सेम कोर्सेज। अगेन एफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग जो फैकल्टी है ऑब्वियसली पढ़ा रही होंगे ना, जो ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हो पढ़ा रही होंगे, और न्यू को भी बोलो कि वही सेम कोर्स पढ़ाओ, वो एफिशिएंट यूज थोड़ी ना है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। बी इज बी ऑप्शन इज हायर बी टाइप कैंडिडेट्स टू टीच कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। अब देखो ये जो है ये एफिशिएंट क्यों नहीं है, बिकॉज दीज टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आर एवरेज टीचर्स, राइट। यहाँ पे एवरेज टीचर्स है बट उनको अच्छा लगता है कि उनका स्ट्रेंथ है कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज कराना, बट क्या ये एफिशिएंट यूसेज है? हायरिंग देम फॉर एक्सक्लूसिवली कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज विल नॉट बी एफिशिएंट ना, बिकॉज उनको ओवरऑल एफिशिएंट यूटिलाइजेशन देखना है, जो एग्जिस्टिंग है उसका भी एक सोल्यूशन ढूंढना है ना, कि क्योंकि एग्जिस्टिंग फैकल्टी वो रिटायर हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो वो भी तो ध्यान रखना है ना। सो दिस इज अगेन नॉट द एफिशिएंट यूज। ऑप्शन सी देखो, आस्क एग्जिस्टिंग फैकल्टी टू डेवलप कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। अगेन कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग फैकल्टी को बोलो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स डेवलप करने का, क्योंकि वो तो अपना कोर्स पढ़ा रहे हैं ना। अब चेंज करके बोलोगे तो दे विल आल्सो गेट डाइवर्टेड एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल गेट अफेक्टेड। नेक्स्ट इज हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एंड असाइन देम टीचिंग असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो सी टाइप थे कि दे वर नॉट सो गुड टीचर्स, राइट। अब यहाँ पे टीचिंग असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे तो स्कूल के लिए वो ट्रेनिंग पीरियड थोड़ी ना चल रहा है। यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं चल रहा है, ये ऑफिस की तरह ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ पे तुम ये तो पढ़ा सकते हो या फिर नहीं पढ़ा सकते, राइट। सो एनी वे दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन देखो, अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट। हायर ए टाइप कैंडिडेट्स केपेबल ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज। दिस विल एंश्योर कि ए लेवल ए वाले क्या होते हैं, मतलब हायर ए टाइप कैंडिडेट्स कौन थे, जो कि एग्जिस्टिंग जो फैकल्टीज थे उन्हीं के बराबर पढ़ा देंगे। बट नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज ऐसे हायर टाइप के एम्प्लॉय, सॉरी, हायर ए टाइप कैंडिडेट्स ऐसे वो करो जो कि केपेबल हो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज को डेवलप करने में भी, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज में क्या होता है वो क्रिएटिव एंड अपडेटेड कंटेंट के साथ वो पढ़ा पाए। यस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन वी कैन चूज फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। चलो लेट्स लुक एट द न्यू सेट नाउ। During the floods of 2018-19, a group of philanthropists led by Niabuddin wished to open free food center for the needy. Their motto was that no human should be hungry. Nothing gives more satisfaction to the philanthropist
than to see the hungry eat to the fullest. Post COVID-19, the group started a food center by the name Win Born Life Care Food, that is WBLCF, in a small town named Palakkad. The center started gaining popularity as the number of people enjoying free meals increased over time. Initially, WBLCF offered a standardized menu consisting of idli upma puttu for breakfast and curd rice for lunch and idli or upma for supper. 6 women were employed by WBLCF to prepare all the meals. As the number of diners increased, they started expecting a variety in the menu. At WBLCF, not all the diners eat free. तो जितने भी diners थे, सारे नहीं थे कि जो फ्री में खाते थे. But while 2/3 of diners get free food, मतलब if there are 100 diners, 66, 67 of them वो फ्री का खाना खाते थे वहां, and 33% लोग 1/3 वो डोनेट सम अमाउंट. तो 33 लोग ऐसे थे कि उसमें से डोनेट करके जाते थे टू अ ट्रांसपेरेंट चैरिटी बॉक्स केप्ट एट द एंट्रेंस. For example, a man donated rupees 500 after consuming 2 idlis, and a woman approached Niyabuddin and inquired about donating 10 kilograms of rice. तो मतलब ये these were all the forms of donation. Those who could not afford to donate were often seen prostrating worshipfully in front of the charity box. Some caring individuals made monetary donations while others donated rice, fruits, and vegetables to WBLC. मतलब जैसा हेल्प कर सकते थे वैसे किया. Further, the center received inquiries from many locals on how they would contribute to the cause. ठीक है, लोकल से भी काफी queries आए. Now, as the center was lauded for its philanthropic work by people of the town, Niyabuddin intended to replicate the initiative in the nearby districts. However, he is concerned about the cost that goes into running the center. Almost 75% of the donated amount goes into buying the cooking ingredients, while the rest goes into paying salaries, operations and maintenance costs. ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम भी था. तो अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या आता है. Now, from the following, choose the most important challenge that Niyamuddin has to overcome. तो क्या important challenge है amongst these? तो हमें priority wise choose करना है. Getting enough nances and donations. अब nances and donations मतलब basically वही ingredients and donations, पैसा है. तो yes, this is one of the biggest challenge for Niyabuddin ना, या फिर उसका सबसे important thing है. सेंटर को चला के रखना है, उसके लिए क्या चाहिए? थोड़ा पैसा इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन एंड खाना, मतलब इंग्रेडिएंट्स जो भी डोनेट करते. तो डेफिनेटली सर्वाइवल के लिए, मतलब सेंटर के सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट था. अभी के लिए सेफ रख रहा हूँ. लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. पेइंग सैलरी टू एम्प्लॉइज. सी, दिस इज वन ऑफ द साइड चैलेंजेस. This is not the biggest because paying salary is definitely crucial, but it is a component of overall financial challenge ना. अगर तुम overall financial challenge को cover up कर लोगे तो ये सब obviously sort out हो जाएगा. ये एक specific financial challenge है. तुम्हें पूरा सेंटर चलाना है. सेंटर क्या होगा? सेंटर में जो लोग खाने आते हैं उनका भी तो ध्यान रखना है ना, नॉट ओनली द एम्प्लॉइज. तो यहाँ पे दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज. नेक्स्ट, अट्रैक्टिंग इनफ डाइनर्स. अब देखो डाइनर्स आ ही जाएंगे. यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है देयर आर लैक ऑफ डाइनर्स एनीवेयर. तो यहाँ पे दिस इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट ऑप्शन. हैविंग इनफ कुक्स एंड एम्प्लॉइज. अब देखो ये भी नहीं गिवन है कि काफी भीड़ लगी रहती थी. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज बीन गिवन कि कोई भूखा चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं था. दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. प्रिपेयरिंग ओनली लोकल डिशेस फॉर डाइनर्स. अब देखो कैसा खाना किसको पसंद है, अगेन नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज बीन टॉक्ड अबाउट. सो ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज राइट नाउ फॉर नियाबुद्दीन इज उसको इंग्रेडिएंट्स एंड डोनेशंस मिलता रहे ताकि सेंटर्स चलता रहे. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं. Niyabuddin realized that on some days the food was wasted, while on the other days diners went back hungry. He sought advice from a consultant friend on how to reduce wastage. The consultant suggested the following. तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते बिफोर रीडिंग आउट द ऑप्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज विल नॉट बी कंसिस्टेंट. ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढना है जो कि कंसिस्टेंट ना हो विद द कोर इथोस ऑफ WBLCF. ठीक है, उल्टा
इसका मतलब लॉन्च अ मोबाइल ऐप सो दैट द डाइनर्स कैन प्री इन्फॉर्म देयर अराइवल। यस, दिस इज अ गुड जेस्चर ना। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब दिस इज नॉट द आंसर विच वी विल लुक। हमें उल्टा देखना है कि जो हार्म करे। नेक्स्ट इज आस्क डाइनर्स हु एंजॉय फ्री मील टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस फूड। ऑब्वियसली तो अच्छी बात है ना, तो ये तो कंसिस्टेंट होगा। हमें तो नहीं कंसिस्टेंट होगा वो ढूंढना था। अगेन दिस विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखो ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हो, जिस जिसमें 1 and 2 आएगा वी कैन एलिमिनेट देम। ये भी एलिमिनेट हो गया, 2 वाला भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट। सो ओनली ऑप्शन यू कैन सी इज दिस। अब देख लेते हैं। आस्क डाइनर्स टू ईट लेस एज इट इज गुड फॉर हेल्थ। अब किसी को तुम खिलाते हो तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि कम खाओ क्योंकि तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। सो ये डेफिनेटली इज अगेंस्ट द इथोस ना, तो यही ऑप्शन सही है। रीच पीपल टू ईट लेस। अगर अगेन इफ यू आर डूइंग अ चैरिटी थिंग यू कैनॉट आस्क एनीवन टू ईट लेस। ठीक है। राशन अमाउंट ऑफ फूड टू बी सर्व्ड टू द डाइनर्स। अब देखो अगेन राशन करके उनसे बोलो कि पैसा दे दो, you can again not do that. Definitely, this is also is not consistent with the ethos of this institution. So option B is the correct answer here. Next question. Niabuddin wanted to conserve local recipes that can be used to prepare mouth-smacking dishes for the diners. ठीक है, उसको लोकल रेसिपीज कंजर्व करनी थी ताकि काफी अच्छा अच्छा बना पाए फॉर द डाइनर्स, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट वे टू कंजर्व लोकल रेसिपीज। लोकल रेसिपीज को अपने मेन्यू में रखने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, वी नीड टू चूज दैट। होल्ड अ वीकली कॉम्पिटिशन फॉर द बेस्ट लोकल डिश एंड गेट इट जज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय लोकल वॉलंटियर्स। सो यस, अब लोकल डिश रेसिपीज को अगर तुम्हें कंजर्व करके रखना है तो ऑब्वियसली अगर लोकल कंपटीशन बढ़ाओगे, जो भी वॉलंटरीली आना चाहेगा वो जज करवाओ उसको एंड डॉक्यूमेंट करा लो लोकल वॉलंटियर्स से कि कैसे कैसे वो बना था। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ना फॉर नियाबुद्दीन टू कंजर्व लोकल रेसिपीज। ठीक है, लोकली अलग अलग वेराइटीज की जो डिशेस होंगी वो आती रहेंगी टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे वीकली कंपटीशन बोला है तो नई नई रेसिपीज भी अपडेट होती रहेंगी। सो दिस इज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, लेट्स लुक एट द अदर वंस। Request a lady once a week in Palakkad to cook food at WBF on a voluntary basis and document the recipes. अब ये देखो तुम्हें ये सही लग सकता है but it is not correct because it involves individuals from the community, but यहाँ पे डाइवर्सिफाइड रेसिपीज कैप्चर नहीं होंगे ना। यहाँ पे तुम अगर लार्ज स्केल पे कंपटीशन अरेंज करोगे तो कोई कुछ बनाएगा कोई कुछ बनाएगा, बट यहाँ पे तुम कंपटीशन करोगे वाइडर स्केल में तो सब अपना अपना डॉक्यूमेंट करके भी तो जा रहे हैं ना। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट वे। ठीक है, एक एक लेडी को बुला के ऐसे नहीं बोल सकते, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिसिंग है इन लोकल रेसिपीज। नेक्स्ट, टाई अप विद वन फूड डिलीवरी पार्टनर्स। अब फूड डिलीवरी पार्टनर्स को तो डिलीवर करने का काम होता है ना, उनका खाना बनाने का थोड़ी ना रेसिपीज को। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, टाई अप विद द शेफ ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन पलाक्कड़। अब ऑब्वियसली तुम्हें टेस्टी फूड चाहिए तो बेस्ट शेफ रखो, बट तुम्हें रेसिपीज को कंजर्व करके रखना है, तरह तरह का खाना अगर डॉक्यूमेंट करके रखना है, दिस इज नॉट द बेस्ट वे। बेस्ट शेफ विल इंश्योर ओनली कि तुम्हें सबसे अच्छा खाना मिलते रहे, हमें ये वाला पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। Next, ask free diners to contribute towards one recipe for a dish and give them the responsibility to document it. अब देखो, it is again not correct because involving diners is definitely a good idea, but relying solely on them ये ensure नहीं करेगा कि systematic and consistently document होता रहे। ठीक है, and also there is a problem that it may exclude non-diners जो डाइन नहीं करते, who maybe hold valuable knowledge about local recipe। ठीक है, जो डाइनर नहीं करते उनको भी तो एक्सक्लूड कर दिया ना। जो बाहर से आएंगे उनके अलग अलग खाना बनाने का स्टाइल है, वो विल बी अ बेटर वे देन आस्किंग दीज डाइनर्स टू डॉक्यूमेंट दैम। ठीक है, सो दिस इज द
बेस्ट वे। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ठीक है, चलो। चलो गाइस, नेक्स्ट सेट पे देखते हैं। Aarti, CEO of an FMCG company, was under pressure from board of governors to increase diversity in workforce. The board wanted the company to hire candidates with vision impairment, star मतलब कुछ नीचे लिखा होगा, as it is believed that they contributed to organizations in many unique ways. The CEO was apprehensive of hiring visually impaired candidates, मतलब काफी सोच विचार कर रही थी, they were not readily इन दिस माइंडसेट कि वो उनको ले ले. So she was not sure about feasibility of accommodating them in the current setting. Moreover, Aarti was unsure as to how the visually impaired could contribute meaningfully to the organization. So, visually impairment का definition given है. A person with a vision impairment in the range of 60 to 100% is referred to as visually impaired person. A person with 100% vision impairment cannot see at all. ठीक है? So let's see the question. The following arguments were presented to Aarti about the candidates with vision impairment. तो question पढ़ लेते before we first read these. So from the above arguments, which of the following options indicate the CEO's apprehensions are misplaced? इसका मतलब है जो CEO जिस चीज को लेके डाउट कर रही थी उसको गलत प्रूव करने के लिए कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, दैट वी नीड टू चूज. So visually impaired can do some activities better than normal people and hence complement other employees. So yes, this is a positive sign na, why the CEO should choose some of the visually impaired people. So this is absolutely correct. This will actually help me. And options में भी देखो तो one number सब में. Next, visually impaired can motivate other employees to work harder. So yes, this is also giving the strengths of visually impaired people. ये भी तो स्ट्रेंथन करेगा ना, तो ऑप्शन टू भी देखो तो सारे ऑप्शन में. थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं. विजुअली इम्पेयर्ड कैन एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर अदर डिसएडवांटेज्ड पीपल इन द सोसाइटी. yes, this is again a positive sign na, why we can choose visually impaired people. So this is correct. Next, visually impaired can work harder to prove themselves. again, yes, a strong point ना कि वो हार्ड वर्क करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. सो वी हैव टू चूज ऑल द पॉइंट्स जो कि पॉजिटिव्स बता रहा हूँ. फिफ्थ वाला है hiring visually impaired people may enhance organizational reputation which may consequently lead to better sales. अब देखो ऑब्वियसली अगर न्यूज आती है बाहर दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो लुक्स आफ्टर दीज काइंड ऑफ पीपल, तो रेप्यूटेशन इन अ वे कहीं ना कहीं बेटर होती है. सो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ पॉजिटिव वे. तो ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शंस देख लो 1 2 3 4 5 वाले. बी ए अभी तक है. वी कैन एलिमिनेट दिस एंड दिस ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे 3 नहीं है. तो लास्ट वाला देख लेते हैं. विजुअली इम्पेयर्ड हैव टू बी पेड 20% एक्स्ट्रा सैलरी. अब देखो सीईओ एज अ सीईओ अगर किसी को एक्स्ट्रा सैलरी पे किया कर रहे हो एंड दैट टू जिसपे तुम श्योर ना हो, तब तो ऑलरेडी तुम्हारे फेवर में नहीं होगा ना दिस डिसीजन. तो सिक्स वाला तो डेफिनेटली गलत है. सो दिस एलिमिनेट्स ऑप्शन बी एंड डी ऑल्सो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. चलो फटाफट नेक्स्ट देखते हैं. Aarti wanted to follow the suggestion given by the board of governors. However, she was not sure if the company was ready to accommodate candidates with 100% visual impairment. Also, the concern of involving such employees in meaningful activities was constantly bothering her. Hence, she constituted a committee to come up with the recommendations that would help the company in hiring 100% visually impaired employees. ठीक है, recommendations की कैसे 100% जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. नाउ आफ्टर 2 months ऑफ deliberations the committee came up with the following recommendations. अब बिफोर recommendations पढ़ने से पहले एक्चुअली हमें कौन से ऑप्शंस चूज करने हैं वो देख लो. will best ally
allay concerns as well as be fair to all the stakeholders, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो में हमें चूज करना है कि कौन से बेस्ट है. So hire visually impaired employees unconditionally as it is any company's social responsibility. अब देखो, if you put forward this point ना, this is not going to help anyone overall. कोई भी condition रख के नहीं choose करना and by saying कि it will improve company social responsibility, this is not correct. Second वाला देखो, hire visually impaired employees in the activities they can contribute. Yes, जिस काम में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अच्छे से, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स यू कैन एम्प्लॉय देम ना. सो दिस इज डेफिनेटली अ करेक्ट आंसर. तो सेकंड वन वाला देखो होना चाहिए आंसर में. तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया. वी आर लेफ्ट विद ई. अब देखो ई में वन सही बोल रखा है, सो दिस ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. तो ऑप्शन देखो बहुत आसान हो जाता है. इफ यू लुक एट दी ऑप्शंस, इट काइंड ऑफ एक्चुअली एलिमिनेटेड ऑल दी अदर वंस एक्सेप्ट बी. ठीक है, अब देख लो बी के अकॉर्डिंग 3 और 4 दोनों करेक्ट होना चाहिए. Ensure visually impaired friendly office space, food courts, restrooms, parkings. तो देखो रिकमेंडेशन में ये बोला था ना कि सबका ओवरऑल बेनिफिट होना चाहिए. तो यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड को अच्छा एनवायरनमेंट भी दोगे तो ये भी तो होगा ना. नेक्स्ट पॉइंट इज अलाउ गाइड डॉग्स टू असिस्ट एम्प्लॉइज विद 100% विजन इम्पेयरमेंट इन द ऑफिस प्रेमाइसेस. यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज बाय विच वी कैन हेल्प देम एक्चुअली. तो सबका बेनिफिट होगा यहाँ पे. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो गाइस देखो हमारा प्लैटिनम कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 25th of January. सो यू कैन गो थ्रू दिस. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी सेट पे. सुरेश refuses to be served coffee by visually impaired baristas, but he does believe in donating to the visually impaired. ठीक है, ऑल्दो वो खुद से किसी से सर्व नहीं कराना चाहता जो विजुअली impaired हो, बट डोनेट करने को मानता है. Now, the following statements could explain why Suresh does not want to be served by visually impaired baristas. तो कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स है जिससे जो एक्सप्लेन कर पाए कि उसका ये बिहेवियर क्यों होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स सुरेश बायस बिहेवियर. बायसनेस है थोड़ा सा कि खुद सर्व नहीं होने देना चाहता बट डोनेट कर सकता है. तो लेट्स सी. He thinks that visually impaired are inefficient at serving coffee. So, yes, obviously ना उसका biased behavior क्या होगा, उसको पता है कि जो कॉफी सर्व करते हैं वो इनएफिशिएंट होंगे. सो दिस पॉइंट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स मी ना कि क्यों वो सर्व नहीं कराना चाहता. ठीक है, सो दिस इज अ गुड पॉइंट. And second is his parents have taught him to donate instead of accepting services from challenged individuals. So yes, this is also a point कि वो क्यों डोनेशन में बिलीव करता है. तो यहां से आ रहा है कि वो सर्व क्यों नहीं करवाना चाहता है एंड यहाँ पे डोनेट क्यों कर रहा है. ये दोनों ही पॉइंट्स बता रहा है हमें उसके बायस्ड बिहेवियर को लेकर. सो यू कैन सी 1 and 2 विल डेफिनेटली बी करेक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया. 4 को एलिमिनेट करना पड़ेगा बिफोर एलिमिनेटिंग ऑप्शन बी. यहाँ पे सी के लिए हमें 3 भी देखना पड़ेगा. डी हमारे पास अभी है सेफ. अब ई भी एलिमिनेट हो गया, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं. ही बिलीव्स दैट हिज रिफ्यूजल टू बी सर्व्ड विल हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस. अब देखो दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड स्टेटमेंट बिकॉज इट डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस व्हाई सुरेश रिफ्यूजेस टू बी सर्व्ड बाय देम ना. क्यों सर्व नहीं करवाना चाहता उसका आंसर थोड़ी ना इसमें. तो डेफिनेटली 3 वाला आंसर नहीं होगा. तो यहाँ से सी भी एलिमिनेट हो गया, ई तो हो ही गया. नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद फोर्थ पॉइंट. He feels joyous amongst visually impaired, sharing his life and caring for them. अब यहाँ पे देखो बायसनेस नहीं गिवन है. क्यों वो मना करता है कॉफी वो करने से. अभी वो सच्ची में अगर जॉयस फील करता तो तब उसके लिए ये बिहेवियर होता नहीं ना किसी के लिए विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज अगेन नॉट एक्सप्लेनिंग हिज बायस बिहेवियर. ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, लेट्स लुक एट द न्यू सेट नाउ.
the CEO of the Jamshedpur tea factory was in a quandary over employee skipping work. मतलब सोच विचार में थे, quandary over employee skipping work. It was becoming increasingly difficult for him to identify employees who faked illness to skip work. The work of the employees were complex and intricate, and they had to report to 8 supervisors. Faking illness made it difficult for JTF to judiciously decide on promotion and training of employees. ठीक है, तो फेक इलनेस की वजह से अब क्या हो रहा था, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज कैसे डिसाइड हो उस पर दिक्कत आ रही थी. नाउ एन एम्प्लॉय कुड ओनली बी प्रमोटेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ मल्टी स्किलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है. नाउ फर्दर टू बी नॉमिनेटेड फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एन एम्प्लॉय मस्ट बी रिकमेंडेड बाय मिनिमम ऑफ 6 सुपरवाइजर्स. ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस याद रखना. JTF wanted to promote only sincere and deserving employees. So let's see the questions now. The CEO was thinking of changing the policy regarding leave, training, and promotion. Which of the following will be most efficient course of action for JTF and yet be fair to the employees? ठीक है, सबका भला हो. Have to look at that scenario. The first is, let supervisors decide on the leave of an employee. अब देखो, तुम्हारे अगर डायरेक्ट जो सुपरवाइजर है वो लीव देखना चालू किया, तो डोंट यू थिंक दैट दे विल हैव सम बायसनेस टुवर्ड्स सर्टेन काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, यहाँ पे 2 लेवल की बात की गई है. सीईओ डेफिनेटली ऊपर होगा, देन सुपरवाइजर्स होंगे उनके नीचे, एंड देयर विल बी एम्प्लॉइज अंडर सुपरवाइजर्स. तो अब अगर एम्प्लॉइज की लीव डायरेक्टली सुपरवाइजर्स पे डाल देंगे, तो क्या वो बायसनेस की तरफ नहीं चला जाएगा थोड़ा, कि जो अच्छा उनके साथ जिनका अच्छा रिलेशन हो उन्हीं को लीव देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड वाला देखो, लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन प्रमोशन बट ईच सुपरवाइजर विल डिसाइड ऑन द लीव. अब अगेन द पर्पस गेट्स डिफीटेड. सीईओ क्यों प्रमोशन देखेगा? यहाँ पे सुपरवाइजर्स अगेन लीव देखेगा, तो लीव में अगेन फेवरेटिज्म आ जाएगा ना. तुम प्रमोशन को बेस्ट जज कैसे कर सकते हो? सुपरवाइजर के थ्रू ना. तुम सुपरवाइजर कैन बेस्ट एक्सप्लेन whom who should be promoted based on their work. बट लीव लीव का अलग मैटर होता है. लीव में काफी फेवरेटिज्म देखा जाता है. इफ यू आर गुड विद योर मैनेजर और सुपरवाइजर्स देन यू कैन गेट इट. तो यहाँ पे दिस पॉइंट इज गेटिंग अफेक्टेड, तो दिस इज नॉट करेक्ट. तो लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन द लीव एज वेल एज प्रमोशन. अब देखो, सारा सीईओ करेगा तो सुपरवाइजर का काम क्या है फिर? ठीक है, सुपरवाइजर कुछ काम ही नहीं करेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट देके फायदा क्या है फिर? नेक्स्ट इज लेट स्टेटस को कंटिन्यू, मतलब जो है वैसा ही चलता रहे, विच इज नॉट गुड. अगर तुम्हें रिकमेंडेशन पूछा है तो यू हैव टू चेंज इट. लास्ट इज लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन लीव, मतलब सीईओ को लीव दे दो एंड सुपरवाइजर्स को रेकमेंड करने के लिए पूछो प्रमोशंस. यस, दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट आंसर. सुपरवाइजर्स वुड बेस्ट नो कि कौन अच्छा काम कर रहा है, तो वो रेकमेंड कर पाएंगे. एंड सीईओ को लीव का दे दो. तो दिस इज solving the overall purpose. So option E is the correct answer. Next question. Which of the following policies will be most prone to error while selecting deserving and sincere employees? ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा गलतियां काम. अब उसको ऑपोजिट कर दो ना. जो लास्ट में था कि सीईओ हॉलीडेज डिसाइड कर रहा है एंड सुपरवाइजर्स तुम्हारा प्रमोशंस को, तो उसको उल्टा कर दो. आउटसोर्स ऑल लीव डिसीजंस टू अ डॉक्टर. अब देखो, डॉक्टर को बोल दोगे, देखो मोस्ट प्रोन मतलब सबसे खराब डिसीजन, तो यहाँ पे डॉक्टर्स को लीव के लिए पूछ सकते हो. दिस इज नॉट ऑल टुगेदर द वर्स्ट डिसीजन. ठीक है, एक डॉक्टर रख लो जहां से तुम लीव डिसीजन उस पे रख दो कि इसको देना चाहिए नहीं, इट इज काइंड ऑफ ठीक है. तो यहाँ पे ये मोस्ट एरर नहीं हुआ. नेक्स्ट, लेट द सीईओ ऑफिस डिसाइड ऑन प्रमोशंस बट सुपरवाइजर्स विल डिसाइड ऑन द लीव. तो
दिस इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शन। सो मैंने बोला था लास्ट जो क्वेश्चन में था उसका उल्टा कर दिया। अब सीईओ प्रमोशंस डिसाइड करेगा, बिकॉज सीईओ हर एम्प्लॉय को नहीं देखता है। सीईओ के अंडर जो डायरेक्ट काम करता है, सीईओ जस्ट नोज अबाउट दैट पर्सन। तो वहां पे प्रमोशन डिसाइड करने के लिए बेस्ट होता है कि मैनेजर को बताओ या फिर सुपरवाइजर से लो। यहाँ पे सीईओ नहीं ले सकता, एंड सुपरवाइजर्स अगर लीव लेगा अगेन बायसनेस आ जाएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर विच विल लीड टू द एरर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। आई होप दिस इज फाइन फॉर एवरीवन नाउ। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट सेट। Dhan, a poor but enterprising 15-year-old, resided in the world's largest slum in a metropolitan city, along with her widowed mother. The densely packed slum housed a million people, mostly in rickety one-room tenements, मतलब बहुत ही पतला, connected by labyrinthine lanes and by lanes. काफी zigzag, काफी मतलब unorganized way में. So Dhan's mother worked intermittently as a daily wager in a small savory factory. अब savory is like नमकीन, you can say. ठीक है, सॉल्टी सॉल्टी चीजें जो मिलती है ना, स्नैक्स बेसिकली, तो नमकीन समझ लो, दैट्स इट। ठीक है, सो फॉर अ 15-year-old, Dhan's life was hectic. She spends 2 hours every day in fetching water for the household, packing breakfast and lunch for her mother. In addition, she had to prepare supper. On her mother's insistence, Dhan also attended an evening bridge school run by an NGO. Dhan's dream was to provide a comfortable life to her mother and take her family out of poverty. Of late, Dhan observed that the customers to a nearby Tikam savory stall, मतलब TCS नाम दे दिया, were mostly the slum dwellers who thronged the stall for its low prices and lack of alternative. ठीक है, काफी फेमस था, बट काफी हिट बैक किया फॉर इट्स लो प्राइसेस एंड लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, further Dhan gathered that the TCS could not cater to all parts of its customer, and the owner still made a neat rupees 800 profit per day. Still quality concern and alternative कम होते हुए भी she could found that 800 per day profit आ रहा है. So Dhan saw that a probable first step towards her family's economic independence could be to own her own TCS. ठीक है, so let's quickly see the questions. From the following, choose the best which will increase Dhan's chances of realizing her dream of starting a venture. Now first option is hire someone at rupees 10 to fetch water for the household. अब देखो, fetch करेगी किसी के लिए काम के लिए so that she could give time. This is certainly not the best choice. ठीक है, यहाँ पे किसी को इजी हो जाएगा उसका, बट इट डज नॉट इंक्रीज द चांसेस ऑफ स्टार्टिंग द वेंचर। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट मदर टू फेच वाटर फॉर द हाउस होल्ड। अब अगेन यहाँ पे इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, कि अपनी मदर को बोल दो कि पानी ले आओ सो दैट शी कुड फोकस। दिस इज अगेन नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो, सो दिस इज ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। रिक्वेस्ट मदर टू पैक हर ओन ब्रेकफास्ट एंड लंच, अगेन वेंचर से कोई मतलब नहीं है। दिस हैज नथिंग टू डू विद आस्किंग द मदर टू पैक हर ओन लंच, वो खुद से वो करती थी काम। रिक्वेस्ट मदर टू स्टॉप वर्किंग एंड बी अ पार्ट इन द न्यू वेंचर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट she can start off with. Not only she would get a help from her mother, but also she had that realization to keep her family out of poverty. तो मदर को जो स्मॉल स्मॉल काम करती थी उसको छोड़ के बोलना कि बी अ पार्टनर विद मी इन द न्यू वेंचर, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स। ठीक है, एंड स्टॉप गोइंग टू द ब्रिज स्कूल, अगेन एजुकेशन इज नेसेसरी, यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, within 2 years of establishment, Dhan's TCS is not only outcompeting its nearest rivals in the slum, but also earned a goodwill for the quality and taste of its products. So, इनकी USP थी quality and taste. Hence, it has become famous within the slum as Dhan Dhanadhan brand.
Dhan now aspires to expand the reach of her savories into the metropolitan region. Dhan wishes to scale up her savory production from 100 to 1000 kgs per day while maintaining quality. Dhan realizes that her establishment does not have the space for expansion on its own. So, what will be the best option that could help Dhan to scale up production with least investment, tight quality control, and also protects her business interests? तो सारा चीज ध्यान में रखते हुए how can she scale up everything? So we need to look at the best possible case. Buy additional space within the slum. अब देखो least investment बोला था, अब additional space बोलोगे तो again this purpose would get defeated, right? So this is not correct. Outsource the production along with secret recipes to a mass savory production units outside the slum. Again देखो ये problem क्या है इसमें? It is risking and compromising the quality ना that Dhan already has. आउटसोर्स कर दोगे तो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना क्वालिटी एंड टेस्ट पे, क्योंकि उसका अपना वो था. तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे. थर्ड इज लीज स्पेस इन द मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. अगेन द प्रॉब्लम हियर इज इट इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्ट ना, लॉजिस्टिकली भी. ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल पे भी इस पे असर होगा. अब लीज करोगे कहीं पे, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम से कम रखना है ना उसको. तो दिस इज नॉट करेक्ट. Stop catering to the slum dwellers and start serving the metropolitan region exclusively. Again, वो alienate कर रहा है existing customer base को. So again, this is not a good approach. Last is provide the savory dough and preparation instructions to 100 willing women in the slum and co-opt them as business partner. Yes, this is the best case possible scenario कि अपनी जो recipe है वो 100 और willing विमेन्स को बता दे स्लम को, ताकि दे कैन ऑल्सो एक्ट एज बिजनेस पार्टनर्स. अब ये मत सोचना कि उसकी इक्विटी चली जाएगी, ओनरशिप विल रिड्यूस, ऐसा मत सोचो. जस्ट हैव टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स एज वेल. ठीक है, सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट वन, धन विद हर ingenuity finds a way to scale up production capacity on her own terms. Though Dhan's TCS has become the famous Dhandanadan brand within the slum, it is still unknown to the outside world. Thus, Dhan embarks on the next challenge of creating a market for savories among the masses in the metropolitan region. अब उसको expand करने का बहुत जोश चढ़ा है. So from the following, choose the best option that will help Dhan to sell her products at the lowest price to a maximum number of metropolitan customers. So let's look at the options. Hire a celebrity who currently endorses a diamond jewelry brand to endorse the Dhandanadan brand. Again, an absurd. Hiring celebrity is or will be very expensive. ठीक है, एंड ज्वेलरी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे खाने की चीज है. तो ज्वेलरी ब्रांड को जो एंडोर्स करता है उससे क्या फायदा हो? एब्सोल्युटली एब्सर्ड चॉइस. नेक्स्ट, overwhelm the metropolitan residents with with a digital advertisement on Instagram. Again, यहाँ पे high costs and it might not reach the targeted audience. ठीक है, so this is also not the correct option. Next, engage slum dwellers community daily to metropolitan region for work to sell the products on commission basis. देखो ये one of the better options है, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, this is helping or leveraging the existing connection between the slum and the metropolitan region ना. यहाँ पे slum dwellers को ही daily commute करने के लिए तुम बोल रहे हो, and also engaging them on a commission basis. यहाँ पे commission basis से क्या होगा, it will ensure a direct link to potential customers ना, and also daily commission basis है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट होगा वो भी लो रहेगा. सो इट वुड हेल्प धन टू सेल हर प्रोडक्ट्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ना, एंड रीच मैक्सिमम पॉसिबल कस्टमर्स. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस. ठीक है, अभी के लिए सेफ रखते हैं. लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस. हायर अ फ्यू सेल्स एग्जीक्यूटिव्स टू सेल प्रोडक्ट्स. अगेन, नॉट एज गुड एज दिस सी ऑप्शन.
ठीक है। ई वाला देखो, रीच आउट टू द मॉल्स एंड हाई एंड रिटेल स्टोर्स इन द रीजन थ्रू अ फ्यू मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स। अगेन काफी हाई बैरियर है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा ज्यादा, एंड आउटरीच टू द मार्सेस यहाँ पे अगेन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अब तुम स्पेसिफिकली सिर्फ मॉल एंड हाई एंड रिटेल स्टोर में जाओगे तो अमीर अमीर तो आएंगे, बट यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे या ना पहुंचे, दैट इज नॉट एंश्योर। तो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट वन, सो यू कैन सी दैट it is option C that will help Dhan to sell her products best to the, मतलब in a way that will be at a lowest price and will have a maximum reach। ठीक है, चलो अब फटाफट से एक नेक्स्ट सेट पे देखते हैं। इन recent years, in recent years complaints of sexual harassment at Fair Consulting had increased exponentially। Fair Consulting had a gender neutral anti sexual harassment policy and a committee to adjudicate on complaints. During the hearing of complaints, allegations and counter allegations would fly thick and fast। ठीक है, आगे पीछे काउंटर करने वाले भी बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। So this made it difficult for the adjudicating committee to conclusively decide on the complaints। So the question here is, Fair Consulting was mulling over three. Uh, just a second. Yeah. So Fair Consulting was mulling over three interventions to reduce sexual harassment cases in the workplace. So they are. अब देखो यहाँ पे, इसको देखने से पहले as always we'll read the last final line. Which of the following options will the employees find least ostracizing? Ostracize means to stop them। ठीक है, और टू रिफ्यूज। तो सबसे ज्यादा वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जो कि सबसे ज्यादा, देखो लीस्ट ऑस्ट्रेसाइजिंग मतलब जो सबसे कम उसको रिस्ट्रिक्ट करे करने से वो काम। इसका मतलब है जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उनको हमें निकाल के साइड करना है, एंड जो सबसे कम लगे कि मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम स्ट्रिक्ट वाला एक्शन होगा, दैट वी नीड टू मार्क एज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन क्या है, एजुकेट एम्प्लॉइज अबाउट द कंपनीज एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी। सी दिस इज एन इंफॉर्मेटिव वन। यहाँ पे तुम पनिशमेंट दे रहे हो जिसकी वजह से वो बंद करे, दिस इज नॉट बीइंग एंश्योर्ड, दिस इज जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, राइट? एंड दिस विल मोस्ट प्रोबेबली बी लीस्ट ऑस्ट्रेसाइजिंग, क्योंकि जस्ट फोकस कर रहा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस ना। सो दिस इज वन ऑफ द लीस्ट ऑस्ट्रेसाइजिंग पॉइंट। Second, profile employees with a propensity to engage in acts of sexual harassment। यहाँ पे अब तुम उनको शॉर्टलिस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो डरेंगे, एंड दिस विल ऑस्ट्रेसाइज और स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग इट। तो दिस इज नॉट आर करेक्ट आंसर। डिसिप्लिन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, ऑब्वियसली अगर तुमने उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया है और उनको आप डिसिप्लिन में भेजना चाहते हो, दिस ऑल्सो मीन्स दिस विल स्टॉप देम। सो दिस इज ऑल्सो not least ostracizing. So this is also wrong. So you can see that option C will be the correct answer here. Next one, the CEO of Fair Consulting wanted the adjudicating committee to reduce the number of errors. While deciding on sexual harassment complaints, the employee suggested that the committee could do the following to reduce errors in judgment। तो यहाँ पे ऑप्शन देखने से पहले let's see the question। So from the following, choose the most effective sequence, ठीक है, to arrive at the right decision। तो क्या क्या होता है, लिसन टू द आर्ग्यूमेंट। देखो कभी भी ऐसा होता है ना, द फर्स्ट बेस्ट केसेस, जब भी दो पार्टीज में झगड़ा होता है, हमेशा फर्स्ट, दिस इज काइंड ऑफ थंब रूल मान लो, पहले अलग से उनकी बातें सुननी चाहिए, सो दैट एक प्रेजुडिस या फिर ओवरलैप, मतलब ओवर पावरिंग थॉट ना आ जाए। आई नो देयर विल बी सर्टेन पॉइंट्स, जब तुम अगर दोनों को साथ में रखोगे तो इन्फ्लुएंस एक पार्टी का ज्यादा हो सकता है, तो वो काइंड ऑफ फेयर वो नहीं हो पाता, जजमेंट नहीं हो पाता। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू लिसन टू द आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटली।
ठीक है, तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन 1 एंड सेकंड एंड ई एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेस्ट वुड बी टू लिसन टू देम टुगेदर। ठीक है, नाउ ब्रिंगिंग बोथ द पार्टीज टुगेदर आफ्टर लिसनिंग टू देम सेपरेटली, इट विल हेल्प इन अ कोलैबोरेटिव डिस्कशन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफिकेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा कि क्या अलग अलग बोला था और अब जब साथ में आके बोल रहे हैं दोनों, सो वेदर दे आर स्टिकिंग टू देयर पॉइंट्स और नॉट। ठीक है, सो 2 के बाद 1 आएगा, सो विच ऑब्वियसली मेक्स ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो, लास्ट विल बी हायर अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो obviously if you introduce a forensic expert at this age or at this stage, it will help the committee's ability to objectively assess the evidence na? So 215 is the right sequence. The last question. Of late, the adjudicating committee received a complaint from a junior female consultant. Her immediate boss cracked a bawdy joke, मतलब अच्छा नहीं, vulgar थोड़ा सा, about her in the office tuck shop. When the committee probed the alleged misconduct, they identified an independent witness. She agreed to give her testimony to the committee. ठीक है, जो भी proofs and evidence है वो decide किया कि मैं दूंगी. Now, however, she was unsure if she would like to be identified by the either by the complainant or the accused. ठीक है, the convener of the committee was confused about the stance to be taken of the witnesses concerned. ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिमनी देने के लिए रेडी थी, बट वो आइडेंटिफाई वो करे या ना, शी वॉज कंफ्यूज। एंड ऑब्वियसली कन्वीनर ऑफ द कमिटी को डिसीजन लेना है कि वो क्या कर सकता है। फर्स्ट इज द कन्वेनर शुड ensure that the witnesses identifies herself because both the accused and the complainant must identify themselves. अब देखो, it does not this particular option does not consider the potential safety concerns. ठीक है, and it also may discourage truthful testimony. ठीक है, ऑब्वियसली किसी को धमका के तुम करवाओगे काम तो अपना चेंज कर देगा ना स्टेटमेंट, सो दिस इज नॉट कंसिडरिंग दैट. Next, the convener should ensure that witness identify herself at will, as it will ensure that she will not present frivolous proof related to the inquiry. अब देखो, यहाँ पे ओवरलुक किया जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द विटनेस. विटनेस को प्रोटेक्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट मे क्रिएट एन अनसेफ एनवायरनमेंट फॉर द विटनेस ऑल्सो ना. तो विटनेस को हमेशा ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. C option is the convener should not let witnesses' identity be revealed that it might expose her to a threat either from the respondent or the accused. Yes, this will be the correct answer. हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, विटनेस को हमेशा बचा के रखना चाहिए. So option C here will be the best answer. Okay, so I hope this is also clear now to everyone. Chalo, let's see the next set. Raghuveer, a reputed doctor, practices medicine in a tier 3 city. He owns an imported SUV which he bought 10 years ago using his hard earned savings of nearly 5 years. So initially he used to take it for long rides, but for the last 6 7 years, he only commutes to his clinic, a 10 minutes drive from his home. So now the SUV has been proud possession, but it demands high maintenance. Also, the diesel guzzling SUV does not comply with the new emission norms being introduced in the Tier 1 and Tier 2 cities. Of late, a few newspapers reported that the new emission norms may be introduced in Tier 3 cities as well. This news has worried Raghuveer. So let's see the question now. Raghuveer is afraid that once the new emission norms are rolled out, he might not be able to use his SUV anymore. So which of the following options will best put Raghuveer at ease using his SUV for some more time? मतलब टायर 3 सिटी में वो रहता है,
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ा सा उसको और टाइम थोड़ा चैन से जीने में हेल्प करे? तो लेट्स सी. फर्स्ट इज हिज मैकेनिक assures him that the new norms will not be introduced anytime soon. अब देखो मैकेनिक को पता थोड़ी ना होगा कि वो कब इम्प्लीमेंट होगा रूल या नहीं. सो मैकेनिक, लाइक मैकेनिक इज नॉट अ गुड सोर्स एंड ही इज अ रेप्यूटेड डॉक्टर. ठीक है. सो दैट्स व्हाई मैकेनिक की बातों पे भरोसा तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट करेक्ट. सेकंड, his lawyer friends in his city recently bought non-compliant SUVs from tier 2 cities. अब देखो लॉयर फ्रेंड्स है. अब लॉयर फ्रेंड्स है, थोड़ा तो दिमाग लगा के किया होगा ना. दे माइट बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन. अब उन्होंने खुद नॉन कंप्लाइंट एसयूवीज लिया है फ्रॉम टायर 2 सिटीज. सो ऑब्वियसली टायर 3 सिटीज में उसके सिटी में जब तक पहुंचेंगे थोड़ा टाइम तो होगा ना. सो आई एम जस्ट कीपिंग दिस ऑप्शन सेफ बिकॉज लॉयर फ्रेंड्स थे एंड सेकेंडली टायर 2 सिटीज में उन्होंने अभी खरीदा है. सो मे बी ही माइट बी एट पीस की अभी के लिए. मे बी इट माइट नॉट come into act in tier 3 cities, right? तो अभी के लिए I'm just keeping this option safe. Third वाला, let's see. His city has many other SUVs which are as old as his. Again, देखो, it does not matter if there are many SUVs in his cities or not. Law implement होगा, उसको लेके उसको टेंशन है. तो सिटी में कितने भी SUVs हो, that does not matter. तो यहाँ पे रघुबीर की टेंशन दूर नहीं होगी. Next is, as a sought after doctor, all the law enforcement officials are his patients. See again, ethically you should be right. अगर ये बोल के वो ईज में चले जाए कि मेनी ऑफ माई लॉयर फ्रेंड्स आर माई मतलब पेशेंट्स है उसके, तो इट विल नॉट बी मॉरली एंड एथिकली राइट. तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. नॉन कंप्लाइंट एसयूवीज आर स्टिल प्लाइंग इन टायर 2 सिटीज. अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है, दिस विल नॉट पुट रघुबीर एट ईज बिकॉज that might just be some people na who are not abiding the law and they might be caught in the future. अगर लॉयर कुछ करते तो दे माइट नो अबाउट द सिचुएशन बेस्ट ना. यहाँ पे कुछ ही लोग होंगे जो नॉन कंप्लाइंट एसयूवीज है तो वो पकड़े जा सकते हैं. So, ये दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट इनफ टू पुट रघुबीर एट ईज. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Anya, Raghubi's daughter, works in a metro city. She is concerned about private transport emissions and is unhappy with her father's diesel guzzling SUV. Though she wants her father to be more environmentally responsible, she is aware that any drastic suggestion might attract strong resistance. ठीक है, तो कुछ ड्रास्टिक भी सजेस्ट नहीं कर रहा करना, येट उसको अपने फादर को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनवाना है. Hence, she wants a solution acceptable to Raghubeer that gently dissuades him from using his SUV. ठीक है, तो कुछ ऐसा ऑप्शन बताना है कि वो अपना SUV यूज करना बंद कर दे on a daily basis. So, which of the following actions by Anya will best dissuade, मतलब उसको मनाएगी रघुबीर को from using his SUV on a daily basis. मतलब prevent रघुबीर from using his SUV. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिक्वेस्ट रघुबीर टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तुम डायरेक्टली आ जाओगे तो मना करेगा ना. ही हैज बीन यूजिंग हिज ओन व्हीकल. अब तुम बोलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो एंड एसयूवी कभी कभी चला लेना, रघुबीर खुद वहां पे ऑब्जेक्ट करेगा. ठीक है, एंड खुद रेजिस्ट करेगा. यहाँ पे लिखा हुआ था. कोई ऐसा सजेस्ट मत करना कि वो ड्रास्टिक चेंजेस हो. तो दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट. Next, ask his mechanic to explore if the SUV can be retrofitted with a CNG kit. अब देखो यहाँ पे although many of you might think this will be correct, but यहाँ पे देखो ऑप्शन बी जो है retrofitting with CNG is not viable. SUV को तुम फिर से फिट कर दो with the CNG kit, it is not a viable option. ठीक है, तो this is also not correct. Third is take away Raghubeer's SUV to the metro city and देखो मेट्रो सिटी ले जाओगे तो अगेन वो तो टायर 3 में खुद रहता है, मेट्रो सिटी में तो और नॉन कंप्लायंट होगा. तो दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट. थर्ड इज फोर्थ इज गिफ्ट रघुबीर अ स्मॉल पेट्रोल कार. अगेन एनवायरमेंटल फ्रेंडली देखना था ऑप्शन. पेट्रोल भी तो एज हार्मफुल एज वो होता है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट.
Last option we are left with is ask Raghubeer's secretary to ferry him to the clinic Delhi in her car. ठीक है, तो यहाँ पे उसके सेक्रेटरी को ले जाने के लिए बात हो रही है ऑब्वियसली। अब सेम जगह जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस विल हेल्प आन्या टू परसुएट हिज फादर ना कि अपने कलीग के साथ चले जाओ एंड एक्सेप्ट फॉर द वीकेंड्स। ऑब्वियसली एक्सेप्ट फॉर द वीकेंड्स, कभी भी जब भी क्लिनिक जाना हो यू कैन टेक माय फादर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा amongst all the choices. This will be the best choice, obviously carpooling type thing। अगर कोई दूसरा सेट आ गया तुम लोग के एग्जाम में, यू शुड कंसिडर कारपूलिंग और सम अदर ऑप्शंस लाइक दीज। ठीक है, सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट वन, the new emission norms are about to get implemented in tier 3 cities and Raghubeer city will follow suit shortly. Hence, Raghubeer starts exploring options of buying an EV. He lists the following factors that will guide him on buying an electric car। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लो, directly seeing the options now। The above listed factors have been arranged in decreasing order of influence। मतलब सबसे ज्यादा जो influential होगा उसको पहले लेना है, then जो कम influential होगा वो सब। So obviously, which of the following options will help Raghuveer buy an electrical vehicle immediately? सबसे ज्यादा जो strong point होगा उसको पहले रखना है। तो if you see the options also guys, देखो इधर EVs within Raghubeer's budget can cover his daily commute but not the long rides। अब उसको long ride के लिए भी तो चाहिए होगा ना। So this is one of the not strong reasons why Raghubeer should buy an EV। लॉन्ग राइड के लिए तो है नहीं ना, तो अभी के लिए पी हम स्टार्ट नहीं कर सकते पी से। एंड ऑप्शंस देख लो तो क्यू टी एंड एस से ही होगा, तो वील डायरेक्टली कम टू दैट। सो लेट्स एक्सप्लोर क्यू। अ न्यू इलेक्ट्रिकल एसयूवी इन द मार्केट विद इन हिज बजट, बजट में भी था, नियरली हैज द सेम लुक एंड फील। तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू परस्यू और परसुएट रघुबीर ना कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों करना चाहिए, क्योंकि सेम फील देती है as his SUV, तो why wouldn't he purchase it? तो this is a strong point। तो Q से हम मे बी स्टार्ट कर सकते हैं। Let's see T। The only shop selling EV in a city is ready to trade in Raghubeer's SUV at a reasonable price। अब देखो out of Q and T obviously Q will be a better one ना, मतलब Q ज्यादा persuasive है। अब सेम प्राइस मैच कर लेगा दैट इज फाइन, बट इंसान को एक ओवरऑल फील भी तो चाहिए होती है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्यू से ज्यादा टी इंपॉर्टेंट होगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग द ऑर्डर ऑल्सो। नेक्स्ट लेट्स सी दी एस। अगर एस से अगर हुआ तो ऑप्शन ई हो जाएगा, अदरवाइज वील सी विद दीज ओनली। न्यू चार्जिंग स्टेशन ऑन द मेन हाईवे कनेक्टिंग हिज सिटी टू द क्लोजेस्ट मेट्रो में कम अप इन अ ईयर। अब देखो ये गुड न्यूज भी है बैड न्यूज भी है, तो इमीडिएटली तो नहीं खरीद सकता ना। ऑल्दो ठीक है, कमिंग फ्यूचर में हाईवे में लग जाएंगे एक साल बाद, बट वो इमीडिएट गुड न्यूज नहीं है। तो एस से तो डेफिनेटली स्टार्ट नहीं हो सकता, तो एस से भी नहीं होगा, टी से भी नहीं होगा। सो इट्स ईदर आउट ऑफ बी एंड सी। अब देखो क्यू के बाद आर आएगा या टी आएगा, दैट वी नीड टू एक्सप्लोर। तो टी इज ऑलरेडी आई टोल्ड इट्स अ गुड रीजन बट नॉट मोर देन क्यू। क्यू सबसे ऊपर रहेगा, क्यू के बाद टी आएगा या आर आएगा, लेट्स सी। अब ईवीज कैन नॉट बी ड्रिवन बियॉन्ड द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ये तो ऑब्वियसली ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया ना ईवी के लिए। और हमें क्या करना था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस पहले पहले रखने थे, फॉलोड बाय जो वीकेस्ट रीजन होंगे वो लास्ट में। यू कैन सी हियर यहाँ पे आर लास्ट में रखा हुआ है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑर्डर विल बी क्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज टी, देन थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इज पी रीजन, followed by SNR। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट सेट नाउ। Future Leaders is one of the most prestigious private schools in a small town next to an industrial hub. Most of its students come from affluent families, but there are some who belong to middle income and lower middle income families as well. The school charges an annual fee of rupees 2 lakhs, inclusive of all the charges payable at the beginning of the academic year. Roughly 20% of the fees collected goes into paying the salaries of the teachers, another 30% for the upkeep of the school, and roughly 20% for miscellaneous expenses,
in running day-to-day business like supply, cleaning, etc. The remaining goes into an exigency corpus, मतलब emergency के type. This year, like the rest of the country, the town has been hit by the coronavirus pandemic. The classes have been shifted online. The local authorities have mandated that all schools have to reduce their fees by 20%. Further, the parents should be given extended time to pay the fees if they are in financial distress. ठीक है, कंडीशन है अगर financial distress में है तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देना है. 6 months into the academic year, only 40% of the parents have paid even the reduced annual fees. Obviously, it is a problem for the school as well. So let's look at the questions. There will be 3 questions. Let's see. The first question is, Ajay Biswas, the rector of the school, is alarmed by the shortfall in fee payments and he wants to find the best solution to manage the situation. He does not want to trouble the parents who might be genuinely in financial distress, but feels that there may be a possibility that many parents are taking advantage. Obviously, हो सकता है. Now, which of the following actions by the school will best make financially capable parents pay the fees? ठीक है, कि जो अटका के रख रहे हैं पेरेंट्स, दोज हु आर केपेबल, वो क्यों वो पैसे पे कर दे, ऐसा कुछ हमें सोचना. Now call the parents every 3 days requesting them to pay. Again, not a feasible option. हर तीसरे दिन फोन थोड़ी ना करोगे ऐसा. It is definitely not the best way to do. It is not a feasible option basically. Next, share through local newspapers that the school is facing financial crunch and may have to close down. अब देखो ये तो obviously ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है ना अबाउट दी स्कूल्स क्रेडिबिलिटी, एंड ये उल्टा लोगों में रॉन्ग इंप्रेशन हो जाएगा. नो स्कूल विल फॉलो दिस राउट टू पब्लिश सच अ थिंग इन द न्यूज़पेपर. ठीक है, दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट. सी इज ऑफर 10 and 5% डिस्काउंट्स टू पेरेंट्स. अब अगेन यहाँ पे ऑलरेडी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है स्कूल की भी, तुम उल्टा डिस्काउंट just because of getting the fee from the parents, you again cannot give any type of discount. So this is also not a viable option. D option, give a 10% bonus. अब देखो ये भी ना स्कूल के क्रेडिबिलिटी पे वो होगा. जस्ट बिकॉज यू वांट टू टेक फीस फ्रॉम द पेरेंट्स, तुम उनके बच्चों को ताकि वो टाइम पे कर दे फीस, बोनस मार्क्स दोगे ये बोल के, दिस इज ऑल्सो is a question mark on the credibility of the school. So definitely this will not be correct. Next, ask parents to submit a proof of financial distress within 2 weeks, following which can bar their wards from attending classes. Yes, ये वाला will be the best option. ठीक है, so option E is the correct answer. Next question now. The board of trustees of the school is concerned about the financial situation and has called Biswas for a meeting. The trustees have thought of the following actions to improve the school's finances immediately. अब question पढ़ लेते before jumping to the points. तो Biswas is tasked to find the most feasible way of alleviating, मतलब थोड़ा कम करना, and increasing the financial crunch immediately, मतलब lower down करना financial crunch. So which of the following combination helps in decreasing order of preference will help Biswas in achieving the goal. मतलब सबसे important पहले होगा, then the least important towards the last. So if you look at the option PTQR, अब सारे ही almost अलग अलग उससे start हो रहे, so you need to find the best one. So appeal to the local industrialists to donate the school. ठीक है, it is a possible option, so let's keep it safe right now. So withhold 20% of the teacher's salary till the situation improves. अब देखो यहाँ पे डेफिनेटली स्कूल इज फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कट करना चाहिए. तो इफ आई टेल यू टू रेज अ फंड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, एंड सेकेंड ऑप्शन इज टू कट डाउन सैलरीज, दोनों में से इंप्लीमेंट करने में इजी कौन सा रहेगा? दिस वन ना, कट डाउन दी सैलरीज. ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इन शॉर्ट टर्म, बट कटिंग डाउन सैलरीज ये जल्दी हो जाएगा पैसे रेस करने से.
तुम पैसा रेज करोगे तीन थर्ड पार्टी से और वो देंगे या नहीं देंगे, दैट इज अगेन एन अनसर्टेन थिंग. सो आउट ऑफ दीज टू दिस इज अ बेटर. सैलरीज कट करके यू कैन improve some things more quickly. ठीक है, तो क्यू पहले आएगा. ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन में क्यू अगर बाद में आ रहा है दैट विल बी रॉन्ग. तो यहाँ देखो क्यू बाद में आ रहा है, दिस इज रॉन्ग. अगेन क्यू लास्ट में आया, दिस इज रॉन्ग. क्यू यहाँ पहले आया, मे बी दिस माइट बी करेक्ट. यहाँ पे भी देखो क्यू लास्ट में आ रहा है एंड ये, ठीक है, दिस माइट बी करेक्ट. आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग ए बी एंड डी, राइट. अब देखो आस्क पेरेंट्स टू पे अप विद इन अ वीक और शो अ प्रूफ. यस, दिस यू कैन डेफिनेटली डू. पेरेंट्स को पे करने के लिए बोल दो तो डेफिनेटली आर पहले आएगा देन पी ना. पहले तुम आर को इम्प्लीमेंट करवाओगे ना, तो पहले क्यू आएगा देन आर. सो यू कैन सी दिस ऑर्डर, तो आर यहाँ पे पहले है, विच इज नॉट द केस. सो यू कैन अगेन एलिमिनेट ऑप्शन ई हियर. यहाँ पे ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस इज दिस ऑप्शन सी. तो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन गाइस, एलिमिनेशन मेथड विल बी द बेस्ट इन अराइविंग एट द आंसर क्विकली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी सेट का. Teachers of future leaders contribute to its stellar reputation. Moreover, they assist the school in arriving at several critical decisions. Biswas resents their involvement in school matters as he has to listen to their collective voice rather than the other way around. तो ऑब्वियसली स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है, बिकॉज सबकी बात भी तो सुननी पड़ेगी ना. ऑब्वियसली टीचर्स डू कंट्रीब्यूट टू देयर रेपुटेशन, बट कहीं कहीं हो जाते हैं रिस्ट्रिक्ट. So Biswas feels that the current situation offers him an opportunity to get back to the teachers. He wants to discuss the possibility of reducing teachers' salaries by 20% with the board of trustees. ठीक है, तो उनको 20% सैलरी कट डाउन करने का उसको ड्राफ्ट आगे करना है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट इनेबल बिस्वास टू प्रेजेंट हिज केस फॉर रिड्यूसिंग. तो अपना कौन सा बेस्ट पॉसिबल आर्ग्यूमेंट दे सकता है बिस्वास, सो दैट ही कैन persuade the board of trustees to reduce the teacher's salary. So first is, two other well-known private schools in the city struggling to survive have resorted to a pay cut. Yes, definitely. अब तुम example दोगे similar to your school, a well-known reputed school है, उन्होंने भी पे कट किया. दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ना, एक सिमिलर एग्जाम्पल देके. तो आई एम जस्ट कीपिंग इट सेफ राइट नाउ. वील एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस. Future leaders pays higher salaries to its teacher in comparison to the other. अब देखो यहाँ पे टीचर्स, सिंस टीचर्स रेपुटेशन contributes to the reputation of the school यहाँ पे given है, तो it should be that more salary to be paid ना. क्योंकि इन इस ये वाला जो स्कूल है, यहाँ पे इनकी जो टीचर्स है दे कंट्रीब्यूट टू दी स्टेलर रेपुटेशन. तो इस वजह से वो काउंटर आर्ग्यू कर सकते हैं ना कि हायर सैलरी इसलिए मिल रही है क्योंकि हम तुम्हारा रेपुटेशन बनाए रखते हैं. इफ यू से दिस इज करेक्ट देन टीचर्स विल से दिस ना कि हमारा जो स्कूल का रेपुटेशन है वो हमारी वजह से है. सो व्हाई आर यू गिविंग दिस रीजन टू कट आवर सैलरी. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, most of the teachers are alumni of the school and hence should be asked to give back to the school through a pay cut. अब देखो, getting an education from an institute, it is a two-way street. Definitely they paid fees for the school. They obviously paid fees for the school services, which presents the case in the manner that don't bear any proof. मतलब just because तुम कह रहे हो कि टीचर हम एलुमिनाई थे, यू शुड गिव अस, यू आर going to get a cutback, this is not actually helping. ठीक है, अच्छा रीजन नहीं है टू विश्वास टू टेल देम. नेक्स्ट इज 30% ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स में रिजाइन इफ देयर इज अ पे कट. अब ये तो उल्टा टीचर्स का केस स्ट्रॉन्ग कर देगा ना कि अगर 30% जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है वो रिजाइन कर देंगे तो विश्वास को तो अपनी बात लेनी पड़ेगी ना वापस. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट. Teacher salaries are a significant part of the school's operating cost. अब देखो, सेम रीजन वाई बी वाला पार्ट मैंने रिजेक्ट किया था. क्यों? टीचर्स ये बोल के भी तो काउंटर आर्ग्यू कर सकते हैं ना, तुम्हारा रेपुटेशन भी तो हमारी वजह से है.
तो सिग्निफिकेंट पार्ट तो होना ही चाहिए तुम्हारा, मतलब हमारी सैलरी तुम्हारे स्कूल का सिग्निफिकेंट पार्ट तो होना चाहिए। सो बाय दैट अगेन यू कैन काउंटर। ठीक है, तो ओनली वे विश्वास कैन प्रेजेंट दिस केसेस कि दो सामने और स्कूल थे वेल नोन जो स्ट्रगल कर रहे थे सरवाइव करने के लिए एंड दे हैव रिजॉर्टेड टू अ पे कट। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट नाउ। फंडामेंटल रिसर्च इन साइंस फॉर पेपर एंड कॉर्पोरेशन एप्लीकेशंस is an R&D unit of a public sector undertaking. This is a PSU. So Furka's employees are research scientists who assist the public sector undertaking through their RD, research and development, basically. Given the far-reaching implications of its research, Furka's was established as a separate entity near the factory of the PSU. Furka's has three levels of hierarchy. They are junior, senior, and chief scientist, and all of them reside on the same campus. Hence, every scientist, regardless of hierarchy, resides in a house that is similar in all aspects. Though the scientists are entitled to a house rent allowance, that is HRA, given the distance of the Furkas from the city, housing them on the campus makes sense. Obviously, in-house uh, रहने की facility है because it is far from the city. The new recruits are provided a transit accommodation in the institute studio apartment. ठीक है, उनको अभी के लिए temporarily transit accommodation given है in studio apartments until vacant houses are available. For these recruits, a queue has been created on the basis of their date of joining and not on hierarchy. ठीक है, जो पहले डेट ऑफ ज्वाइन पहले ज्वाइन करेगा उसको उतनी जल्दी मिलेगी, विद द मोस्ट रीसेंट रिक्रूट गोइंग टू द लास्ट। ऑब्वियसली जो सबसे पहले क्या ज्वाइन किया होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना, एंड जिसने लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया उसको बाद में। एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फुरकाज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हु रिपोर्ट्स टू द डायरेक्टर ऑफ फुरकाज। ठीक है, एंड दिस इज फुरका, डोंट वरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन मच, इट्स जस्ट अ शॉर्टकट। ठीक है, तो लेट्स look at the three questions from this set. The first question is, Harsh Kohli resides in house number 324. Since long, Harsh wants to move to a 3 series house from a 3 series house to a 2 series house because his mother-in-law, a chief scientist, lives alone in house number 225. A few years back, Harsh formally requested the CAO to allow him to move to a 2 series house whenever available. Recently, when house number 224 becomes vacant, Harsh appeals to the CAO for that house, citing his earlier request. Obviously, 2 साल मतलब कुछ साल पहले उसने रिक्वेस्ट किया था, तो अब जब वेकेंट हो गया तो उसको मिल जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे रिक्वेस्ट जो पहले ज्वाइन करता उसके बेसिस पे, बट ही वांट्स टू चेंज, तो कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? नाउ द करेंटली there are 5 scientists waiting in the queue and Soft Tangu is on the top of the queue. Obviously तो न्यू ज्वाइनी थे, उनमें से सॉफ्ट जो है उसको अकॉर्डिंगली वो मिलना चाहिए था, बट क्योंकि इधर हर्ष ने भी पहले से ही एक एप्लीकेशन दे रखी थी, फॉर्मल रिक्वेस्ट कि मुझे 2 सीरीज हाउस में चेंज करो, तो सम थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड नाउ. So from the following options, choose the best action to be taken by CAO without violating the existing housing policy. ठीक है, हाउसिंग पॉलिसी क्या है, जिसको क्यू में है सबसे पहले उसको मिल भी जाना चाहिए, येट एट द सेम टाइम इसने एक रिक्वेस्ट भी डाली थी. सो लेट्स सी. Allot house number 224 to Sof, asking Harsh to negotiate a possible swap with हो. अब ये क्या बोलना चाहता है कि स्वॉप सॉफ को दे दो हाउस नंबर 224 एंड हर्ष को बोल दो कि उससे एक बार बात करके देख ले इफ ही इज रेडी टू गिव यू दैट हाउस और नॉट. अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना फिर तो. While मतलब A option is certainly possible, but that will allow more request for swapping in future ना. फ्यूचर में और भी स्वैपिंग, ऐसे तो हर कोई फिर स्वैप करने की बातें करना शुरू हो जाएगा ना. दिस विल नॉट इन अ लॉन्ग रन हेल्प द सीएओ ऑल्सो. ठीक है, तो उसको अपने भी तो सोचना है ना आगे के लिए भी सीएओ को, तो सो दैट सीएओ विल नॉट टेक दिस स्टेप. नेक्स्ट इज ask Harsh to join the queue because scientists in the queue should be given priority. अब देखो हर्ष भी तो वही था ना,
वहीं पे रह रहा था। सो ये रिजेक्ट करो बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सबमिटेड दिस फॉर्मली, उसने रिक्वेस्ट डाल दी थी। तो यू कैन नॉट साइड दिस थिंग एंड रिजेक्ट हिज रिक्वेस्ट. Next, ignore Harsh's request. Again, you cannot do. Something needs to be taken care of. Ask Harsh to move to the house number 224 immediately and allocate Harsh's house to solve. Yes, this you can do. Definitely. जो हाउस नंबर 224 वेकेंट हो गया, हर्ष को बोलो तुम उसमें रह लो, और जो हर्ष जिसमें रहता था 3 सीरीज हाउस में, उसमें सॉफ्ट को डाल दो। बिकॉज सॉफ्ट के पास तो ऐसी कोई प्रायोरिटी या फिर कुछ ऐसा नहीं था ना कि मुझे यही वाला घर चाहिए। इट्स जस्ट दैट दे हैव बीन रिक्रूटेड और उनको एक घर मिलना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन, क्रिएट अ सेपरेट क्यू फॉर एक्सटेंड रेजिडेंट्स। अब अगेन दिस इज नॉट feasible ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Wrong recruit joins Furkas recently and is placed third in the housing queue. He has been temporarily housed in a studio apartment. Given that studio apartment is too small, he requests his sister to take care of their ailing parents while he awaits a regular allotment, house allotment. As months pass, his sister finds it difficult to accommodate her parents along with her in-laws. She requests Rong to accommodate them with his family. तो तब तक क्या किया, रॉन्ग ने बोला कि जब तक मुझे घर नहीं मिल जाता, सो ही आस्क्ड हिज सिस्टर कि हमारे पेरेंट्स को अपने घर रख लो। नाउ सिंस ही इज थर्ड इन द क्यू, ही मे नॉट गेट अ हाउस अलॉटेड इन न्यू फ्यूचर। तो अभी क्योंकि देखा उसने कि टाइम लग रहा है एंड अभी तक काफी महीने पास हो चुके हैं, कुछ हुआ नहीं है। So he approaches the CAO with a request to be moved up to the queue on humanitarian grounds. Obviously, उसके पेरेंट्स काफी बीमार हो रहे थे, so on humanitarian grounds he made a request to the CAO to let him move up the queue. तो क्वेश्चन देखते हैं, which of the following responses by CAO shall be perceived as the most appropriate by all the stakeholders? मतलब सबका ध्यान रखते हुए द CAO नीड्स टू टेक अप अ डिसीजन एंड उसको एक रिस्पॉन्स देना, तो वो वाला बेस्ट ऑप्शन चूज करना। आस्क रॉन्ग टू मीट विद द डायरेक्टर ऑफ फूड्स का एंड प्रेजेंट हिज केस। अब देखो CAO के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना ये सब देखने की, तो वो डायरेक्टर के पास रीडायरेक्ट नहीं कर सकता केस को, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, आस्क रॉन्ग टू नेगोशिएट एंड अराइव एट द कंसेंसस विद द two scientists ahead in the queue which the CAO shall implement. Again देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में ही मैंने बोला था कि रिक्वेस्ट वाला जो गेम है, स्वैपिंग वाला जो गेम है, मतलब यहाँ पे भी अगेन स्वैप होता है ना, कि पहले दो से जाके एक बार रिक्वेस्ट कर लो कि मुझे दे दो। दिस विल अगेन नॉट हेल्प। ऐसे तो सभी कुछ ना कुछ बहाना भी हो सकता है किसी का, ऑल्दो दिस इज अ जेन्युइन केस कि उसके पेरेंट्स इल है, बट you have seen this in general life also. If one sees a person की बोल रहा है कि can I go up or can I go in front of you, तो सब in a way पीछे से आके बोलने स्टार्ट कर देते। तो again seeing this situation, CAO will not allow wrong to do this. Next, inform wrong that nothing can be done. Again कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ेगा because this has been presented as a problem, genuine problem. ठीक है, तो कुछ नहीं करके हम ऐसे बैठ नहीं सकते। Next, facilitate wrong in getting a house in the city along with the free commutation for the first 3 months. अब देखो यहाँ पे this has been presented as the best choice, मतलब it is the most viable because it not only gives wrong the appropriate space to live but also it prevents any alterations in the present queue ना। क्यू को भी उसको खराब नहीं करना था, बिगाड़ना नहीं, तो उसको तब तक के लिए एक सिटी में हाउस दिलवा दिया। कुछ टाइम के थिंकिंग की वो कुछ टाइम के लिए अगर 3 मंथ्स के लिए रहेगा, मे बी ही माइट मूव अप टू द क्यू एंड गेट अ हाउस इन आवर कैंपस, तो तब तक के लिए दोनों चीज इससे सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन देखो, मूव रंग टू द टॉप ऑफ द क्यू एंड मेक अ रूल दैट साइंटिस्ट विद एलिंग पेरेंट्स शैल बी गिवन प्रेफरेंस। नो, ये तुम डायरेक्टली ऐसा बोल के नहीं कर सकते, सो ओनली ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर।
So last question of the set is, of late the CAO has received several requests from the residents of 3 series houses to move to other series houses. The CAO is aware that this is largely because of their own noisy factory nearby. Due to limited housing available on the campus, he must do something before the problem worsens. He wants to find a solution that makes the lives of 3 series residents more comfortable. So which of the following actions can help the CAO in achieving his goal? कौन सा ऐसा है कि सबके जनहित में everything is sorted. ठीक है. So the first option is provide 3 series residents with a hardship allowance. अब देखो पैसे से जाके तुम compensate नहीं कर सकते. This is also financially not possible. ठीक है, पैसे से तुम उनका वो नहीं कम कर सकते noise. You have to do something with that. तो यहाँ पे तुम पैसों से you cannot replace this. Option B is offer a higher HRA to a 3 series residents again. उनका problem है, you need to genuinely solve that. पैसों से again you cannot buy this. Third option, introduce a policy of accelerated promotion for junior scientists living in 3 series. Again, promotion should be ethically done. उनके merits and skills के basis पे होना चाहिए, not just because they are living in a 3 series house. Again, morally and ethically wrong. Third, appeal to the top management to make the factory work only 5 days a week. अब देखो, although it might seem like a possible action, but it is not targeting the main issue ना. अब 5 दिन के लिए काम तो करेगा ना, डिस्टरबेंस तो स्टिल होगा उन लोगों को. इवन इफ यू से कि 5 दिन के लिए फैक्ट्री काम हो, बट स्टिल इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर दोज 5 डेज ना. तो दिस इज नॉट टारगेटिंग द सोल्यूशन कि उनको उनकी लाइफ थोड़ी सी जो नॉइजी एनवायरनमेंट है वो ठीक हो जाए. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. लास्ट ऑप्शन, इंस्टॉल एक्सपेंसिव साउंड प्रूफ विंडोज इन द 3 सीरीज क्वार्टर्स. ये लॉन्ग रन के लिए भी ये इज द बेस्ट ऑप्शन. अब यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल क्रंच नहीं था इंस्टीट्यूशन के पास, दैट्स व्हाई दे कैन वेरी वेल इंस्टॉल दिस साउंड प्रूफ विंडोज. ठीक है, तो इसके बेसिस पे यू कैन नॉट रिजेक्ट दिस. ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट नाउ. सो कोरकाई इज अ serene village nestled in a small island separated from the mainland by a strait. The world forgot to name. So its inhabitants are mostly fishermen. A few are cattle grazers too. A boat ride across the strait is the only mode of transport to the mainland. Budgu, the boatman, ferries people, cattle, and bicycles across the strait in his boat for a living. The remoteness and the lack of connection to the mainland has served him well. He has a family of 5. His 2 daughters are away studying in a city college and dream of corporate jobs in the cities. His ailing mother and wife complete his family. Budgu sent his daughters to study in the city as there is only one school in Korkai run by an NGO. The NGO prepares the village kids for higher studies. For those who cannot go to the cities, the NGO teaches them about the virtues of the local way of life. Budgu is a member of the village panchayat that runs the village administration. At Korkai, at Korkai, hardly anyone remembers the local MLA or MP. Interestingly, the local MLA visited last week and informed the islanders of major changes planned for the region. That is urgent construction of a bridge connecting the island to the mainland and real estate development. She announced that the island will become a well-known ecotourism destination in the state. She stressed that the local livelihood dependent on fortunes at the sea might enjoy the certainty in minimum wages meted out by the eco-resort owners. Nevertheless, some villagers fear that the bridge will irreversibly change their lives and livelihoods. Okay, so this is the case. Let's look at the 3 questions. So first of them is here. Budgu fears that the proposed bridge will leave him jobless and is determined to do something about it. Obviously, he was the only bridge because he had a boat ना, जिससे लोग bicycles and all cattle इधर उधर करते थे.
Now he wants to gather effective support in order to get the construction of the proposed bridge delayed. तो obviously उसके लिए तो effective effect हो जाएगा ना वो, अगर ये बन गया तो. So which of the following will be the most feasible option for Budgu to gather effective support? ठीक है, तो बुडगू अपने केस को कैसे प्रेजेंट कर सकता है बेस्ट, सो दैट ऑप्शन नीड्स टू बी लुक्ड एट. So form a boat rowers association and sit on a hunger strike again. Not a good option definitely. Hunger strike पे बैठ जाएंगे. It is definitely not a feasible option. Inform the environmental experts in the nearby cities that the strait is home to rare fish. अब देखो, एक ब्रिज बनाने में, ब्रिज ही तो बनाने की बात हो रही थी, उसमें रेयर फिश फ्रॉग्स टर्टल्स कैसे हर्ट होंगे, वो तो ऊपर से जाता है ना. दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट. Next, suspend his boat services till the villagers start supporting his cause. Again, not a good way. Next, partner with the local NGO and campaign that the developments will ruin the local way of life. See, although it might look as a good one, but यहाँ पे देखो, option E looks a more credible way. Get a resolution passed by the panchayat that the bridge will ruin the local way. Passing through or getting a resolution note through panchayat is a more credible way than this. ठीक है, तो यहाँ पे option E is a better answer than D. Let's look at the next question from this set. The local MLA is worried about the resistance to the project. This project, like her other successful projects in nearby villages, was supposed to garner a significant amount of funding. Moreover, it would make her the face of development in the state, perhaps even would land her a ministerial berth. However, Budgu's activism has cast the project in a bad light among the popular minds. The MLA wants to protect her pro-development image. So, which of the following is the best course of action for the MLA? So, let's see कि क्या बेस्ट है यहाँ पे एमएलए के लिए. सो क्रिएट अ फिशरमैन एंड बोट रोवर्स कोऑपरेटिव इन द आइलैंड एंड डोनेट जेनरसली. अगेन नॉट एन एथिकली करेक्ट वे. वहां पे इसको सॉल्व करना है. वुडकू वहां पे एक्टिव एक्टिव है काफी इन स्टॉपिंग द पीपल. ठीक है, यहाँ पे पैसा खिला के डोनेट करके कुछ काम नहीं होगा. इनवाइट द विलेज पंचायत फॉर अ डिस्कशन ऑन अ पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन. अब देखो यहाँ कॉम्प्रोमाइज जो वर्ड है दैट इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ नहीं है. ठीक है, इट्स ईदर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस और बुडगूज पार्ट विल मूव. राइट. अपॉइंट अ टास्क फोर्स टू फाइंड ऑल्टरनेटिव लैंड नियर बाय फॉर द प्रोजेक्ट. उसको यहीं पे बनाना है एमएलए को ऑल्टरनेट लैंड के लिए, को सोचना ही नहीं है. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट वे. Discredit Budgu in public meeting by announcing that he is putting his interest. Again, you cannot discredit anyone like this without any proof. Publicize widely that the project will improve the socio-economic condition of the island. Yes, this is the best way by which you can convince others as well. कि अच्छे से सब जगह फैला दो कि सबका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है इस आइलैंड का इम्प्रूव हो जाएगा. दैट विल हेल्प द एमएलए's cause ना. So option E is definitely the correct answer here. Next question. As the project gets delayed, Budgu becomes a well-known social activist with a lot of followers. When Pragati, his elder daughter, finishes her education and starts looking for employment, a few known corporates refuse her a job because of her father's anti-development stand. So which of the following options best communicates to the corporates that Pragati has an identity of her own? तो मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन ढूंढना है से कॉर्पोरेट को पता चल जाए उसकी अलग से पहचान है, नॉट बिकॉज ऑफ her फादर्स एंटी स्टैंड और whatever. Start a blog and update it regularly with views on current affairs. Again, current affairs से related तो कुछ भी नहीं है ना. Current affairs का तो मामला ही नहीं है यहाँ पे. So definitely this is not the correct option. Irrelevant to the cause. Second option, discuss in a social media post why she supports the proposed development in her island village. अब against देखो, यहाँ पे this option is going against her father. मतलब उसको discredit कर रही है to get a job, which is unethical. ठीक है,
अपने फादर को डिस्क्रेडिट करके इन जस्ट टू गेट अ जॉब इज अनएथिकल, तो डेफिनेटली नॉट करेक्ट. Showcase on social media that accolades and awards she received in a college. Yes, basis on this, उसको काफी सारे appreciation and awards मिले हैं. This should be the deciding factor for the corporates whether to take Pragati or not. So this is, I can see very well, looks a good answer. अभी के लिए रखते थे इसको safe. Let's look at the other options. Stop using a last name, again an absurd option. Last name छुपा देगी तो what? Doesn't make any sense, right? E option, go all out on social media to explain how our father's activism is misconstrued by certain corporates. Again, यहाँ पे देखो, it does not address the it does not address the question ना कि क्यों कॉर्पोरेट को प्रगति को लेना चाहिए. So this is misleading actually. ठीक है, so option E is also definitely not correct. तो यहाँ पे you can clearly see option C will be our correct answer. चलो, let's move on to the next set now. Dilip Dosan sells dosas in front of an upscale hospital at a city in Punjab. He only sells two varieties of dosas, plain for rupees 25 and masala for 40. His dosa stall is popular amongst the hospital staff members who mostly hail from South India and form his core clientele. They frequently visit his stall during office hours. ठीक है, ऑफिस आवर्स में आते हैं, as they find his dosas to be reasonably priced. उसका यूएसपी क्या है? ऑफिस आवर्स में आते हैं and he sells at a reasonable price. Though the hospital staff members can visit the upscale food court on the top floor of the hospital, they prefer his stall for breakfast and lunch, and even for occasional evening snacks. His daily sale volume varies between 300 to 400 dosas. ठीक है, in which the demand for masala dosas is around 50 to 60%. तो काफी अच्छा खासा डिमांड है. So question is, our first question from this set is, one day Dilip, while walking through the hospital food court, sees a vacant spot. He wonders if he can shift his stall to that spot. The question is, which of the following information will dissuade him, मतलब discourage him the most from shifting his stall to the food court. अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिससे ये सुन के दिलीप अपना जो स्टॉल शिफ्ट करने को सोच रहा है वो ना करे. So option A is, food court closes by 10:30 p.m. though his current stall is open till midnight. अब देखो यहाँ पे ऑफिस आवर्स के बारे में बात की गई थी. 10:30 इज वेल बियॉन्ड द ऑफिस आवर्स, लाइक नॉर्मली अभी देखा जाए तो हॉस्पिटल में भी. तो जस्ट बिकॉज अभी करेंटली मिडनाइट तक खोलता है एंड अब 10:30 हो जाएगा, अगेन दिस इज नॉट अ गुड इनफ रीजन ना टू डिसुएड हिम. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन एक्चुअली. सो ये कैसे मैंने एलिमिनेट किया? ऑफिस आवर्स में ज्यादा भीड़ होती थी. ऑफिस आवर्स मतलब जो मेन पीक आवर्स होते हैं. ठीक है, एंड मेनली उसके पास ब्रेकफास्ट लंच एंड इवनिंग स्नैक्स के लिए आते थे. तो जस्ट बिकॉज वो 1.5 घंटा यहाँ पे ज्यादा भी खुले तो वोंट मेक एनी डिफरेंस ना, तो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन. नेक्स्ट, द फूड कोर्ट हैज नो अदर स्टॉल सेलिंग डोसास. अगेन नहीं करेगा. दिस विल इवन मोर एनकरेज हिम टू पुट हिज स्टॉल ओवर देयर ना, ताकि लोगों के पास वो विजिबल रहे. ये तो सपोर्ट करेगा ना स्टॉल लगाने को फूड कोर्ट में. सो दिस इज एंटी हो गया, उल्टा हो गया मतलब. The food court sees a daily footfall of about 5,000 people. Again, ये तो उल्टा अच्छी बारे में बात हो रही है ना. फुटफॉल अच्छा खासा ही है ये, 5,000 पीपल एंड इट सेज कि अराउंड 300 से 400 डोसा हो जाता है, मतलब अच्छा खासा ही आता है. तो फूड कोर्ट में उल्टा शिफ्ट करने को एनकरेज करेगा ना ऑप्शन, विच इज अगेन रॉन्ग. Next, all the restaurants in the food court except the fast food stalls sell North Indian meal during that lunch time. Again, this is kind of, देखो ये डिस्करेज करेगा बिकॉज मोस्ट ऑफ देम सेल नॉर्थ इंडियन मील्स. उसके पास तो ये यूएसपी है ना कि साउथ इंडियन होता है. सो मे बी व्हाट इफ पीपल लाइक टू चेंज देयर टेस्ट बड्स एंड ऑल. So this is again not giving me a good enough reason why he should not shift, right?
अभी के लिए I'm not marking it. Let's look at the last option. On inquiry, he learned that the cheapest dish in the food court is priced at 200. ये वाला जो रीजन है, this should be because वहां पे लिखा हुआ है रीजनेबली प्राइस्ड है. अब सबसे चीपेस्ट डिश ही अगर उस फूड कोर्ट में 200 होगा तो उसको भी ऑब्वियसली थोड़ा तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. एंड दिस विल dissuade his customers from coming there ना, which eventually would dissuade him from moving to the food court ना. तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो, दूसरे भी अगर चीपेस्ट डिश 200 में अवेलेबल है, ऑब्वियसली देखो कहीं पे भी तुम जाते हो तो दे फॉर्म अ यूनियन दैट बिलो दिस प्राइस यू कैन नॉट पुट, लाइक प्राइस रेंज के नीचे नहीं कर सकते. ठीक है. इवन इफ अदर्स आर सेलिंग 200 पे, तुम खुद 25 या 40 रुपए में फिर से बेच नहीं सकते. यू हैव टू मार्क अप योर प्राइस. एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो बाकी जो आते हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे. तो तभी दिस ऑप्शन विल बी द बेस्ट वन टू डिस्करेज दिलीप फ्रॉम शिफ्टिंग हिज स्टॉल टू द फूड कोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. दिलीप शिफ्ट्स हिज स्टॉल टू द फूड कोर्ट हॉस्पिटल. ठीक है, अब उसने कर दिया शिफ्ट. ही प्राइजेस हिज प्लेन डोसा एट ₹40. पहले 25 था. एंड मसाला डोसा पहले 40 था, अब 60 कर दिया. However, 2 months on, he is serving only 150 dosas per day. पहले कितना था? 300 से 400 था. Now the clientele is mostly the same hospital staff members who had been his customers before he moved to the food court. So which of the following actions will best help Dilip in increasing his sales? उसको सेल बढ़ाना. So reduce the price by 20% for hospital staff. Again, preferential कुछ भी नहीं करना. किसी को reduce कर दो, किसी को बढ़ा के. This is definitely not ethical. Next, introduce a South Indian meal exclusively for the hospital staff members at a discounted price of 40 per plate. Again, अगर डिस्काउंट दोगे तो तुम्हारी सेल कैसे बढ़ेगी? यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ गया. ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन रहती है कि डिस्काउंट लगाएंगे तो लोग आएंगे, बट यहाँ पे ऑप्शन में एक्स्ट्रा कस्टमर्स बढ़ गए उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है ना. तो यहाँ पे तुम डिस्काउंट देके उल्टा खुद का नुकसान करोगे. दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट. Increase prices of all the food items by 50% and introduce a new Szechuan dosa. अब अगेन डायरेक्टली इंक्रीज कर दोगे, तो इंक्रीज कर दोगे तो ओवरऑल उसका रेवेन्यू और कम हो जाएगा ना, डोसास बिकना और कम हो जाएगा. अगेन इंक्रीज करके भी इफ यू से दैट मुझे अपना सेल बढ़ाना है, इट विल इवेंचुअली डिक्रीज, इवन मोर डिक्रीज. दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. Add more varieties of dosas at higher price point and reduce plain and masala dosas to 25 and 40. Yes. यहाँ पे जो उसका प्लेन एंड मसाला डोसा का प्राइजेस है वो 25 एंड 40 रुपए रखो कम करके, बट यू शुड एड मोर डोसास जो कि ज्यादा प्राइस पॉइंट पे हो. तो जिनको थोड़ा सा हायर एंड पे खाना है वो खा लेंगे. बिकॉज वहां पे क्या है, फूड कोर्ट में वैसे भी ऑन एन एवरेज 200 रुपए का सबसे सस्ता प्लेट होता था. ठीक है. तो यहाँ पे जो मेन जो इसके यूएसपी वाले डोसास थे, सो दैट हिज ओल्ड कस्टमर्स कम टू हिम, 25-40 रुपए वाला डोसास वो बेचे गई. बट ही विल ऐड सम मोर डोसास ना टू हिज लिस्ट मेन्यू. तो यहाँ पे दिस इज द बेस्ट ऑप्शन आई कैन सी. ठीक है, ये वाला भी इररिलेवेंट है. इंट्रोड्यूस नॉर्थ इंडियन मील, अब उसका स्पेशलिटी है ही नहीं इसमें, तो क्यों करे. तो ऑप्शन डी इज द क्लियर आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट. On the anniversary of his stall at the food court, Dilip reviews his customer base. Almost all of his customers are the hospital staff members. Though he wishes to serve the general visitors at the hospital, they avoid his stall. On inquiring, he discovers that visitors generally avoid his stall because it is majorly frequented by the hospital staff members, giving it a feel of a staff canteen. सो ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि नॉर्मल लोग अगर देखते कि ज्यादा ही भीड़ हो रही है स्टाफ का तो दे अवॉइड गोइंग देयर. दिलीप realizes his efforts have not given him any extra sales and the visitors can potentially increase his revenue by a considerable amount. जो बाहर से गेस्ट्स होते हैं, जो पेशेंट्स के वो होते हैं, मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, they can potentially increase his revenue ना. So now, which of the following options can best help Dilip in discouraging hospital staff members from visiting his stall?
while increasing his overall revenue. अब यहाँ पे this thing you have to note it down carefully is वो डिस्करेज कर रहा है कि वो फिजिकली ना है बेसिकली, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ता रहे बट हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स उतना विजिट ना करे. सो यू नीड टू थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन कि रेवेन्यू भी बढ़ता रहे येट एट द सेम टाइम हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स डायरेक्टली वहां ना आए. तो ऑप्शंस देखो. इफ यू सी, I'll just directly pick the answer over here because I have given the hint. यहाँ पे ऑप्शन ई चेक करो. Provide a discount to those hospital staff members who order on phone and deliver food in their staff. Yes. यहाँ पे देखो ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा. यहाँ पे क्या होगा, डिस्करेज भी हो रहे हैं हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट कि ऑर्डर अगर तुम फोन से करोगे और फूड डिलीवरी स्टाफ रूम में हो रही है तुम लोगों के, तो वहीं बैठे बैठे करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कमिंग टू द फूड कोर्ट. ऑब्वियसली हु डजंट वांट अ डिस्काउंट लाइक दिस. बैठे बैठे ज्यादा स्टाफ में, एंड ऑल्सो ही कुड सी उसका अगर नॉर्मल जो कस्टमर्स है, जो पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी आएंगे, सो दैट वुड इंक्रीज द ओवरऑल रेवेन्यू ना. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट सेट नाउ. A to Z is a state-funded leading engineering college in the country, renowned for its teaching and placements. Now, A to Z aspires to be a global leader in research as well. A to Z has therefore decided to push for better quality research from its newly recruited faculty members. In the past, a few faculty members were confirmed because of their exceptional teaching feedback, even though their research output was below par. Currently, the Dean, in consultation with the Academic Council, has included the quality of research as a mandatory requirement along with teaching excellence for the confirmation of the newly recruited faculty members. The Academic Council comprises of the senior faculty members from different departments. Initially, newly recruited faculty members are put on probation for 3 years. Probation मतलब basically अभी confirmation नहीं हुआ उनका. They are working year to year, मतलब एक साल के बाद फिर से इंटरव्यू होगा. They have to pass that. तो वो probation period होगा. Either they are confirmed on their probation or their probation is extended or their services are terminated based on teaching and research contributions. Once confirmed, their job is secure along with other additional perquisites. Now, Aparna joined the Social Sciences Department of A to Z 2 years back. She is amongst the many faculty members recruited after the new norms for confirmation were introduced. She completed her doctorate from reputed university in the US with significant research contributions. However, after joining A to Z, Aparna got deeply involved in social outreach as COVID-19 was spreading. Though her social outreach has given her immense satisfaction, she has nothing to show against research contributions. Further, she has impacted her teaching effectiveness. Her confirmation is due in a year. Obviously, 3 साल का probation था, तो 2 साल already हो गए थे. And social outreach काफी अच्छा है. But research and teaching में अभी भी उतना efficient नहीं है. Aparna. So let's see the questions. The first question is, the Dean during the annual appraisal of Aparna realizes that her research contribution needs considerable investment of time and efforts. He is considered that her performance could set a wrong precedent for the new faculty recruits. मतलब bad example की तरह मतलब दिख सकता है. The Dean wants to communicate to the new faculty recruits that research contribution is critical. ठीक है, so let's look at the final question now. Which of the following actions will best help the Dean in achieving the objective while being fair to Aparna? उसको पता है social outreach अच्छा है, but research में उतना contribution नहीं. So what the Dean should do? Let's see. Appreciate Aparna's social outreach, but advise her to focus on research and teaching contributions as they are essential for confirmation. Yes, definitely. यहाँ पे तुम उसका सोशल आउटरीच के लिए अप्रिशिएट भी कर रहे हो, येट एट द सेम टाइम एडवाइस कर रहे हो, उसको बता रहे हो एक्सप्लिसिटली कि तुम्हें
अपने टीचिंग एंड रिसर्च कंट्रीब्यूशन पे ध्यान देना है. सो आई कैन नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दिस थिंग. ठीक है, आई जस्ट कीप इट सेफ. लेट्स लुक एट द अदर ऑप्शंस. Extend Aparna's probation period by an additional year while reminding her about the research and teaching contribution. See, ये बहुत soft kind of action है. मतलब soft as in lenient. It is too much lenient for anyone to say because this does not show any consequence, right? यहाँ पे एडवाइस करके बोला गया एंड यहाँ पे तुम ऑब्वियसली लीनियंट इसलिए भी हो रहे हो क्योंकि एक साल और बढ़ा दे रहे हो फॉर हर कंफर्मेशन विच इज काइंड ऑफ यू आर जस्ट डेविएटिंग फ्रॉम योर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ना, जो भी तुमने पॉलिसी बनाई थी एज अ स्कूल उससे तुम भटक रहे हो. सो दिस इज नॉट करेक्ट. Increase her teaching and research requirements while extending her probation period by 2 years. Again, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड 2 साल बढ़ा दे रहे हो. दिस कैन बी टू मच हार्श ऑन अपर्णास पार्ट एज वेल. ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन काफी ज्यादा हो जाता है. सो दिस इज अगेन टू हार्श. हार्श इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सोशल आउटरीच अच्छा है. इट्स नॉट की दैट शी इज अ वेस्ट रिसोर्स. इट्स जस्ट दैट शी इज नॉट एबल टू डिवोट टाइम. तो सी भी एलिमिनेट हो गया. Exhort Aparna to suspend her social outreach activities till the end of her probation and to focus on research. अब देखो, वो तो अच्छा काम कर रही थी ना. You cannot discourage anyone on the thing which he or she is liking and has a good reach. तुम किसी को डिस्करेज नहीं कर सकते. बट हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि उसमें फोकस ज्यादा करो जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. Suggest Aparna to start looking for a new job again. Not a correct way. So you can see option A ही हमारा बेस्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 1 year on, Aparna continues with her social work. Gradually, she gets closer to the end of her probation and she has not much to show against her teaching and research contributions. However, her social work has been widely appreciated by the local media. The Chief Minister of the state wants Aparna to take a larger role in social outreach and assist the government. The dean is afraid that not confirming Aparna might prompt her to leave the institution, sending a wrong signal to the outside world. Obviously, usko appreciation and all mila hai, and just because of this particular thing, तुम अपना institution को in a bad way में दिखाना भी नहीं चाहते to the outside world. Now, however, he also wants to send a message to the newly joined faculty members that teaching and research contributions are essential. ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना है कि अपने जो न्यूली फैकल्टी मेंबर्स ज्वाइन किए हैं दे शुड रिमेंबर दैट टीचिंग एंड रिसर्च वर्क इज आल्सो इंपॉर्टेंट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द डीन इज मोस्ट सस्टेनेबल गिवन द सर्कमस्टांसेस. तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर के साथ वो भी मिला है तो निकाल भी नहीं सकते, बट उसको अच्छे से बताना भी है कि रिसर्च एंड टीचिंग इज इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम. तो वैसे टाइप का ऑप्शन दे. Now, first is confirm Aparna, but freeze her increments and promotions until her research contributions are as per the expected standard. अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तुम कंफर्म करके यू आर नॉट सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल टू द न्यू फैकल्टी मेंबर्स ना. कंफर्म कर दोगे दे विल ऑल्सो ऑब्जेक्ट ना कि टीचिंग एंड उसमें तो है नहीं कंट्रीब्यूशन. तो राइट नाउ यू कैन नॉट कंफर्म अपर्नास अपॉइंटमेंट. ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड चॉइस. Offer Aparna a 5-year contractual position after which she has to leave irrespective of her contribution. Again, an absurd one. अगर उसने अपना contribution अच्छा किया तो क्यों उसको छोड़ने के लिए बोलो. So this is also not helping the dean anyway. Next, declare that Aparna's extraordinary achievement deserves to be treated exceptionally and confirm. Again, same argument as the first one कि तुम ऐसे करके नहीं बोल सकते कि उसने सोशल वर्क अच्छे से जानी जाती है and has been awarded by chief minister also, मतलब आइडेंटिफाई किया उसका रोल. बट अगेन यू शुड नो कि तुम्हारा टीचिंग एंड रिसर्च कंट्रीब्यूशन शुड आल्सो बी देयर. ठीक है, तो इससे तुम्हें एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए. दिस इज आल्सो रॉन्ग. एथिकली इट इज रॉन्ग. Extend Aparna's probation by 3 years and tell her that she would have to leave if her research and teaching do not improve in that period. Yes,
टू सम एक्सटेंट यू कैन डू दिस ऑब्वियसली, उसके ऊपर भी हार्श है, एक्सटेंड करना 3 years, बट यहाँ पे तुम क्लियरली लिस्ट आउट कर रहे हो एज अ डीन, यू आर क्लियरली लिस्टिंग आउट अगर तुम्हारा रिसर्च एंड इन टीचिंग इम्प्रूव नहीं हुआ देन यू विल हैव टू लीव। तो उसको टाइम भी दे दिया एंड एट द सेम टाइम एक सस्टेनेबल वे भी है टू नॉट लेट हर गो। तो दिस इज यस बेटर ऑप्शन। लास्ट वाला देख लेते हैं। ऑफर टू क्रिएट अ नॉन टीचिंग पोजीशन, अगेन जिस चीज के लिए हायर किया था दूसरा कुछ नहीं कर सकते अब। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट वन देखते हैं। अ फ्यू मंथ्स लेटर अपर्णा ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद द लोकल मीडिया inadvertently expresses her fear that she might be let go by A to Z because she has not met its teaching and research requirements. So, consequently, the academic council urges the dean to review the faculty confirmation policy. Now, the dean, however, believes that any change in the policy will be a setback to the institute's aspiration of becoming a global leader in research. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द डीन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब इस सर्कमस्टांस में डीन को क्या करना चाहिए, लेट्स ट्राई टू एनालाइज। गिव एन इंटरव्यू टू द लोकल न्यूज़पेपर एंड शेयर अपर्णास लैक ऑफ रिसर्च। अब अगेन यहाँ पे तुम ऐसे नहीं कर सकते, इट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर तुम ऐसे करके लोकल न्यूज़पेपर को इम्पैक्ट दोगे एंड पुट अपर्णा ऑन द नेगेटिव साइड, इट विल हैव और नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि अपर्णा का तो इमेज अच्छा है ना बाहर, तो किसी के लिए गलत बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर बैकफायर करेगा। तो दिस इज रॉन्ग। कंफर्म अपर्णा बट आस्क हर टू इशू अ पब्लिक स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ए टू जी गिव्स रिसर्च कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। यहाँ पे बी क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यू रिक्रूट्स को ये नहीं बोल रहा कि दिस इज मोर ऑफ एन इम्पोर्टेंस, यहाँ पे एक्नॉलेज करने के लिए बोल रहे हैं बस कि हाँ हम तुम्हें रख रहे हैं, बट दुनिया को ये बता दो कि रिसर्च एंड टीचिंग वे इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर इंस्टीट्यूशन, विच इज नॉट करेक्ट ना। ये भी एथिकली दिस इज नॉट करेक्ट। सी वाला देखो, कन्वे टू अपर्णा दैट द इंस्टीट्यूट इज ईगर टू रिटेन हर, however emphasize that she should focus on research to get confirmed. Yes, देखो ये ओवरऑल सिनेरियो के लिए जो न्यू फैकल्टीज है उनके लिए भी एक लेसन रहेगा कि उसको फोकस करना है पढ़ाई एंड रिसर्च पर, एंड ऑल्सो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए कि उसका जॉब सेफ है, बिकॉज शी इज अफ्रेड ना कि शी माइट बी लेट गो फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। तो उसको बोलो तुम्हारा जो कॉन्फर्मेशन है, वी आर ईगरली conveying that we are interested to retain you, but at the same time तुम्हें यहाँ पे फोकस करना ही पड़ेगा so that we can confirm. Yes, this is the best option. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट सेट पे देखते हैं। Sundaresan was a professor of corporate responsibility at a premium management institution. As a requirement of his course, students had to synthesize sustainability challenges faced by thermal power companies and submit an assignment on them. Though it was an individual assignment, some students sought permission from Sundaresan to work on the assignment as a team. Sundaresan knew that collaboration fosters peer learning and therefore allowed them to work in teams. ठीक है, तो इंडिविजुअल असाइनमेंट दिया था बट थोड़ा रिक्वेस्ट आया था तो ही अलाउड देम टू वर्क एज अ टीम, बट कंडीशन क्या रखी, ही मैंडेटेड दैट अ टीम शुड नॉट एक्सीड 3 मेंबर्स। एक टीम में 3 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। While 15 students elected to work individually, another 15 formed teams of 3 each, and another 10 formed teams of 2 each, 2 members each. ठीक है, तो ये कंडीशन है। So let's see the questions based on this set. As assignment deadline came closer, Sundaresan was approached by Abbas Varam, who chose to work in a team of 3 members. He informed Sundaresan that Venkama, his team member, distressed by the death of her grandmother, could not work on her bit of the assignment. So Abbas requested for a deadline extension so that she could finish her part on the assignment. मतलब ये जो Venkama उसने काम नहीं करके दिया क्योंकि वो ग्रुप में थे, तो 2 लोगों ने कर दिया, हर पार्ट इज रिमेनिंग, राइट।
Now, by then, many students who were working alone had already submitted their assignments. तो question क्या है? Which of the following actions by Sundaresan is the most appropriate given the circumstances? तो यहाँ पे ओवरऑल सर्कमस्टांस क्या था, उसका भी जेन्युइन केस था, बट यू हैव टू सी कि ये भी तो था कि जो इंडिविजुअली करने थे उनके लिए भी ये फेयर होना चाहिए. So let's try to analyze the options. Give extra time to Venkama to work individually and ask the other two to stick to the original deadline. अब देखो, हमेशा जो टीम वर्क होता है, it should be handled as a team. Just because this person's grandmother has died, ऐसे नहीं बोल सकते कि अब तुम इंडिविजुअल करो एंड जो बाकी दोनों काम कर लिया तुम अपना अलग अलग ऐसे काम सबमिट करो. नो, दिस कैन नॉट बी डन एंड कीप दिस एज अ थंब रूल ऑल्सो. वंस यू हैव डिसाइडेड एंड ऑल टुगेदर सब बच्चों ने मिलकर ही बोला था ना कि हमें ग्रुप में भी करने को दे दो, तो इट इज कलेक्टिवली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन कि जो टीम में काम कर रहे हैं टीम में ही करो, ऐसा कोई अलग से डिवाइड नहीं होगा. Next, extend the deadline for the team while imposing a one grade penalty. This won't be fair on the people who have submitted their assignments na on time. तो यहाँ पे extend नहीं कर सकते. C is warn Abbas that such issues should not be flagged to the professor and should be handled within the team. अब देखो, yes, अब एक टीम फॉर्म हुई थी, प्रोफेसर ने तो काम इंडिविजुअली दिया था ना, अब तुम लोगों ने डिसाइड किया यस इट इज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट दैट दिस पर्सन ग्रैंडमदर पास्ड अवे, बट तुम्हें एज अ टीम अब हैंडल करना चाहिए ना, तुम उसका काम खुद कर लो. सो दिस शुड बी डन. लाइक देयर इज अ सेइंग ना, इफ वन गोज डाउन इन द टीम देन एवरीवन विल गो डाउन. तो एक बंदे की गलती नहीं होती, इट इज द मिस्टेक ऑफ एवरीवन इन द टीम. ठीक है, तो ये विल बी द बेस्ट ऑप्शन. तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. नाउ अगेन द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आल्सो विल बी नॉट करेक्ट. ठीक है. Next question. When Sundaresan was about to grade the assignments, he received a request from the class representative regarding the students who worked individually. The request was to give those students additional marks because they handled the entire workload. This would improve their course grade significantly. अब देखो, this is again an absurd request कि just because they worked individually हमें ज्यादा marks दो. So I hope you are getting what I am trying to say कि तुम लोगों ने ग्रुप बोला था, अब अलाउ कर दिया. So that does not mean कि जो ग्रुप में काम करेंगे just because class representative has said this, it will have an impact. If whether you do the work individually or as a team, the marks should be distributed equally. ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, जो डिसाइड हुआ था स्टार्टिंग में कि दोनों इंडिविजुअल काम एंड टीम का जो काम होगा दोनों को इक्वल ही ट्रीट किया जाए. ठीक है, यू कैन नॉट have a biased behavior those who have worked individually. ठीक है. Last question from this set is, Sundaresan was going through the submitted assignments. Team 9 with 3 members had impressive exhibits and charts. Later he discovered that team 13 with 3 members also had the same exhibits and charts. He realizes that one of the teams had copied from the other. Hence, he informed both the teams that he would award an F grade, that is a fail grade, to both the teams for copying. Now, later that evening, Ashi from Team 9 called and admitted to sharing exhibits and charts with Anvi of Team 13. Further, she mentioned that Anvi could not put enough effort since she lost significant amount of time due to the COVID-19. Now, therefore, Anvi requested for help. However, Anvi assured that Ashi that she should not reproduce the shared content. Ashi requested Sundaresan to punish her and Anvi and spare others as they were not involved. तो मतलब इन दोनों को फंसाओ, बाकी को छोड़ दो. Basically, this was her way. Now, which of the following action by Sundaresan is the most appropriate? यहाँ पे again the same reasoning I will give. If one member in the team is at fault, then everyone drowns. ठीक है, यहाँ पे कोई favoritism नहीं है. एक ने भी गलती की, the whole team will fall.
तो टीम 9 एंड टीम 13 दोनों में ही एक एक मेंबर ने गलती की है. सो ऑप्शन ई हियर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, एथिकली एंड मॉरली एक ने गलती की है, सबकी गलती मानी जाएगी. एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फेवरेटिज्म और बायसनेस इन एनीवन्स बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट सेट नाउ. Ashraf has been working at a cybersecurity company called Newtech Private Limited for 7 years. Having missed a promotion in the previous appraisal cycle, Ashraf is anxious about it in the upcoming cycle. Ashraf is aware that the HR head is meeting the top management to discuss promotion sometime soon. At Newtech, the HR head recommends names for promotion to the top management based on inputs from the functional teams. On a Friday afternoon, Ashraf receives an email from Sridevi, the HR head. It reads, "Hi, I need an urgent favor from you. Please respond if you are free." It was the first time that Sridevi ever contacted him. Surprised, Ashraf immediately replies back saying, "Sure, how can I help you, Sridevi? Regards, Ashraf." So, in a couple of minutes, he receives a reply. "Ashraf, I'm in the middle of an important meeting, but have to urgently send vouchers worth rupees 50,000 to one of our important clients. If you could please purchase and send the gift vouchers to the email address given below at the earliest." So Ashraf, without any delay, sends the gift vouchers worth rupees 50,000 to the given email address. So let's look at the questions now. There will be 3 questions. So Ashraf feels happy after his brief email interaction with Sridevi. Now, which of the following statements, if true, will best make Ashraf strongly hopeful about his imminent promotion? मतलब जो होना ही होना है. तो श्रीदेवी इज नोन फॉर हर एलीट सोशल सर्कल एंड एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल. अब देखो उसका प्रमोशन से कोई मतलब नहीं है ना. एलीट सोशल लाइफ है एंड अच्छा खासा लाइफस्टाइल है. दैट डज नॉट मीन कि इसका प्रमोशन हो जाएगा. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट आंसरिंग द गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट इज Ashraf has heard from his industry friends that HR heads accepts favors for recommending employees promotions. अब देखो फेवर एक्सेप्ट करना फॉर रिकमेंडिंग एम्प्लॉइज प्रमोशन डज नॉट गारंटी कि उसको श्रीदेवी से प्रमोशन मिल जाएगा. ठीक है, सो सुनी सुनाई बातें यू कैन नॉट बिलीव डेफिनेटली. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वन टू चूज. नेक्स्ट इज इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट श्रीदेवी डायरेक्टली अप्रोच आश्रफ. अब ऑब्वियसली अगर फर्स्ट टाइम है इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्प मांग रही है तो उसका प्रमोशन दे देगी. अगेन दिस इज अ रॉन्ग assumption. Next, Ashraf's immediate junior Shamsher, who worked closely with Sridevi, was promoted last year. Just because Shamsher was promoted, we don't know whether it was due to his helping hand or whether it was with respect to his skill sets or work that he got promotion, right? तो यहाँ पे again हमें कुछ पता नहीं चल रहा. This is also not correct. Last is Sridevi chose Ashraf over others for help while in the midst of a meeting with the top management. Obviously, अगर इतने इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच में अगर अशरफ की अगर सिलेक्शन किया फॉर हेल्पिंग हिम आउट, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना. तो इस वजह से अशरफ को लग सकता है कि दैट आई एम गोइंग टू बी प्रमोटेड. सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर हियर. Let's look at the next question, second question of this set. Ashraf does not hear anything from Sridevi in the few days. Anxious, he meets up Sridevi and inquires if the gift vouchers were appreciated by the client. This surprises Sridevi, who closely scrutinizes Ashraf's mails and discovers that they were originated from Sridevi at newtech.com instead of Sridevi at newtech.com. So there's an error. Her official email ID. Taken aback, Ashraf requests Sridevi's help in getting compensated by the company for his 50,000 rupees loss. Sridevi asks Ashraf to justify his compensation demand. Ashraf gives the following. So obviously, क्वेश्चन में ये रीजनिंग पढ़ने से पहले लेट्स सेलेक्ट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड रीजंस इन अ कॉम्बिनेशन विल बेस्ट हेल्प श्रीदेवी टेक अप द इशू विद द टॉप मैनेजमेंट. तो मतलब ऐसा कौन से आर्ग्यूमेंट्स अशरफ अपनी तरफ से प्रेजेंट कर सकता है टू श्रीदेवी सो दैट ही कुड रिकवर हिज लॉसेस. तो लेट्स सी द फर्स्ट वन. इट इज आई अर्ड मतलब गलती एक्सेप्ट कर रहा है. हाउएवर माय फाइनेंशियल एटीट्यूड इज ऑन रिकॉर्ड.
तो उसका जो स्टेटस फाइनेंशियल वो है वो ऑन रिकॉर्ड्स है, हाउएवर ही इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, सो डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग केस ना, कि मिस्टेक भी एक्सेप्ट कर लिया, हाउएवर ही इज सेइंग कि मेरा जो फाइनेंशियल रेक्टिट्यूड है वो रिकॉर्ड पे है। ठीक है। सेकेंड इज आई एक्टेड इन द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट, अगेन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। पहले माफी मांगी, फिर उसने स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉरवर्ड पुट किया कि मैंने जो काम किया है वो ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, हाउएवर वो गलती से कर दिया, बट उसका इंटेंशन तो गलत नहीं था ना, सो 1 and 2 डेफिनेटली सही लग रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है फॉर आश्रम। थर्ड इज द स्पैम मेल रीच्ड माय इनबॉक्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कंपनीज ईमेल फिल्टर, यस अगेन नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज, अब ये बोल रहा है ठीक है मैंने अपनी गलती मान ली, मैंने कंपनी के इंटरेस्ट में रह के काम किया, बट क्योंकि ये स्पैम फिशिंग मेल मेरे तक पहुंचा, ये कंपनी की भी तो थोड़ी गलती है ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पॉइंट, ऑल टुगेदर ही इज नॉट टोटली ब्लेमिंग द कंपनी, बट मेरे इनबॉक्स तक पहुंचा ड्यू टू अ फेलियर ऑफ द कंपनीज ईमेल फिल्टर ना, तो डेफिनेटली 1 2 3 इज द बेस्ट आंसर दैट Ashraf can give, and others भी choices देख लो, a new tech employee who was robbed 20,000 of company's cash was not punished। अब दूसरों का रीजन दे के तुम खुद के लिए तुम केस स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, ऑब्वियसली फोर्थ तो रॉन्ग हो गई। लास्ट वन इज इन द पास्ट सम ऑफ द मेनी एक्वेंटेंसेस हैड बीन सिमिलरली ड्यूड, अब उनकी गलती थी, तो दिस डज नॉट अगेन गारंटी दैट आशरफ शुड बी कॉम्पनसेटेड, यू कैन क्लियरली सी नाउ 1 2 3 is the best choice। So the last question in the set is, Sridevi begins to doubt Ashraf's competencies given the way he handled the phishing emails. Thus, he convenes a meeting with the senior leadership to discuss Ashraf's role in the company. In the meeting, she shares the following observations. अब question में क्या पूछा है? Which of the above observations in a combination, if true, shall best go against Ashraf's chances of getting promoted? अब श्रीदेवी को ऐसे पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करने हैं जो कि आशरफ को प्रमोशन देने से मना करे, तो लेट्स लुक एट दोस ऑप्शंस। सो आशरफ इज पुअर एट वर्बल कम्युनिकेशन व्हिच इज क्रिटिकल एट सब्सिक्वेंट लेवल, यस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो तुम उसको प्रमोशन क्यों दोगे, ऑब्जर्वेशन से दे रही है ना अपने, तो यू कैन पुट फॉरवर्ड। Second is Ashraf should have been perceptive even though the company's email filter failed him. Again, a strong point. उसको ध्यान तो रखना चाहिए था ना, इवन दो तक मेल पहुंचा, बट ही शुड हैव बीन केयरफुल, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट टू बी पुट फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज Ashraf joined the email filter team 1 month prior to his receiving the phishing emails. Yes, again, he email filter team उसने ज्वाइन की थी just before 1 month before receiving the phishing emails, तो उसको ऑल टुगेदर ज्वाइन, अगर उसको ईमेल मिला भी है बट उसको ट्रेनिंग तो दी गई होगी ना, 1 महीने पहले वो ईमेल फिल्टर टीम को ज्वाइन किया था, जब वो खुद सिक्योरिटी वाले टीम में है, तो उससे ऐसे गलती खुद से कैसे हो सकती है, हाउ विल ही सेट एन एग्जांपल, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना, सो अगेन यू कैन सी 1 2 3 सारे ऑप्शन मिक्सड अप है, बट 1 2 3 ऑल आर स्ट्रॉन्ग पॉइंट विच इज गोइंग अगेंस्ट आश्रफ, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरे देख लेते हैं। Ashraf rushed to act on Sridevi's request despite his busy schedule. अगेन ये तो आशरफ के अगेंस्ट नहीं हुआ ना, इसमें जस्ट श्रीदेवी के ऊपर वो ब्लेम आ रहा है, श्रीदेवी खुद पे ब्लेम क्यों लेगी, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। आशरफ appears to be highly anxious to get promoted, again not a good point so as to stop his promotion, सभी anxious होते हैं, ठीक है, so option C here is the correct answer। Let's see the or read the next case। The occasion was a hyper-publicized switch-on ceremony of solar power facilities on an island with many villages in the Bay of Bengal. PK was the brand ambassador of an MNC that was banking heavily on this CSR, means corporate social responsibility initiative, to strengthen its presence in India. For the millions of fans enamored by the aging superstars Robin Hood like on-screen exploits, the pre-event speech of PK was their first glimpse into his off-screen persona. After an emotional speech that extolled the virtues of electricity as a driver of well-being and need for inclusive growth, PK with a flourish of his hand hit the button to remotely switch on the
solar power facilities. Tens of media cameras stationed in on the island villages started beaming live feed across the world. Quickly, the event turned from one of the joy to something of shock and horror as all the thatched households on the island caught fire. ये fire है. A few villagers were seriously injured in the fire. Watching the coverage, PK slapped the MNC representative standing next to him on live camera and collapsed on a couch with his head in his hands. तो जो MNC ने उसको बुलाया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर, उसी के किसी इंसान को, रिप्रेजेंटेटिव को पीके ने थप्पड़ मार दिया. So let's look at the questions now. Soon after, the MNC led a case against PK for a criminal assault and tarnishing its brand image. Which of the following is the most appropriate reason for the MNC to file a case? तो मतलब ऐसा strong reason दो कि हमने क्यों PK के against, जिसने थप्पड़ मारा उसके against क्यों फाइल करना चाहिए केस. First is it is a message to the MNC stakeholders, मतलब जो भी involved है related to MNC, that it will not tolerate such inappropriate behavior. It is definitely correct ना. जितने भी लोग इन्वॉल्व है एमएनसीज को लेके, और पीके भी तो उसका ब्रांड एम्बेसडर की तरह उसको लाया गया था ना. तो इट इज अ मैसेज टू देम, नॉट ओनली टू देम बट एवरीवन, that such kind of an behavior is not tolerable. So this is correct na. So let's look at the other options also. The MNC is forced to respond given the public slapping of its representative. अब देखो कोई शर्म के मारे if you are filing any lawsuit, that should not happen. ये एक्चुअली एक हेल्पलेस एटीट्यूड का साइन है. हेल्पलेस एटीट्यूड थोड़ा, इट इज दैट ही डिड रॉन्ग, तो तुमने गलत किया. दिस डज नॉट मीन कि उनको कुछ हड़बड़ी में या फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करना चाहिए. सो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट एक्शन और द रीजन दैट एमएनसी शुड गिव. नेक्स्ट इज द एमएनसी इंटेंड्स टू अरेस्ट इट्स ड्रॉपिंग सेल्स पोस्ट द इवेंट. अब देखो केस फाइल करेगा, ऑब्वियसली सेल्स पे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ना. तुम किसी को अरेस्ट करवा के अपनी सेल्स को ठीक करने के लिए बोल रहे हो, दैट डज इज नॉट करेक्ट, राइट. मतलब इन शॉर्ट फाइलिंग अ लॉसूट अगेंस्ट पीके वोंट हेल्प देयर केस ना विद द ड्रॉपिंग सेल्स. दिस इज द रीजन, दिस इज अ वियर्ड रीजन. नेक्स्ट, द हाईली ब्रांड कॉन्शियस एमएनसी इज यूजिंग पीके टू डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन. ये तो खुद के अगेंस्ट ही जा रहा है ना. जो ब्रांड एम्बेसडर मतलब एमएनसी है ब्रांड, वो खुद के फायदे के लिए पीके का लॉ सूट फाइल करके वो कर रहा है ना, तो वो अपने खिलाफ क्यों बोलेगा ऐसी चीजें. दिस इज ऑल्सो वियर्ड रीजन, मतलब एब्सर्ड, एब्सोल्युटली. नेक्स्ट, द एमएनसीज मिशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स एम्प्लॉय फर्स्ट कस्टमर सेकंड. अब देखो ये अगर पब्लिकली अगर ये अनाउंस करेंगे कि एम्प्लॉय फर्स्ट है कस्टमर सेकंड है, तो आउटर वर्ल्ड के लिए और हाईलाइट वाला वो हो जाएगा ना. दिस एमएनसी विल कम इनटू लाइमलाइट दैट वो कस्टमर सेंट्रिक फोकस नहीं है इस एमएनसी का. अगेंस्ट हो जाएंगे ना कंपनी के if you give this reason to file the lawsuit against PK. This is also not correct. So you can clearly see option A is the only correct answer. Next one, post the slapping incident, there was a strong social media backlash against PK. His PR team suggested the following social media releases that he could use not only to defend himself but also to garner positive reactions. अब उसने गलती तो कर दी, but now PR टीम उसके इमेज को सुधारने के लिए क्या कर सकती है. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट रीजन. द एमएनसी डिजर्व more than just a slap for its irresponsible actions. अब तुम ये बोल के पीके का इमेज थोड़ी ना सही कर सकते हो कि एक से ज्यादा थप्पड़ मारना चाहिए. दिस इज एन इम्पल्सिव बिहेवियर. डेफिनेटली दिस वोंट हेल्प पीके's image to like be on a better side. Next is he reacted as the sight of the villages ablaze was unbearable. Yes, definitely. यही तो बेस्ट केस होगा ना कि उसको उससे देखा नहीं गया कि विलेजर्स अपने आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते हुए. दैट्स व्हाई ही रिएक्टेड इन दिस वे. तभी तो पीके अपनी तरफ से ये जस्टिफिकेशन देके बच पाएगा ना इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. यू कैन क्लियरली सी दूसरे ऑप्शंस कुछ भी मतलब they are not matching with PK's purpose to make him
come out on the positive side. So option B is the only correct answer here. Next question, last question of this set. A few months passed and the slapping incident still garnered a good number of views on the social media. PK's publicist was aware that PK harbored a desire to join politics. She wanted PK to make the most of the publicity around the incident before it faded away from the public memory in the next few months. Okay, so which of the following options will best help PK take advantage of the situation? Obviously, मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, पीके पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो अब क्या बोल के वो पॉलिटिक्स में आए सो दैट ही वुड also have a strong point to come into the politics and obviously अपना positive side भी दिखाना है उसको. So let's explore the options. He should visit the island and publicly promise to rebuild the island villages and publicize it on social media. Yes, definitely ना, उसको आइलैंड विजिट करना चाहिए जहाँ पे विलेज डिस्ट्रॉय हुआ था एंड पब्लिकली प्रॉमिस टू रीबिल्ड ऑल दी विलेजेस ना. अब गलती हो गई है एमएनसी की तरफ से एंड उसकी तरफ से भी हुई बाय स्लैपिंग, तो अब उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो वो प्रॉमिस कर रहा है टू रीबिल्ड द आइलैंड विलेजेस एंड उसको पब्लिकली हर जगह फैला दे. यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू टेक द एडवांटेज ना, अपनी तरफ करने के लिए. लेट्स एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस. ही शुड लॉन्च द स्लैप द ग्रीडी कैंपेन अगेन. दिस विल टोटली गो अगेंस्ट हिम. He should announce that he is entering politics with the slogan one tight slap again. उसके अगेंस्ट ये सिचुएशन चला जाए. He should meet the MNC representative he slapped and apologize to him in a public meeting. अब देखो, to some extent it will help, but उसको politics क्यों join करना चाहिए or the reason why he is joining politics, this isn't enough. ठीक है. Next, in his upcoming movie, in the opening scene, he should slap and shame a treacherous corporate official who swindles poor villagers again. It will go against him, backfire करेगा. ठीक है. So option A is the only correct answer here. चलो, अब हम बढ़ते हैं next set की तरफ. So let's see this now. Churna is a peaceful village surrounded by thickly forested high hills that isolate from the rest of the world. Agriculture is the main occupation of the Churna villagers. Moreover, the forests provide seasonal fruits, tubers, medicinal herbs, and other forest produce in abundance. For all material needs not produced locally, the Churna villagers depend on Tendua, a faraway town. Once a month, the Churna women would arduously trek with the surplus produce to Tendua. Obviously, ज़्यादा होगा तो कुछ उनके पास हर चीज तो होगी नहीं चूरना विलेज के पास, तो कुछ चीजें लेने के लिए एक्सचेंज तो करेंगे ना सामान. नाउ इन द टेंडुआ मार्केट दे कन्वे द वर्च्यूज ऑफ देयर प्रोड्यूस थ्रू अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड डांस रूटीन. ठीक है, उसको बेचने के लिए एक सॉन्ग परफॉर्म करते हैं एंड डांस. रेप्यूटेड फॉर देयर हार्ड बार्गेनिंग स्किल्स, दे ऑलवेज मैनेज टू एक्सट्रैक्ट अ प्रीमियम बार्टर फॉर द ट्रेडर्स फ्रॉम द ट्रेडर्स. तो मतलब जो चूरना विमेन्स है उनका अच्छा बार्गेनिंग स्किल्स है एंड जो भी उधर ट्रेडर्स होते हैं टेंडुआ मार्केट में उनसे अच्छा खासा प्रीमियम ले लेते हैं, मोर देन फुलफिलिंग ऑल देयर अदर मटेरियल नीड्स. तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Damdu, an ambitious trader of Tendua, wants to have exclusive access to all the surplus produce from Churna. ठीक है, अब वो मार्केट में तेंदुआ के ना है, अब मुझे सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए. So which of the following offers to the Churna village will help दामदू अचीव हर ऑब्जेक्टिव? कि मुझे ही सारा सामान तुम लोग बेचो, नॉट टू द तेंदुआ मार्केट. सो लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शंस. दामदू शुड ऑफर टू सेट अप अ शॉप इन चूरना विच विल बार्टर सिस्टम. आई होप यू नो, जैसे पुराने जमाने में देवर नो करेंसी, पेपर करेंसीज, तो क्या होता था, इफ अ पर्सन इज गिविंग शूज तो बार्टर सिस्टम में एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज होता था. अगर शूज ले रहा है तो कोई मे बी सस्ता सा बैंगल दे देगा, नॉट ऑफ गोल्ड ऑब्वियसली, बैंगल, या फिर कोई कपड़े दे देंगे विच दे थिंक कि हाँ वो एक शूज के बराबर का कॉस्ट होगा. दैट वाज बार्टर सिस्टम. आई होप यू रिमेंबर. सो विच विल बार्टर ऑल द मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज. yes, this is definitely
one of the best reasons for Damdu to give to the Churna village, na? Because if she set up this shop in Churna, तो इससे क्या होगा? In this way, the women of Churna will not be able to sell their products in the Tendua market, na? And they will give them to Damdua to avoid the transportation cost, ना? ये तो दामदू को अच्छे से ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हेल्प करेगा ना, कि उन चूना में ही बोल रहा है बाटर सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे जो मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है वो एक्सचेंज हो जाएगा. तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीजंस, एंड आई डोंट थिंक एनी ऑफ द अदर रीजंस विल फिट इन द बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दामदूस ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. द हेड वुमेन ऑफ चूना ग्रांट्स एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द सरप्लस प्रोड्यूस टू दामदू. ठीक है, तो चूना की जो हेड वुमेन है वो एक्सक्लूसिव राइट्स दे देती है, एक्सेस दे देती है टू दामदू नाउ. However, Damdu's euphoria dies down when she finds fewer takers of churnas produce in Tendua. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ? ऑल्दो दामदू को सारा एक्सेस मिल गया, बट जो सामान का जो डिमांड है वो कम हो गया तेंदुआ मार्केट में. दिस ट्रेंड कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. So which of the following could be the most possible reason for Damdu finding fewer takers for churnas produced at Tendua? ठीक है, कौन सा ऐसा रीजन है जो दामदू को कम टेकर्स मिल रहे हैं फॉर चूरनास प्रोड्यूस एट तेंदुआ? तेंदुआ के लोग क्यों ले रहे हैं कम अब सामान? दामदू कैन नॉट सिंग एंड डांस साइमल्टेनियसली. सी, दिस इज वन ऑफ द साइड रीजंस. ऑल टुगेदर सिर्फ नाचने और डांस करने के लिए ही वो फेमस नहीं था. ठीक है, दे ऑफर्ड अदर थिंग्स आल्सो. दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स, सो दिस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव. नेक्स्ट इज hard bargaining experience offered by Chuna's women is missed by the traders of Tendua. So see, the problem with this is that here, देखो इसमें हार्ड बार्गेनिंग एक्सपीरियंस जो ऑफर करती थी चूनास वुमेन उसको मिस कर रही है, इस वजह से तेंदुआ के लोग खरीद नहीं रहे. दिस इज एन एब्सर्ड रीजन ना. इट वाज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ चूनास वुमेन. उसकी वजह से वो खरीदना क्यों बंद कर देंगे ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना. तो दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट. Next, the traders in the Tendua market miss the aesthetics of the beautiful songs and dance by Churna women. See, just because वो aesthetics miss कर रही है, that does not mean कि वो उन्होंने खरीदना बंद कर दिया. उनके नाचने के लिए थोड़ी ना, डांस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड डांस के लिए थोड़ी ना वो मना कर रहे. कुछ हुआ होगा अलग चीज, या फिर इससे भी बेटर कॉम्प्रिहेंसिव चीज, तभी वो मना कर रहे. तो दिस इज अगेन नॉट and a comprehensive answer. Next, churnas produces is one of the many items in Damdu's inventory. Again, an absurd reason, does not give us the reason कि क्यों दामदू के कम takers हो गए. Last is the Churna women's offered the authenticity that Damdu could not match. Yes, definitely. पूरा जो authentic चीजें जो बेचती थी, like be it उसमें लिखा था ना, इन द पैसेज इट वाज गिवन दैट चूरना women conveyed the virtue of their products through dance and song. तो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी क्यों वो इंपॉर्टेंट है? दैट वाज द मोस्ट ऑथेंटिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट फॉर चूरना women. ठीक है, तो ऑफर जो ऑथेंटिसिटी ऑफर करते थे, दैट इज मिसिंग ओवर हियर. तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर इन दिस. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. A few months after granting exclusive rights to Damdu, the village council of Churna meets to discuss the progress. After much debate and heated discussions, the village council decides to terminate the contract with Damdu. The village council feels that if the contract continues, then question kya hai? Let's see. Which of the following concerns, when arranged in descending order of significance, will best support the डिसीजन टू टर्मिनेट? तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ढूंढना है कि दामदू के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों बंद करना चाहिए. ऑब्वियसली अच्छे से बेच नहीं पा रहा, या जो भी ऑथेंटिसिटी नहीं थी. हैव टू लुक एट दोज ऑप्शंस इन दैट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द रीजंस. ओवर टाइम चूरनास प्रोड्यूस विल लूज इट्स एसोसिएशन विद चूरना. ऑब्वियसली खुद के ही, मतलब जो एसोसिएशन था, ये जो विलेज काउंसिल जो था, ये चूरना विलेज की था ना. तो ऑब्वियसली अगर तुम दामदू को ले लोगे एज अ मिडल मैन, या फिर ओनली
गिविंग हिम द सोल राइट, तो उसका एसोसिएशन कहीं कहीं चला जाएगा ना, तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बिग रीजंस। बट अगर सारे हम स्टेटमेंट्स को भी पढ़ेंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द ऑर्डर। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दामदू would be the people of Churna feel that their produce might lose association with Churna ना, जो चूरना से एसोसिएशन होगा वो छूट जाएगा। तो डेफिनेटली दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर वो दामदू को डायरेक्टली बेचेंगे तो चूरना का खुद का प्रोड्यूस, उनका जो खुद का वे है बेचने का, वो चला जाएगा। तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। Now, the next important reason would be that they will not be able to understand and see how the markets develop ना। अब क्योंकि तुमने डायरेक्टली खुद के ही विलेज में उसको बेचना स्टार्ट कर दिया दामदू को, तो वहां पे मार्केट में, असली मार्केट में क्या चल रहा है तुम्हें उसके बारे में नहीं पता चलेगा ना। सो आफ्टर वन, यस टू विल बी द नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ठीक है। तो अब वी हैव फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टू। नाउ द रिमेनिंग थ्री स्टेटमेंट्स will state the things Churna will lose, of which Churna will be losing their most important things. The first will be their hard bargaining skills. Churna का speciality क्या था? Hard bargaining skills था। Next will definitely be this कि उनका डांस एंड सॉन्ग भी आइडेंटिटी चली जाएगी। थर्ड विल बी दे विल लूज डेफिनेटली लास्ट में सोशल इंटरेक्शन। उनको सोशल सी बेचने के लिए सोशल इंटरेक्शन सबसे लास्ट में आता है। ठीक है। तो social interaction will come at the last, so which makes option D as the correct answer. 1 2 5 3 4 will be the correct sequence. इसका क्या मतलब है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों हमें दामदू को कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। सो आई होप दिस सेट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट सेट नाउ। Rohini is one of the most popular faculty members in the finance department, known for her in-class engagement with students. Now, every year she offers an elective financial risk and derivatives management in the fourth term, which gets subscribed by about 500 students. This year, owing to COVID-19, she is forced to teach the course online, that too in the fifth term. The fifth term is notorious for its non-negotiable teaching slots. To enable her teaching, Rohini uses her favorite laptop, MapleBook Lite, sold by Maple. Rohini converts her family bedroom into a working room because of the strong Wi-Fi signals. The room is mostly used by Rohini for taking her classes. However, Rinku, her husband, also uses it for running his meetings. Rohini has two children aged 5 and 8 who use the living room as their playground. During meetings and classes, the working room is shut to save it from unwanted disturbance and noises from the living room. It is 3:10 p.m. and Rohini's penultimate session of the course is going to end in 20 minutes. Now, as usual, Rinku enters the room with a cup of Darjeeling tea. Just before entering, he asks his kids to stop playing for some time. He quietly places the teacup on Rohini's study table and exits the room, leaving the door ajar. As soon as he leaves, a tennis ball comes thundering inside, crashing into her MapleBook monitor. The monitor breaks and Rohini's class ends abruptly, much before the scheduled time. So let's look at the three questions now. The first one is, which of the following which or what should be best held responsible for the accident? तो गलती किसकी थी ओवरऑल? सी, डोर क्लोज रहता था, सो यू नीड टू पिक जो इंसिडेंट हुआ है, टकराया है फुटबॉल, जो भी लगा है जाके बॉल, वो किसकी गलती की वजह से? इट वॉज बिकॉज द डोर वॉज लेफ्ट अजार ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली विदाउट इवन हैव टू थिंक एनीथिंग, यहाँ पे रिंकू सिंह वॉज एट फॉल्ट बिकॉज ही लेफ्ट द डोर अजार, उसी की वजह से ये टूटा ना। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा, रोहिणी नॉट लॉकिंग, बिकॉज इफ द डोर वुड हैव बीन लॉक्ड, मतलब लॉक नहीं, मतलब उसको बंद रहने देता, दिस इंसिडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड. सो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल लीविंग द डोर अजार. ठीक है, सिंपल है.
नेक्स्ट रोहिणी हैज हर कंक्लूडिंग सेशन scheduled the very next day, मतलब लास्ट जो सेशन है नेक्स्ट डे एक बचा है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर रोहिणी रिगार्डिंग द फाइनल सेशन. नाउ शी शुड डिफर द सेशन. अब पैराग्राफ में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि जो फिफ्थ टर्म में है स्लॉट्स इजीली टीचर्स को मिलते नहीं है, काफी हेक्टिक हो जाता है. तो यहाँ पे डिफर करना सेशन, उसके बाद कब उसको वो क्लास लेने का मौका मिलेगा, दैट वुड बिकम डिफिकल्ट. तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट, शी शुड इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट द कोर्स इज डीम्ड कंक्लूडेड. नो, as a teacher if you have scheduled any session you should not say कि हाँ बस यही last था अब नहीं. Since I am not able to take it, you just say कि this was only the last session. You cannot do that. Morally it is wrong. Next, she should cancel the session. Again cancel नहीं कर सकते, अगर रह गया है तो just complete that. ठीक है. Next, she should request Swarna her colleague. अब देखो requesting someone else to take the class ऑल टुगेदर, देखो किसी दूसरे से पढ़ना सबको पसंद नहीं आता. बिकॉज अ टीचर इज टीचिंग यू इन अ सर्टेन वे एंड ऑल ऑफ अ सडन फॉर द लास्ट क्लास किसी कोई और आ गया. सो जो टीचिंग मेथड होता है कभी कभी सबको समझ नहीं आता. ठीक है. सो यू शुड नॉट डू दिस ऑल्सो. So the only option that is left with us is this. She should take the last session on her mobile phone and request students to tolerate for the inferior experience. ठीक है. So this is the best course of action for Rohini. The last question of the set is, with the sixth term round the corner, Rohini goes to the Maple Service Center only to find that the replacement for her crashed monitor may take several weeks. However, Dhanraj, the service center head, offers to replace the damaged monitor with a monitor from a used laptop. He assures Rohini that the monitor is as good as the new one. Now, which of the following options, if true, will give Rohini the best reason to accept? मतलब जो भी धनराज ने ऑफर किया है, कौन सा ऐसा बेस्ट रीजन है जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट कर ले. सो धनराज इज अ फ्रेंड ऑफ रोहिणी कलीग स्वर्णा. अब देखो रेफरेंस इज अ गुड सोर्स, बट अगेन even though Dhanraj is a friend of Rohini's colleague Swarna, still he can scam him, na? Scam her, na? रोहिणी को स्कैम कर सकता है इवन इफ ही इज अ फ्रेंड. ऑल्दो सोर्स है, बट ऐसे करके यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन. Now, if you look at the second one, Rohini is a long time customer of the Maple store which runs the service center. अब देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था. सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कहीं पे भी अगर तुम जाओगे, इफ यू गो टू अ ओल्ड शॉप ऑल्सो, अगर काफी टाइम से दे ऑल्सो नो यू, यू टेंड टू बिलीव दैट पर्सन. ठीक है. यहाँ पे ऑल्दो A and B में definitely this one is a better approach, or it will better persuade Rohini to accept the offer because she has been a long time customer and कोई भी शॉप लॉन्ग टाइम कस्टमर को बेकार चीज या फिर डिफेक्टिव चीज दे के अपना कस्टमर बेस खराब नहीं करना चाहिए. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन वोंट फिट इन. ठीक है. सारे इररेलेवेंट है. चलो अब नेक्स्ट सेट को देखते हैं हम. नेक्स्ट सेट इज Saradeep was a proprietor of Saradeep and Sons Private Limited, an auto parts manufacturing company. He had three children, Tapsi, Kesar, and Sandeep. His wife passed away when Sandeep, the youngest kid, Sandeep was the youngest kid of the family, and he was 8 years old when his wife passed away. Now, Tapsi being the eldest sibling. ठीक है. तो मतलब जो ऑर्डर गिवन है उसी ऑर्डर में शी इज द एल्डेस्ट, देन केसर, देन संदीप. Tapsi, being the eldest sibling, was more of a mother to Kesar and Sandeep. Now, Tapsi and Kesar joined Saradeep's business right after college because Saradeep trusted them immensely. He once told Kesar, "I want key positions to be held by the people I trust." Now, Saradeep wanted Sandeep also to join his business like Kesar and Tapsi. Saradeep felt that Sandeep had a strong business sense, probably the best among his three children. Hence, Saradeep wanted Sandeep to take his higher education in business studies. However, Sandeep had other aspirations. He wanted to become a lawyer.
Of late, he was offered admission to the prestigious National Law School, Bengaluru. As soon as he received the admission letter, he rushed to share his news with his family members. तो अब क्वेश्चंस देखते हैं, 3 क्वेश्चंस होंगे इसमें. फर्स्ट इज संदीप शेयर्ड द न्यूज ऑफ द एडमिशन ऑफर फर्स्ट विद केसर, मतलब उससे एक बड़ा भाई, who exhibited mixed feelings. He was happy for Sandeep's admission to the National Law School. Nevertheless, he was concerned about their father's reaction. Moreover, Saradeep had an anxiety attack a few months back and was working from their family's mansion in Shimla. Kesar advised Sandeep to delay sharing his selection news with their father. Obviously, थोड़ा सा anxiety attack आया था and वो घर से काम कर रहे थे. अभी के लिए केसर को बोला कि रुक जाओ. नाउ नहीं, केसर ने संदीप को बोला कि रुक जा अभी. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल बेस्ट इनेबल संदीप शेयर द न्यूज विद सारादीप. कि ऐसा कौन सा रीजन है कि संदीप को कोई भी डिले किए बिना अपने फादर के साथ वो न्यूज शेयर कर देना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन, सिंस चाइल्डहुड संदीप बिफोर गोइंग टू बेड यूजुअली शेयर ऑल हैपनिंग. सी, घर में डे टू डे एक्टिविटीज डेली तुम बताते आ रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि अगेन दिस विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि तुम्हें अपने पापा से तुरंत शेयर कर देना चाहिए. दिस इज नॉट गिविंग अ गुड इनफ रीजन. ठीक है. एंड सारादीप को एंजाइटी अटैक हुआ था, तो इट विल बी बेटर कि वो बाद में ही बताए. ठीक है. तो ये गुड इनफ रीजन नहीं है. नेक्स्ट इज केसर हैड ऑलवेज बीन पैरानॉइड अबाउट हिज फैमिली एवर सिंस द अनटाइमली डिमाइस ऑफ हिज मदर. अब देखो, केसर ने ही सजेस्ट किया था, बट अब पैरानॉइड है, दैट अगेन डज नॉट हेल्प मी एक्सप्लेन व्हाई संदीप शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म सारादीप. वो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो सकता था कि केसर इज बीइंग प्रोटेक्टिव अबाउट हिज फैमिली, बिकॉज एक बार ऐसे इंसिडेंट हो चुका है मदर के साथ, तो उसकी वजह से फैमिली को कंजर्वेटिवली देख के चलता है. तो अगेन ये मुझे एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि संदीप को क्यों सारादीप को तुरंत बता देना चाहिए. नेक्स्ट, सारादीप डिड नॉट टॉक टू संदीप फॉर वीक्स because he did not get the news of Sandeep's bike accident immediately from him. Yes, this is giving me one of the good reason why संदीप को तुरंत शेयर कर देना चाहिए. बिकॉज एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब संदीप की बाइक एक्सीडेंट हुई थी, तब संदीप ने नहीं बताया होगा अपने फादर को. तो क्या हुआ था कि हिज फादर डिड नॉट टॉक टू संदीप फॉर वीक्स. तो यस, दिस इंसिडेंट विल हेल्प संदीप डिसाइड कि पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट बड़ा मेरे साथ हो चुका है, उस टाइम फादर ने बात नहीं की थी. कीपिंग दिस इन माइंड, यस, दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है. सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Saradeep requested Kesar to decide on the head of a new manufacturing plant. The plant and its culture had to be molded in the same way as their other plants. Kesar wanted to identify a candidate acceptable to Saradeep. ठीक है. तो केसर को डिसाइड करना था कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए किसको लिया जाए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स इज द बेस्ट चॉइस फॉर द पोजीशन. नाउ तापसी, हु हेडेड अनदर प्लांट which was 2 hours away from the new plant, could be requested to take the additional charge. अब देखो यहाँ पे तापसी इज नॉट अ सुटेबल चॉइस बिकॉज उसके पास ऑलरेडी एक प्लांट है ना, इसमें लिखा भी हुआ है एंड पैराग्राफ में भी है, एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग विल टेक टू मच ऑफ अ टाइम. So this is definitely not a good option. Next, Dhanush, the most technically qualified employee who joined the organization 3 years back, straight from college. Again, technologically 3 back. See यहाँ पे he has been with the organization for 3 years only. ठीक है. And Saradeep will not be comfortable in making him the plan because ये था कि मोस्ट ट्रस्टेड लोगों को ही वो हेड बनाना चाहता है सारादीप हमेशा. तो यहाँ पे ये सब चीजें केसर सोचेगा एंड डेफिनेटली ही विल नॉट मेक धनुष. 3 साल उतना ज्यादा नहीं होता. संदीप हु हैड बीन अबाउट 10 months लेफ्ट टू ज्वाइन. अब अगेन संदीप को 10 महीने के बाद अगर तुम मतलब वो छोड़ के चला जाएगा, इन केस इफ ही जॉइन्स द नेशनल लॉ स्कूल, देन अगेन समवन नीड्स टू बी चेंज. तो ज्यादा चेंजेस भी इज नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज सुहासिनी, एन एमबीए ग्रेजुएट एंड केसर्स वाइफ who had been a homemaker for 15 years. अब देखो वो होम मेकर थी
15 साल से, दैट डज नॉट क्वालिफाई हर टू बी एलिजिबल फॉर मेकिंग द हेड। ठीक है, कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए ना। सुरेंद्र, द डेप्यूटी हेड ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट, हु हैड बीन विद देम फॉर 30 इयर्स, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, एंड वुड रिटायर इन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स काफी होता है। ठीक है, सो यस, दिस पर्सन इज द बेस्ट चॉइस फॉर केसर टू डिसाइड ऑन कि इसको हमें अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हेड बना देना चाहिए। ठीक है, चलो, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट। Kesar also Kesar was also concerned about Tapsi's reaction to Sandeep joining the National Law School. She wanted to be a fashion designer. However, Sandeep dissuaded her from doing anything other than Saradeep, sorry, his father. उसने मना कर दिया from doing anything other than production engineering. Then she was very upset with her father's decision back then. Nevertheless, over time, she became a staunch supporter of her father's values and beliefs. Currently, she headed one of the plants, which also happened to be the best run company plant. Kesar felt that she would not take Sandeep's decision well. She might try to prevent Sandeep from pursuing higher studies in law. Now, which of the following, if true, will best assuage Kesar's fear regarding तापसी? अब ऐसा कौन सा ऑप्शन तुम्हें ढूंढना है कि केसर का जो डर है रिगार्डिंग तापसीज रिएक्शन ऑफ संदीप ज्वाइनिंग वो दूर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। सो यू नीड टू शो समथिंग इन अ वे जिसमें तापसी एंड संदीप का रिलेशन अच्छा था, एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस। Tapsi, in a marked departure from family tradition, was fully supported by her family when she decided to marry her batchmate. Again, this does not show any kind of relationship between Tapsi and Sandeep ना, कि उसका डर निकल जाएगा। केसर डर रहा है ना कि अगर उसने उसके भाई ने अगर तापसी को भी बोल दिया तो she will not support Sandeep. तो this is not definitely showing any kind of reaction कि केसर का डर निकल जाए। This is wrong. Tapsi, in a fashion school convocation speech, said that she still harbored a dream of quitting the family business for becoming a fashion designer. Again, इससे तो और डर बढ़ जाएगा ना, that she is not in a good terms with their family's decision. मतलब जो family ने decision लिया था that she will do this production engineering, she is still against it. And और अगर संदीप की बात सुनेगी तो she might become jealous, kind of jealous, right? So this is again not helping Kesar's fear go away. Next, Tapsi mentored an online startup dedicated to women's fashion in her free time. Again, this is not helping us to show any kind of Kesar's fear that will go away. Okay, this is definitely wrong. Next, when Sandeep was 8, he supported Tapsi's desire to pursue fashion design. अब देखो, संदीप जब 8 साल का था, जस्ट बिकॉज संदीप वॉज 8 ईयर्स, ही सपोर्टेड तापसीज डिजायर, उसने सपोर्ट किया था। अब कैन दिस सी, इट इज डेफिनेटली अ गुड पॉइंट कि दैट शोज जब तापसी को जरूरत थी सपोर्ट की, संदीप शो। बट इफ यू नाउ रीड द लास्ट ऑप्शन, तापसी गिफ्टेड संदीप अ स्पोर्ट्स बाइक ऑन हिज 19th बर्थडे even when Saradeep was completely against it. This is a better point than option D. Why? Because she went against his father's will na. His father was against this, but still she gifted him. So this shows a stronger bond कि that Tapsi understands Sandeep. ठीक है, तो D, E is a better option than D. ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो E is the correct answer here. ठीक है, so I hope this is clear to everyone now. चलो, let's move on to the next set now. Himaja was among the top 10 students of a business management batch. She got placed in a reputed strategy consulting firm during campus placements. She was delighted to work under Nirmal, her supervisor, who was known for grooming many stars in the organization. Nevertheless, he was also regarded as a hard taskmaster. Though she was a fresh recruit, she longed to be in a client-facing role. Now, question is, during an informal office gathering, Himaja mustered up courage to ask Nirmal for a client-facing role.
Now, which of the following reasons, if true, will best justify Nirmal saying no to Himacha? अब देखो किसी भी एम्प्लॉय को तुम ऐसे नो नहीं कर सकते, तो स्ट्रेट अगर कोई क्लाइंट ही मना कर देगा कि हमारा ये रिक्वायरमेंट होता है, एंड विच इज वेरी वेल ट्रू, client always has a preference of selecting a candidate. They have a good say in selecting a candidate. तो डायरेक्टली अगर वो चीज तुम कन्वे कर दोगे एम्प्लॉय को कि इस ये कैटेगरीज होती है विच यू नीड टू क्वालिफाई, देन ओनली यू कैन टेक अप दिस. तो यू कैन क्लियरली सी नाउ, I have given you all this hint now. So clearly, if you read option A, clients do not appreciate strategic discussions with fresh recruits. अब तुम स्ट्रेट अवे यही बोल दो कि क्लाइंट का प्रेफरेंस है एंड दे डोंट अप्रिशिएट स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस. इट्स द बेस्ट वे टू से समवन नो. तुम खुद से नो नहीं बोल सकते किसी को इफ दैट पर्सन वांट्स टू टेक अप दैट. ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे बाय विच यू कैन से नो टू हिमाचल. ठीक है, एंड इफ यू लुक एट अदर ऑप्शंस आल्सो, हिमाचल्स टीममेट्स आर नॉट हैप्पी विद हर कम्युनिकेशन स्किल्स. जस्ट बिकॉज हर टीममेट्स आर नॉट हैप्पी, देन यू कैन नॉट से नो टू हिमाचल अगेन. ठीक है, थर्ड पार्टी के बातों पे ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस इट हैज बीन गिवन कि वो ट्रस्टेड है, काफी टाइम से वो ऑर्गेनाइजेशन में है. हिमाचल नीड्स टू इंप्रूव आवर प्रेजेंटेशनल स्किल्स. अगेन, क्लाइंट फेसिंग रोल्स में सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं होता, देयर आर अदर थिंग्स. तो प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द साइड थिंग्स. तो ऑल टुगेदर तुम सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स के बेसिस पे यू कैन नॉट से, एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस इफ यू सी, दे आर क्वाइट इररिलेवेंट. Second question of this set is, due to constant pleading, Nirmal assigned Himaja a client-facing role in his project. Nirmal instructed her that he would do all the talking during meetings and she would diligently listen and take notes. However, in the first meeting, Himaja made a comment which contradicted Nirmal. In the next, she interrupted the client while he was making a point. This offended the client, resulting in Nirmal apologizing to the client to save the project. Now, question is, which of the following is the most appropriate action that Nirmal should take against Himaja's behavior? Obviously, she did wrong by interrupting the client. Na? So we have to take, Nirmal has to take a certain step. So first is caution Himaja that she would lose client-facing roles if she does not appreciate rationale behind his instructions. Yes, definitely. उसको caution करना to a fresh recruit because she is in a learning phase is the best thing to do ना. तो यहाँ पे I'm just keeping this option safe. Let's explore the other ones. Recommend Himaja for a 5-day listening skills workshop. Again, an irrelevant one. Listening workshop से क्या होगा उसको फायदा? वो learning phase में she should learn that by herself. Await the half yearly performance review. Again, performance review से क्या करना उसका? ठीक है. Next is ask Himaja's project teammates to have a chat with her. Again, presentation में you have taken her to this role. You cannot ask other to have a word with her and sort it out. ऐसा करना is definitely wrong. Last is have a chat with Himaja later in the evening. Explain the delicate situation she had put him during the meeting and request her not to repeat it. देखो यहाँ पे this option is kind of blaming Himaja that she had put him in this situation. यहाँ पे तुम blame नहीं कर सकते, but you can definitely ask her to be cautious about this the next time. ठीक है, so this is more of putting a blame on Himacha. So this is not correct. So option A here is the correct answer. Let's move on to the next question. Another month passed and Himaja was working under Shreya in a different team. Shreya was impressed by Himaja's enthusiasm and sincerity. She asked Himaja to accompany her to a meeting with a new client. During the meeting, Himaja made a statement that offended the client. Shreya tried to diffuse the situation by asking Himaja to apologize. Though Himaja apologized, she defended her statement. मतलब sorry बोलने के बाद भी she said something which defended her in a way. Now, this infuriated the client further, who categorically told that the statement of Himaja was against his organization's core values. He specifically told Shreya that unless concrete steps were taken against Himaja, he would not get into any business with the firm.
and now that's a worst case for the firm also. So यहाँ पे Shreya needs to take an action. Now, which of the following is the most appropriate action that Shreya should take in the interest of all the parties? ठीक है? Should move Himaja to a non-client facing roles in the current project and explore client facing roles in other projects. Yes, definitely. Certain things need to be done. And now she is in a client facing role, उसको move कर दो and बोल दो कि explore the client facing roles in other projects. ठीक है? So I'm just keeping this option as safe right. Should assure the client that Himaja will be transferred, but send Himaja for a 2 week vacation. See, you cannot lie your client because if you lie, then the project and the business will be in question. You have to think from the perspective of the company overall as well. Just because you have to save a person in your team, that does not mean you have to degrade the overall ethical values of your firm. Because she has done certain thing wrong, she needs to get like through that thing now. Okay, you cannot save anyone just by telling a lie to your clients. So this is wrong. Should castigate Himajas using strong words in front of the client. Again, you cannot insult anyone, and especially your teammates. Okay, insulting anyone just because to show your clients that you are taking an action, it's not a good course of action. So again, this is wrong. Fourth is should advise Himaja to look for a role outside the consulting industry. Again, बाहर जाके consulting industry पूछना, this is also not a good course of action. Last is should defend Himaja. Again, she has done wrong. You cannot defend. You have to take certain action because otherwise your firm will lose this business. Okay, so option A here is definitely the correct answer. So I hope this set is clear to everyone now. So let's see the next set now. Amish is the marketing head of an e-commerce firm named Fill In Cart. Recently, Fill In Cart signed a contract with a top celebrity to endorse their firm. A few months later, the celebrity was signed as the ambassador to promote tourism in a small country, Vadia, ruled by a dictator. The dictator, in his zeal to bring peace to the region, brutally suppressed an armed uprising in Vadia. So he is currently facing sanctions imposed by a few countries. When the news of the celebrities' association with Vadia becomes public, calls for boycott of a fill-in card start trending on social media. So now the question is, there will be three questions again. Amish is concerned with the trending boycott calls and its probable impact on fill-in card's brand image. And he is the marketing head, Amish, right? So given the social media backlash, which of the following courses of action will help Amish best defend fill-in card's continued association? मतलब एक्टर को ऑल टुगेदर हटाना भी नहीं है एंड एट द सेम टाइम दे नीड टू डिफेंड कि वो जो वादिया के साथ एसोसिएशन है व्हाई इट इज जस्टिफाइड बिकॉज दैट्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन राइट सो लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ publicize on social media that fill-in cart has nothing to do with the celebrities association. अब देखो यहाँ पे this particular option will not help to reduce the backlash because it would appear as a tactic to avoid the blame na? And it will also help defend the continued association. तो यहाँ पे blame avoid करने के लिए ये तुम बोल रहे हो इससे ये मतलब समझ आएगा so which you cannot do definitely. Second one, let's see. Declare on social media that fill-in card chose the celebrity for his philanthropic work. See, यहाँ पे तुम उसको choose कर रहे हो. You are giving the reason for choosing the celebrity, but nothing about the current situation has been talked of. So this is also not going to help us. Next is withdraw all advertisements involving the celebrity from the media platforms. अब तुम्हें यहाँ पे defend करना था why you are still continuing with the association. यहाँ पे तुम्हें tie up हटाना नहीं है. ठीक है celebrity से. You need to take a stand. So this is also wrong.
Ignore social media backlash. Again, you have to do something. इससे भागना नहीं है. The last option is publicize on social media that the celebrities endorsement of Vadia tourism will help improve the livelihood of Vadia's poor. अब देखो, तुम इन अ वे सेलिब्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्यों उसने ऐसा किया होगा. ठीक है, तो यू विल हैव टू चूज दिस बिकॉज यू नीड टू टेक द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू डिफेंड योरसेल्फ एज अ कंपनी ऑल्सो ना, कि क्यों तुम उसके साथ एसोसिएशन कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि यू थिंक दैट द एक्टर इज और whoever it is, the celebrity is doing it for a good cause. So option E is the correct answer here. The next question is, Filincart's closest competitor, Shop at Us, that is SAU, wants to grab this opportunity. They have come up with a slogan, never at the cost of human rights, which has started trending in the social media. Amish is unsure if he should respond to the social media campaign of the competitor. So the question here is, which of the following options, if true, will best assure Amish that SAU's slogan is not affecting? Obviously, it would mean कि जैसे ही ये स्लोगन आउट हुआ है, फिल इन कार्ट का जो बिजनेस है वो एज इट इज रहा है. देयर पीपल्स एसोसिएशन विद फिल इन कार्ट्स हैज नॉट रिड्यूस्ड. मतलब बेसिकली वी हैव टू फाइंड दैट ऑप्शन ओनली. तो अब देखते हैं ऑप्शन ए. Fill in Cart's average monthly sales volume has increased 5% since the SAU slogan launch, driven by the sales to repeat customers. अब देखो यहाँ पे 5% increase हुआ है since this launch of the slogan, and customers भी repeat हो रहे हैं. तो दिस इज वन ऑफ द गुड पॉइंट्स ना, कि ये जो एसओयू का स्लोगन है उसका कुछ असर नहीं पड़ा ऑन FIT, फिल इन कार्ड्स बिजनेस. पीपल आर स्टिल बाइंग इट एंड इवन इट हैज इंक्रीज. ठीक है, सो दिस इज अ गुड पॉइंट. आई विल कीप इट सेफ. अगेन लेट्स ट्राई टू एनालाइज अदर ऑप्शंस. फिल इन कार्ड्स एवरेज मंथली सेल्स हैज डिक्रीज. अब ये डिक्रीज हुआ, इसका मतलब ये इफेक्ट हुआ है, कम हो गया. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट आवर आंसर. नंबर ऑफ विजिटर्स टू द FICT's होम पेज हैज इंक्रीज. अब देखो नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीज हुए हैं, but still you don't know na, number of visitors has increased उनके होम पेज पे. that does not mean they are still buying. So out of option A and C, obviously A is a better choice. that shows कि हाँ उसका रेवेन्यू या फिर उस पे कंपनी के सेल्स पे असर नहीं हुआ. सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन. तो मैं C को कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ. More people are looking for cash on delivery for the high-end products since the SAU slogan launch. Again, irrelevant to the thing that has been talked over here. Next is, fill-in cards average monthly sales revenue has increased by 1% overall. See, यहाँ पे with respect to SAU given है. यहाँ पे since last month हमें ये नहीं पता कि कब actual में ये slogan launch हुआ था. So this is definitely a better answer than E. ठीक है, so option A is yes, the best answer out of all. Last question of this set. Tract, a major travel and hospitality conglomerate, operates globally with a significant presence in Vadia. Ever since the celebrity has signed the contract with Vadia Tourism, the number of international tourists in Vadia has increased manifold. Companies like Tract have a great hope towards the future of tourism in Vadia. Consequently, Tract is looking forward to increase its investments in Vadia. However, Tract is concerned about social media backlash against the celebrity. Tract fears that the celebrity may terminate his contract with Vadia Tourism. Now the question is, which of the following data available in the public domain will best assure Tract that the celebrity will continue his association with the tourism sector of Vadia? So obviously you need to find some point कि celebrity अपना वो withdraw नहीं कर रहा, right? तो so Tract's main concern is definitely that celebrity might terminate his contract because of the social media backlash. अब हम ऑप्शन ऐसा ढूंढेंगे that will show that Tract, uh, it will show that the Tract, that the celebrity is not affected by the backlash, and that will put Tract at ease, right? So option A देखो, a week back celebrity released videos of the interiors of Vadia where the poor need help. यहाँ पे ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, because Tract, it will not help Tract because it does not mention that the help to the poor is being done in Vadia.
ठीक है, इंटीरियर्स ऑफ बादिया है वेयर द पुअर्स नीड हेल्प, बट एक्चुअल में विल दिस हेल्प ट्रैक इन रियलाइजिंग कि वो सेलिब्रिटी विड्रॉ नहीं कर रहा? ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉन्क्रीट प्रूफ. ओके, सो दिस इज आई एम जस्ट कीपिंग इट ऑन होल्ड अभी के लिए. ऑल टुगेदर अच्छा आंसर नहीं लग रहा. नेक्स्ट, last fortnight the celebrity declared in the social media that upliftment of the poor is his biggest goal in the coming decade. Again, इससे यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट कि वो विड्रॉ करेगा या नहीं. ठीक है, ही कैन मेक सच declarations and still he can withdraw out of this particular country, right? So this is also definitely not correct. Recently the celebrity pledged 5% of his annual income towards global poverty alleviation. अब global poverty alleviation के लिए वो करेगा, but does this particular figure say that he will not withdraw? Again you cannot be sure ना, कोई अच्छे cause के लिए करे, it's definitely a cause, but it's not acting as a proof कि he will not withdraw. So this is also not correct. Last, second last is a week back, the celebrity signed on as the goodwill ambassador of the Kingdom of Dubia, where recently the king ferociously crushed insurgency. अब देखो, this particular option states that this celebrity has signed another contract with countries like Badiana, and it is not concerned about the backlash. So what this option does is this also shows that the celebrity will most likely stay associated with Badiana. There is another kingdom of Dubia which operates in the same way as Badia. तो अगर बैकलैश का इस पे कोई असर नहीं हुआ तो तभी तो इसने जाके एक और क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना एज अ गुडविल एम्बेसडर. दिस इज काइंड ऑफ सेइंग, और दिस विल मेक ट्रैक्ट एंश्योर कि हाँ सिंस ही हैज साइंड अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करके, दैट मींस उस पे कोई असर नहीं हो रहा. तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट नाउ क्विकली. विंध्या, शबनम एंड अमाला are interning at a software organization as a part of the requirement of their B school curriculum. The organization has allotted each of them a project based on their area of specialization. In the first meeting with the HR head, they are informed of a PPO possibility, that is pre-placement offer, an offer to join the company after their MBA based on the performance. All of them are eager to convert their internship into a job offer. Each of them is assigned a mentor who evaluates the intern's performance along with the HR head. So let's see the first question. In the second week of her 8-week internship, Amala realizes that the project requires inputs from subjects she studied in her third trimester. However, during the third trimester, Amala was significantly distracted by an inter-college sports meet, affecting her grasp of the subjects. ठीक है, तो माइंड उसका डाइवर्टेड था इन दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉरवर्ड फॉर अमाला? उसको सेकेंड वीक में ही रियलाइजेशन होगी. नाउ अमाला शुड रिक्वेस्ट हर मेंटर टू एलोकेट अ डिफरेंट प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड फेमिलियरिटी. अब देखो, वंस यू हैव गॉट इनटू एन प्रोजेक्ट, you cannot ask your seniors to change that, because it will most probably reduce your chances of getting a PPO, because it seems like you are running away from a problem instead of facing it. So this is definitely not correct. Next, Amala should disclose to the mentor her limited understanding of the required inputs and seek his suggestions. Yes, see, it is the one of the best choice because it will show Amala's honesty as well as her preparedness to learn and seek help. ये सारे qualities दिखा रहे हैं that she has the understanding that she does not uh, understand this thing, so which shows she has, or she accepts that she is not all prepared for this particular input, but yes, she is ready to seek help as well. ठीक है, सी एंड ऑल्सो शी इज बीइंग ऑनेस्ट. तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, तो अभी आई विल कीप इट सेफ. नेक्स्ट ऑप्शन इज अमाला शुड सीक शबनम्स हेल्प हु परफॉर्म वेल. अब देखो, शबनम इज ऑल्सो इंटर्निंग अलोंग विद अमाला, तो it is definitely one of the good ways of
ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द अदर्स, बट यहाँ पे यू हैव टू रियलाइज दैट शबनम भी तो पीपीओ लेने में वो है ना, शी इज इक्वली इंटरेस्टेड, तो वो भी काइंड ऑफ बिजी होगी एंड शी वोंट बी एबल टू डिवोट दैट मच टाइम, राइट? सो यहाँ पे it is definitely not a good choice because she will also be busy. So this is out of picture for us now. So Amala should realize that she may not get a PPO and so focus on networking with the experience again. This is a very laid back attitude which you should not have. Next, last is Amala after studying the organization for a week should design her own project again. Project पे काम किया गया, अलग से क्या ही खुद से बनाना. Again, an irrelevant point. So here we can clearly see accepting the mistake is the best choice for Amala here. Next question. Vindhya's project is about understanding employees' perception regarding the organization's HR policies. Against her own instinct, she is suggested by her mentor to interview only the good performers identified by his office because poor performers, he believes, usually crib against the policies. तो क्या करना चाहिए? Which of the following course of action will be best enable Vindhya to provide the organization with a complete picture? So Vindhya should completely comply with her mentor's suggestion. अब यहाँ पे देखो, altogether if you say Vindhya, because she wants to provide the organization with a complete picture ना, उसको अपनी तरफ से भी कुछ सजेशन देना है, तो सब कुछ अगर मान गए तो अपनी तरफ से इनपुट क्या ही दोगे? ठीक है, so this is not a complete answer. Next, Vindhya should ignore her mentor's directive again. If someone is mentoring you, you should definitely listen. So you cannot reject that. Vindhya should report this restraint to the HR head, requesting her immediate intervention. Again, it would lead to some kind of tension between HR department and Vindhya. ठीक है, फिर उसकी वजह से उसका पीपीओ भी चला जा सकता है. ठीक है, which you cannot do. Next, Vindhya should request the HR head to allot her another mentor again. This is not a good thing to say कि मेरा HR या फिर वो चेंज कर दो. Until and unless you definitely have a problem, then you should do. Otherwise, this is the extreme step. Last is Vindhya should meet only those identified by her mentor. Yes, you are following the instruction, but at the same time also collect information from them as why their other colleagues are disturbed. मतलब क्यों वो satisfied नहीं. So this is the best possible answer. यहाँ पे तुम विंध्या अपना पॉइंट भी प्रूव कर देगी, प्लस शी इज फॉलोइंग द मेंटर्स डायरेक्टिव्स. ठीक है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. Shabnam, who is working on sales executives work life balance, now has collected the following details about their frequent travels. तो क्वेश्चन क्या है? बिफोर seeing these points, which of the following combinations of the above reasons can enable Shabnam best substantiate her thinking? मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस अफेक्ट हो रहा है फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स की वजह से. तो उस पॉइंट को कौन से पॉइंट्स वही पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वी नीड टू पिक अप कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल ज्यादा हो रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हेल्प स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद की कस्टमर्स. अब देखो ये इट इज डूइंग द ऑपोजिट थिंग. इट इज सजेस्टिंग दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल्स बढ़ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल इज मेकिंग एक्चुअली द थिंग्स बेटर. हमें उल्टा प्रूव करना है ना कि वर्क लाइफ बैलेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल से वो बिगड़ रहा है. दिस इज रॉन्ग. ट्रैवलिंग हैज नो इफेक्ट ऑन द पर्सनल लाइफ्स. अगेन it can be dismissed because it is not true for all the employees. ठीक है. and also this situation is subject to change. ठीक है, जैसे जैसे शादी होती रहेगी दिस माइट सब्जेक्ट टू चेंज. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड ऑप्शन. तो 1 and 2 तो ऑब्वियसली देखो कट हो गया, सो यू कैन एलिमिनेट ऑल दी ऑप्शंस व्हिच कंटेन 1 and 2. so you can see only we are left with option C. ठीक है. so why it is correct, let's try to analyze also. Travel enhances the financial health of the sales executive since their fixed salaries are low. अब देखो क्या हो रहा है, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनके फिक्स सैलरीज लो है, तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इन ऑर्डर टू गेट मोर सैलरीज दे आर फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग ना.
which is kind of affecting their work-life balance. So this is definitely suggesting me that frequency of travel काफी बढ़ रहा है. So this is definitely correct. Second, ये fourth वाला is frequent travel has no significant impact on market budget given the current high margins from sales. So देखो ये भी valid है because frequent visits are not required, because it is suggesting that frequent visits are not required if they don't have any effect on budget. ठीक है? And also it would mean that there is no advantage in traveling frequently. So ये भी बोल रहा है कि बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रखी है and there is overall no effect. Next is the sales executives have the autonomy to decide on the frequency of their travel. So see, this is also valid because the executives have the autonomy to decide. So they can travel more than it is required. Na? So this is also correct. Hence, option C is the correct answer here. Let's see the next set now. A multinational company sources pristine natural spring water from Bori, a village in Satpura Mountains. The unprocessed natural spring water is directly bottled by the MNC. The company brands it as natural spring water and sells at 50% premium vis-a-vis other brands that sell processed water. ठीक है, ये natural spring बोल रहे हैं and वो बाकी जो होते हैं वो processed water होते हैं. So the local panchayat under the Panchayati Raj Act 1992 controls the spring water usage. Hence, the company signed a 30-year contract with the panchayat for exclusive access to the spring water for business purposes. This contract contributes 50% to the panchayat's revenues, besides providing 250 jobs in the panchayat. The spring also meets domestic and agricultural needs of the people of Bori and the surrounding villages. So let's see the three questions. First of them is, Chanchala owns a small parcel of farming land in Bori. She grows cannabis in some part of her land and earns a significant amount of money from it. Soon after the bottling plant was commissioned, Chanchala, instigated by a landlord, उसको भड़काया गया था किसी interest की वजह से, starts accusing the MNC of robbing her of water and impacting her livelihood. She threatens to take the MNC to the court. Now, which of the following options will best solve the MNC's problem? So MNC को क्या करना चाहिए इस केस में? Promise to employ Chanchala's 18, again an absurd thing, because it won't necessarily solve the problem, as because the son can always work at the farm and doesn't necessarily or don't really need the job ना. तो जबरदस्ती क्यों बोलोगे? Next, request the panchayat to excommunicate Chanchala for cultivating cannabis. Again, यहाँ पे देखो, it will kind of increase the problem for the MNC ना, because this particular action will take away the livelihood of Chanchala. ठीक है, ये उल्टा भड़काने वाली बात हो गई है. So that's why MNC should not do this. Buy Chanchala's produce at a premium of 30% to the market price. अभी फिर से देखो, ये जो चीज होगी, it can lead to more instances of people accusing the MNC ना, कि उसको चुप कराने के लिए 30% premium दे रहे हैं. So this particular stand can go against the MNC, so which is again not correct. Second last option, get the villagers employed by the MNC to persuade Chanchala not to sue. Yes, see, villagers जो होंगे, maybe might be some of them be friends with Chanchala ना, and they will be better able to persuade Chanchala ना कि उनके ऊपर action डालो. Yes, this I can see as a good option. Let's see. Compensate the monetary loss as perceived by Chanchala. Again, जैसे तुम अगर उसको पैसे देने के लिए चुप कराना चाहते हो, सिमिलर टू दिस ऑप्शन सी की तरह ही, people can again start talking about that this particular company is giving Chanchala the money to shut her mouth. So this also can go against the MNC. So option D is the best way. Second question of this set is, the MNC has spotted traces of chemicals in their fortnightly
water quality analysis. The MNC realizes that this is due to the contaminated agricultural runoff owing to into the spring from the nearby fields where farmers use pesticides and fertilizers. This require an immediate solution. Which of the following will be the best situation? Resolve the situation for the MNC. चलो फटाफट देखते हैं अब. Continue bottling the natural spring without processing since the villagers drink as it is. No, it is unethical to do so. If you have identified any kind of chemical, you should look into it. Since the customer trusts the MNC to do what is good for them, remove the contaminants and continue to brand it as natural spring water. देखो यहाँ पे तुम अगर remove कर रहे हो तो इसको process कर रहे हो. अब यहाँ पे इनका यूएसपी क्या था? दिस इज कमिंग एज नेचुरल स्प्रिंग वाटर एंड इफ यू आर प्रोसेसिंग इट बाय रिमूविंग द कंटामिनेंट्स, यू आर एक्चुअली प्रोसेसिंग इट. तो यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए था एंड इट वुड बी अ चीटिंग टू इट्स कस्टमर. सो दिस इज ऑल्सो अनएथिकल. Rebrand natural spring water as purified spring water after removing the contaminants through charcoal filtering. अब यहाँ पे देखो कंपनी का मेन काम क्या था? नेचुरल स्प्रिंग वाटर ही करना था ना. बाकी द मेन पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था ना, बाकी जो रेस्ट है वो सारे प्रोसेस करते थे. सो इफ यू हैव टू रीब्रांड इट, सो व्हाट इज योर यूएसपी? यूएसपी तो कुछ बचा ही नहीं ना, वो नेचुरल तो रहा ही नहीं. इवन इफ यू आर रिमूविंग द कंटेमिनेंट्स, तो उसको प्रोसेस तो करना पड़ेगा. इट इज एथिकली राइट कि प्योरिफाइड लिख रहे हो, बट यू विल लूज द सोल पर्पस ना. तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो नॉट feasible. Close down the bottling plant. Again, it will lead to a huge loss for the MNC. Last is source water from an uncontaminated natural spring 150 kilometers away. अब देखो for the time being, जब तक वो सही नहीं हो रहा, you can definitely do this or take this step because उसको natural spring water तुमने नाम ही दिया था, उसी के बेसिस ब्रांड नेम पर ही तो तुम बेच रहे हो ना. So for the time being, you can do this and sell it. ठीक है, option E is the correct answer here. So last question of this set is, the MNC is concerned about chemical contamination of natural spring water due to the agricultural runoff with pesticides and fertilizers. The MNC is looking for a sustainable solution. अब long term solution सोचना है. So what will be the best course of action? Negotiate with the panchayat to gain control of the entire spring and provide alternate sources of irrigation. अब देखो यहाँ पे the problem is it might lead to tension between panchayat and the MNC ना, because spring is the primary water source for the villagers. अब तुम उनसे ले लोगे तो उनके बीच, दोनों के बीच टेंशन हो जाएगा ना. दिस इज नॉट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. चेंज ब्रांडिंग फ्रॉम नेचुरल टू प्रोसेस्ड. अगेन उनका यूएसपी खो जाएगा, डेफिनेटली नॉट करें. मूव टू अनदर स्टेट विद अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल स्प्रिंग्स. अब यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना था, ठीक है. दिस पर्टिकुलर ऑप्शन विल लीड टू अ सब्सटैंशियल फाइनेंशियल अंडरटेकिंग ना. फाइनेंशियल क्राइसिस उसके भी हो जाएगा. तो इससे अच्छा कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढो दैट इज इन द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ द पार्टीज, लाइक फार्मर्स के लिए भी एंड एमएनसी के लिए भी. तो दिस इज ऑल्सो नॉट फीजिबल. कोएक्स द फार्मर्स इन द नेचुरल. अब यहाँ पे मनाना, कोएक्स मीन्स टू परसुएड इन अ पोलाइट मैनर. सो कोएक्स द फार्मर्स इन अ नेचुरल स्प्रिंग्स कैचमेंट टू मूव टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. यस, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो. फार्मर्स को बोलो कि, प्यार से बोलो कि अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह जाए, सो दैट जो वाटर है नेचुरल स्प्रिंग में वो भी कंटेमिनेट ना हो और तुम्हारे लिए भी सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड है. सो यस, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल एक्शन द एमएनसी एंड द फार्मर्स कैन डू टुगेदर. ठीक है. सो आई होप दिस सेट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. So we'll move to the next set now. Chalo, on to the next set now. The small shop selling computer peripherals is the only one of its kind in the remote village of Turturung. So because online purchases take 2 weeks or more to arrive, the small shop is a quick stop for buying items such as pen drives and USB cables. Besides selling computer peripherals, the small shop also undertakes repairs of out of warranty products. So chalo ab question dekhte hain. First question from this set. The small shop, which earlier recorded an annual increase of approximately 12% in revenues,
has been stagnating at 4% for the last 3 years, during which e-commerce sidelined brick and mortar outlets. Obviously, ये जो retail stores है, physical stores है, brick and mortar मतलब ये physical stores. तो उनको ई कॉमर्स की कंपटीशन की वजह से साइडलाइन होना पड़ गया. The shop is struggling to increase profitability. In general, the small shop has been offering a discount on MRP to compete with e-commerce prices. तो अब ये discount देके they are trying to cut down the competition with this e-commerce platforms. तो question क्या है? Which of the following is the best reason for the small shop not to reduce the current discount? अब क्या ऐसा reason हो सकता है small shop के लिए discount ना दे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी दैट इट इज गोइंग वेल. स्मॉल शॉप जो डिस्काउंट इंट्रोड्यूस कर रखा है उसकी वजह से शॉप अच्छा खासा चल रहा है. एंड सेकेंड वुड बी दैट कि वहां से ई कॉमर्स के तरफ से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ द रोड. राइट, तो यही दो मेन रीजन हो सकते हैं बाय विच द स्मॉल शॉप शुड नॉट रिड्यूस द डिस्काउंट. The first is a large fading sign prominently placed behind the shop's cash counter reads, "In business and in life, always be fair." अब देखो, just because some quote has been mentioned, इसकी वजह से you cannot introduce or keep the current discount rate as is. ठीक है, so this is an absurd option. Next, recently customers from a nearby village have started shopping at the small shop for low-end peripherals, accounting for around 3% of the shop's total revenues. अब देखो यहाँ पे जो डिस्काउंट है ओवरऑल, वो ओवरऑल है ना, यहाँ पे लो एंड पेरिफेरल्स के रिस्पेक्ट में दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द बिजनेस. अब वो ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो क्यों उसको बंद नहीं करना चाहिए, वहां यहाँ पे वो आंसर नहीं कर पा रहा ना. तो यहाँ पे आउट्स ऑल्सो यहाँ पे नियर बाय विलेजेस का है. एंड option B here can be ignored as the outside villages from a very insignificant portion of the total revenues. ये जो विलेज का जो है 3% is very insignificant. तो इसकी वजह से if you say that discount should be kept continuing, that is wrong. Next option, to cover insurance cost, e-commerce has begun charging a delivery fee. ये तो उल्टा इनके लिए अच्छा होना चाहिए. So this is absolutely weird. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कुछ भी करे उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए. Next, a new resident who earlier worked in the computer hardware industry is contemplating starting a business in Totoro. अब just because someone is going to enter, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम कंटिन्यू करते रहो अपना डिस्काउंट. बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करेंगे, डिपेंड करेंगे इस पे. So we are just left with only one option. So even though e-commerce offers a great variety of choices, villagers prefer buying readily available products from the small shop. Yes. तो अब villagers जो है already खरीद रहे हैं अच्छे खासे, so it should keep continuing with the discount. अब तुम discount हटा दोगे तो people yes will get sidelined, हटना शुरू हो सकते हैं. So not going into that risky position. So if it is going fine, now you should be continuing with the discount as well. So this explains the reason why small shop should not reduce the current discount rates. ठीक है, so option E here is the correct answer. चलो second question देखते हैं इस set से. The small shop wants to increase the variety of products sold, including expensive ones. However, it is averse to accumulating unsold products. मतलब जो बिकता नहीं है सामान उसको लेके बहुत सारा कंसर्न रहता है स्मॉल शॉप को. दैट्स वाई अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था कि वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो बेचना होता है वो इंक्रीज करे. बट नाउ दे आर थिंकिंग स्पेशली ऑफ द एक्सपेंसिव काइंड. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन इफ द स्मॉल शॉप वांट्स टू इंक्रीज द वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इट सेल्स. तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपेंसिव वो है वो अक्यूमुलेट ना हो ज्यादा, उसको टेक केयर करना पड़ेगा. तो कोई भी ऐसा ऑप्शन जो सामान जो बिकता नहीं है या फिर कोई अच्छा सोर्स हो जहां पे वो सामान रखवा पाए, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन. राइट, फर्स्ट इज द स्मॉल शॉप शुड मेक एन अरेंजमेंट विद द रिटेलर ऑफ द नियरेस्ट सिटी. द शॉप कैन स्पेयर वन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज वंस अ वीक टू प्रोक्योर द वीकली रिक्वायरमेंट्स. यस, दिस इज काइंड ऑफ एब्सोल्युटली फाइन ना.
किसी भी सिटी में, नियरेस्ट सिटी में एक रिटेलर के साथ टाई अप कर दिया और बोल दिया कि वहां से प्रोक्योर हम सामान कर लेंगे वीकली बेसिस पे, हम एक एम्प्लॉय को लगा देंगे, तो दैट इज एब्सोल्युटली डुएबल ना। यहाँ पे क्या होगा, जो अपना बिजनेस चलता है स्मॉल शॉप का वो चलता रहेगा, एज वेल एज जब भी उसको प्रोडक्ट अगर वेराइटी इंक्रीज करनी हो तो वो जो प्रोक्योरमेंट होगा उसके लिए एक एम्प्लॉय लगा देगा, वो लेता जाता जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स लुक एट और एक्सप्लोर द अदर ऑप्शंस। अगर कोई बेटर नहीं मिला तो देन दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द स्मॉल शॉप शुड फोकस ओनली ऑन लो एंड पेरिफेरल्स। अब देखो यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया है दैट इट वांट्स टू एक्सपैंड, देन यू हैव टू फाइंड एन ऑप्शन विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू से कि वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे वो इंक्रीज करें। So this is definitely not correct. Next option, the small shop should get suppliers to courier its requirements to the shop owners whenever needed. Okay, absolutely fine. The suppliers require that the small shop orders a minimum quantity. अब देखो यहाँ प्रॉब्लम आ जा रहा है, मिनिमम क्वांटिटी से अगेन accumulation का प्रॉब्लम हो सकता है। Although the first sentence is absolutely correct, but यहाँ पे अगेन मिनिमम ऑर्डर की वजह से वहां पे accumulation स्टार्ट हो सकता है। This is also not helping me to solve the problem for small shop. Next option, the small shop should acquire extra space at lower rentals available at a distance. Again, काफी ज्यादा उनका खर्चा बढ़ जाएगा एंड इट डज नॉट एक्चुअली, अब तुम लोअर एक्स्ट्रा स्पेस ले लो लोअर रेंटल्स में, दिस डज नॉट अगेन एक्सप्लेन मी कि अनसोल्ड प्रोडक्ट्स का क्या किया जा सकता है, एंड ऑल्सो इट विल एड अप टू द कॉस्ट ऑफ द न्यू रेंटल स्पेस ना, so this is also not a viable option. Next option, the small shop should focus exclusively on high-end peripherals, which contributes to 10% of its revenue, but 20% profits. Again, exclusively selling expensive product, it will not help me increase the variety. ना प्रॉब्लम क्या था, उसको वेराइटी इंट्रोड्यूस करना है, सो ओनली दिस ऑप्शन आई कैन सी इज हेल्पिंग मी टू address the problem while increasing the variety of products. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट, an emerging brand offers a franchisee to the small shop for repairing its products. ठीक है, तो स्मॉल शॉप को बोल दिया हम एज अ फ्रेंचाइजी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट कंडीशन दैट अदर ब्रांड्स आर नॉट टू बी रिपेयर्ड, हमारा ही ब्रांड सिर्फ आप रिपेयर करोगे, देन ओनली वी विल गिव यू दैट फ्रेंचाइजी। रिपेयर्स currently account for 50%, 15% of its revenues. ठीक है, ये स्मॉल शॉप का जो रिपेयरिंग काम है 15% ऑफ द रेवेन्यू है, क्वाइट सिग्निफिकेंट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल बेस्ट हेल्प द स्मॉल शॉप टू डिसाइड ऑन द फ्रेंचाइजी। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे वो फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड हो जाए। द स्मॉल शॉप विल हैव टू सेंड टू ऑफ इट्स एम्प्लॉइज फॉर अ 3 month ट्रेनिंग। अब देखो ट्रेनिंग अगर चले जाएंगे तो इस वजह से उसको तो 2 एम्प्लॉय लूज करने पड़ जाएंगे ना ट्रेनिंग पीरियड तक के लिए स्मॉल शॉप को, and this will cause a problem for the proper functioning of the shop. This is not a good reason to take up the franchise. Next, the upcoming brand is very new and needs franchisees desperately. Again, out of desperation, if you see, then तो तुम withdraw करना चाहोगे ना. This will definitely not help shop to decide. Next, revenues from repairs are expected to increase by about 3 to 5% annually. Yes, this will help me because उन्होंने repairing का franchisee के लिए बोला था ना. अब इन एंटीसिपेशन की रेवेन्यूज फ्रॉम रिपेयर्स एक्सपेक्टेड है 3 से 5% बढ़ता रहेगा हर साल। दिस विल हेल्प द स्मॉल शॉप टू डिसाइड कि हाँ हमें फ्रेंचाइजी ले लेना चाहिए, फ्यूचर प्रोजेक्शन को याद रख। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई एम नॉट सीइंग द अदर ऑप्शन बिकॉज आई हैव गॉट माय करेक्ट आंसर हियर। चलो, let's see the next set now. When Deepthi opened the package, she was aghast. She received cotton pillow covers instead of satin pillow covers she had ordered. Deepthi ordered them for her father from a popular e-commerce website that hosted products of many sellers. Confused, Deepthi contacted the seller's office using the details given on the package. The seller's representative profusely regretted and promised to send the satin pillow covers at no extra cost. He added that Deepthi need not return the cotton covers she received.
सो दीप्ति हैप्पीली एक्सेप्टेड द डील। ऑब्वियसली उसको बोल दिया गया कि एक और हम लोग सेट भिजवा रहे हैं सैटिन पिलो कवर्स का, और जो कॉटन वाला आ गया वो भी रख लो। तो ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर हैप्पी हो जाएगा। But a few days later, Deepti received another package from the seller. Unfortunately, this package also contained the cotton pillow cover. फिर से सेम चीज आ गया। Completely disillusioned with the seller's professionalism, Deepti decided to use these cotton pillow covers also. ठीक है, उसको यूज करना ही उसने अब सही समझा। Now let's see the three questions. The first one is, a few days later, Deepti received an email from the e-commerce website requesting her to share feedback about the seller. Deepti, deeply frustrated with the overall online purchasing experience, she deliberately ignored it. Later that evening, over supper, her father opined that the balcony curtains needed to be changed. He suggested that they bought from a local shop. If something went wrong, we could at least yell at the seller. Obviously, कि हम लोग सामने से देख पाएंगे, and if we go to a physical shop, then कुछ भी गड़बड़ होगा, we'll be able to yell at them. So Deepti stared at her laptop now and began writing her feedback. पहले वो नहीं कर रही थी, उसने इग्नोर कर दिया था, बट आफ्टर दिस स्टेटमेंट शी स्टार्टेड राइटिंग द फीडबैक. सो व्हाट वुड दीप्ति डेफिनेटली अचीव बाय गिविंग फीडबैक? अब उसका फीडबैक देने का मन क्यों कर गया? लेट्स सी द ऑप्शंस. प्रूव अ पॉइंट टू अ फादर. अब देखो, फादर को तो पता है ना सच्चाई, तो फादर को प्रूव करके क्या होगा? तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. रिलीज हर फ्रस्ट्रेशन. यस डेफिनेटली, पहले उसको ऑनलाइन एक्सपीरियंस से वो फ्रस्ट्रेटेड थी, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तभी उसने इग्नोर कर दिया था, बट फादर ने बोला कि अब हम अगर लोकल शॉप से जाएंगे एटलीस्ट वी कुड येल्प. तो अब तुरंत वो फीडबैक क्यों लिखने लग गई है? ऑब्वियसली टू रिलीज द फ्रस्ट्रेशन ना. सो दिस इज द करेक्ट पार्ट. नेक्स्ट, कोर्स द ई कॉमर्स वेबसाइट टू पनिश द सेलर. अब उसको पहले ही करना था तो वो पहले ही लिख देती, अभी उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड टू राइट द फीडबैक. डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग. इंस्टिगेट पीपल अगेंस्ट द सेलर. अब वो उसको भड़का भी क्या सकती है? भड़का के लोगों को क्या होगा सेलर के अगेंस्ट? at at the max, the least she could do is to make the people aware, not instigate. ठीक है, an act of social service. अगर उसको social service करना था, in the first go itself she would have written a feedback. ठीक है, so only option B here is the correct answer. Next question from this set. In the feedback column, Deepthi awarded 1 star out of the maximum 5 stars to the seller and described her negative experience. Later that evening, the sales head called and pleaded with her to retract her feedback and upgrade them to 5 star as they had already released the employee concern. निकाल दिया गया था, उसकी वजह से अब सेल्स हेड बोल रहा है कि प्लीज गिव अस अ 5 star रेटिंग. He appealed that they were a young organization and that their sales were getting badly affected. So he has given an argument also. Now, given the circumstances, what would be the ideal response? So let's explore the options. She should retain the feedback but award 3 star as a consolation measure. अब देखो यहाँ पे consolation की बात नहीं है. There she has experienced a bad customer. वो कस्टमर से कैसे डील करते हैं, that was totally missing with this. And just because they have terminated this employee does not mean कि वो फिर से चेंज हो गया. अगर उनको कंसर्न था तो फिर से प्रॉपर सेटन पिलो कवर्स मंगवा देते ना उसके लिए, which they haven't done. So that means this is not the correct way. Second, she should stick to her feedback and the stars awarded since she reported only what had taken place. Yes, ethically, morally, and every way, this is correct. ठीक है, she had a really bad experience and उसने कुछ गलत नहीं किया था. If you are a customer centric organization, you should have taken care of all these things. ठीक है, एंड एक बार नहीं 2 बार हो गया था, सो शी शुड स्टिक बैक टू द फीडबैक एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है, बाकी कोई भी ऑब्वियसली प्लीड किया है, बट यू शुड नॉट चेंज योर स्टांस शुड नॉट बी डन. चेंजिंग स्टांस शुड नॉट बी डन इफ यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट. ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन यू शुड नॉट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू लिसन टू अदर पीपल्स पॉइंट्स. यहाँ पे गलती हुई थी, दैट्स व्हाई यू शुड स्टिक टू द स्टांस. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेट.
After a few months, the sales head inquired, in case if you are using the cotton pillow covers and like them, kindly rate them on the e-commerce website. It will serve us, our customers, it will help us serve our customers better. Later that evening, her father remarked, you know, I really love these pillow covers, though I'm not sure why you bought so many of them. Now, which of the following reasons gives Deepti the best rationale to ignore the sales head's request? अब सेल्स हेड ने बोला कि हमें अगर तुम स्टिल कॉटन पिलो यूज कर रहे हो तो रेटिंग दे दो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए कि दीप्ति को सेल्स हेड ने जो भी रिक्वेस्ट किया उसको इग्नोर कर दे? ऑब्वियसली, अब देखो यहाँ पे इफ यू लुक एट, आई एम जस्ट डायरेक्टली जंपिंग टू द करेक्ट आंसर बिकॉज सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस है इन दिस सेट। सो इफ द सेलर ट्रूली केयर्ड अबाउट कस्टमर्स, दे शुड हैव शिप्ड द सेटन पिलो कवर्स बाय। यही सोच के दीप्ति कैन इग्नोर द सेल्स हेड्स रिक्वेस्ट, ऑल्दो कॉटन पिलो कवर्स के साथ कोई गलती नहीं थी, बट एज अ कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन अगर तुम्हें लग रहा है कि गलती हुई है तो यू शुड हैव अगेन रिप्लेस दैट ना। एंड दिस इज एक्चुअली कैप्चर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तभी दीप्ति अपना जो रैशनल था वो इग्नोर कर देती। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू सेट नाउ। Rakesh, who hailed from Dhanbad, worked in Jamshedpur with SPCIL, a government construction company. Although HR policies concerning job security and work-life balance attracted Rakesh to SPCIL, over time he found his work monotonous with no growth opportunities. However, the proximity to Dhanbad enabled him to visit his parents at his convenience. Recently, Rakesh applied to Grow and Prosper GNP, a multinational company engaged in construction-related operations, making inroads into many Indian states. GNP interviewed Rakesh and offered him 3 times his current salary at SPCI. ठीक है, तो अभी SPCL में काम कर रहा है, but growth opportunity है नहीं, so he has given an interview at GNP. So let's see the options. So while considering GNP's offer, Rakesh pondered over the following facts. So question पढ़ लेते before reading the points. Which of the following combinations of the above facts will best help Rakesh decide on joining GNP? तो basically क्या करना है, GNP न्यू कंपनी में जहाँ पे इंटरव्यू दिया, या तो उसके बारे में पॉजिटिव पता चले या फिर SPCIL की नेगेटिव्स पता चले। दैट विल डेफिनेटली हेल्प राकेश ऑन डिसाइडिंग टू शिफ्ट और मूव टू GNP ना, यही तो होगा। तो GNP के पॉजिटिव्स आए या फिर SPCL के बारे में थोड़ा नेगेटिव बताए, तभी तो कोई इंसान मूव ऑन कर पाएगा ना। नेक्स्ट, अब फटाफट देख लेते हैं ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन मतलब पॉइंट्स। अ रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी मेड पुअर परफॉर्मेंस पनिशेबल बाय सैलरी रिडक्शन और डिसमिसल। अब देखो ये पॉइंट, इट इज टॉकिंग नीदर अबाउट GNP एंड SPCL। तो डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट है, इट इज टॉकिंग अबाउट अ जनरल गवर्नमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पे हम इससे कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे वेदर ही शुड बी ज्वाइनिंग GNP और नॉट। ठीक है, सो स्टेटमेंट वन, यहाँ पे दोनों ही इंस्टेड जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ओवरऑल GNP एंड SPCIL दोनों के लिए तो वो होगा ना, एप्लीकेबल होगा। सो दिस इज नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फर्स्ट इज एलिमिनेट। तो ऑप्शंस देख लो, जिसमें भी फर्स्ट इंक्लूड होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट असाइनमेंट एंड GNP इज अ ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन अ विलेज नियर धनबाद। अब उसको तो ऑब्वियसली धनबाद के पास ही कुछ चाहिए होगा ना, घर के पास। सो विल दिस हेल्प मी इन डिसाइडिंग? यस डेफिनेटली, ये पॉइंट जो जिसमें भी सेकंड पॉइंट होगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प राकेश टू गो अहेड विद GNP ना, क्योंकि यहाँ पे GNP का जो फर्स्ट असाइनमेंट उसको मिलने वाला है दैट विल बी नियर धनबाद, एंड उसका प्रेफरेंस भी उसके घर के पास ही करने का है काम। सो सेकंड वाला होना चाहिए। एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन, ई विल गेट एलिमिनेटेड आउट नाउ। थर्ड इज, विद हिज करंट सेविंग्स राकेश नीड नॉट डिपेंड ऑन रेगुलर इनकम फॉर एटलीस्ट 6 months। अब देखो उसके करंट सेविंग्स मतलब अभी वो SPCL में काम कर रहा है, तो अभी SPCL में काम कर रहा है और करंट सेविंग्स अच्छा है, बिकॉज इसमें ये लिखा है नीड नॉट डिपेंड ऑन रेगुलर इनकम, तो इसका मतलब उसको SPCL छोड़ना ही नहीं चाहिए ना। दिस विल डेफिनेटली नॉट हेल्प
राकेश डिसाइड टू मूव टू जीएनपी ना, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेट। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। तो यू कैन सी नाउ ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज 542। तो एक बार देख लेना, 542 all talks about positives and GNP and negative about SPCI. ठीक है, so option A is the correct answer here. Next question. While mulling over the offer, Rakesh consulted Manikandan, his trusted senior as at SPCIL. Manikandan, who had friends in GNP, disclosed that it preferred government employees for its projects in Jharkhand, Bihar, and Chhattisgarh. Once the project is completed, GNP may not need your skills, says Manikandan. ठीक है, so there is a concern now. तो अब क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल बेस्ट इनेबल राकेश टू डिसाइड ऑन द ऑफर। अब उसको सही में जाना चाहिए या नहीं, इट्स नॉट कि उसको हाँ ही बोलना है, इट कैन ऑप्शन अगर ये भी क्लियरली फिगर आउट करके बता रहा है कि वाई ही शुड नॉट ज्वाइन जीएनपी, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। ठीक है, बट यू हैव टू मेक अ डिसीजन वेदर हाँ बोलना है या ना, वैसे टाइप का ऑप्शन ढूंढना है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज during the interview, GNP quizzed if Rakesh would sustain his relationship with his former colleagues. अब again, ये टाइप का क्वेश्चन will again not help him Rakesh to decide on the offer ना, कि तुम्हारा पिछला रिलेशनशिप विद फॉर्मर कलीग्स रहेगा या नहीं रहेगा, उस पे राकेश का क्या मतलब है ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने का। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर राकेश। Now, through social media, Rakesh discovered that Manikandan's contact who had left SPCL to join GNP is no longer with GNP. See, although it talks negatively over GNP कि उन्होंने निकाल दिया, but there is no point, मतलब यहाँ पे प्रूफ नहीं है ना कि why they left। यहाँ पे रीजनिंग गिवन नहीं है, क्या पता उन्होंने खुद अपने से छोड़ दिया हो, राइट। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया का जो रेफरेंस होता है, इट इज नॉट अ फॉर्मल वन। So again, you should not take a decision based on this social media, and also उन्होंने क्यों छोड़ा होगा रीजन भी नहीं गिवन। ठीक है, नेक्स्ट, senior level employees and at GNP who began their career in similar projects are now conned to their desk at the head office for almost a decade. अब देखो यहाँ पे तो उल्टा पॉजिटिव चीज बताई गई है ना, जो सीनियर लेवल एम्प्लॉयज है अभी के, जिन्होंने करियर राकेश के प्रोजेक्ट की तरह ही स्टार्ट किया था, नाउ दे आर स्टिल आर एट जीएनपी फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। इसका मतलब है जीएनपी में भी उतना कुछ खास नहीं है, मे बी देयर माइट हैव बीन अ स्पेशल केस फॉर मणिकंदन फ्रेंड्स ना। सो ये वाला पॉइंट तो मुझे एक्चुअली हेल्प करेगा इन डिसाइडिंग टू टेक द ऑफर ना। ये तो पॉजिटिवली बोल रहा है, एंड बोल रहा है कि सिमिलर प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया था बट नाउ स्टिल दे आर देयर विद दिस कंपनी। So obviously this is one of the strongest points. Let's explore the other options. As GNP also planned to enter two southern states, it decided to recruit again. दूसरे स्टेट में रिक्रूट करेंगे तो उससे राकेश को क्या फायदा होगा, अगेन नॉट अ रेलेवेंट पॉइंट फॉर राकेश टू डिसाइड। लास्ट ऑप्शन, मणिकंदन स्टॉप बोथ ऑफ हिज सन्स फ्रॉम टेकिंग अप प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। अगेन मणिकंदन कुछ भी करे अपने डिसीजन ले अपने सन के रिस्पेक्ट में, हाउ विल इट अफेक्ट राकेश, अगेन एन irrelevant point for Rakesh to decide. So clearly यहाँ पे ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, चलो last question from this set. Rakesh in his current job came across incidences of bribing by private sector officials. He wondered if he might have to bribe government officials while at GNP. ठीक है, उसके लिए एथिकली भी एक डायलेमा हो गया। सो questions, before reading the points you have to see the questions. Which of the following sequences of above statements is in the most appropriate descending order of bribing undertones? मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइबिंग अंडरटोन्स मतलब सबसे ज्यादा जो पॉइंट बोल रहा होगा जिसमें ब्राइबिंग डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं, मतलब ब्राइबिंग लेना पड़ सकता है, वो पॉइंट जो सेंटेंस सबसे ज्यादा बोलेगा उसको हम पहले रखेंगे। जो ऐसा पॉइंट होगा कि बोले कि ब्राइबिंग
इनडायरेक्टली अगर कुछ बोले, मतलब सबसे लीस्ट इफेक्टिव बोले कि ब्राइबिंग लेना पड़ सकता है, देन वी हैव टू पुट एट द लास्ट। ठीक है, चलो, so let's see the points now. The interviewers were puzzled how Rakesh could manage his EMIs. ठीक है, तो देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्राइबरी। देखो यहाँ पे इंटरव्यूअर्स वर पजल्ड। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है, इट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूज implies that Rakesh might be managing his finances in a way that raises suspicion na, and it will potentially hint at earning extra income, राइट। तो ये तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ये नहीं पता, सो बट ये डेफिनेटली आगे कहीं पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अभी जो तुम्हारा करंट इनकम है उसको कैसे मैनेज करोगे, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट, वन इंटरव्यूअर वॉज कॉन्स्टेंटली प्रोबिंग हाउ राकेश मैनेज टू मीट हिज प्रोजेक्ट डेडलाइंस विद लिटिल कोऑपरेशन फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। अगेन देखो यहाँ पे this question does not directly bring up bribery, but definitely it suggests a challenging work environment, क्योंकि unethical practices might be considered to get the results ना, जल्दी से काम निकलवाना हो तो अगेन। बट यहाँ पे फर्स्ट वाले से डेफिनेटली थोड़ा सा कम डायरेक्ट टोन है। अंडरटोनिंग मतलब ब्राइबरी का सबसे ज्यादा जो बोले डायरेक्ट डायरेक्ट लेना पड़ सकता है उसको पहले रखो, देन उसके बाद वाले धीरे धीरे कम टोन डाउन होने वाला बेसिकली पॉइंट। तो फर्स्ट इज अ बेटर, मतलब अ स्ट्रॉन्गर ब्राइबरी टेकिंग इंसिडेंट्स दैन सेकंड। तो फर्स्ट के बाद हमेशा सेकंड आएगा, ये तो पता चल गया। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी देखो तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस रहेंगे। सो लेट्स लुक एट द थर्ड वन। व्हाट वुड यू डू इफ योर प्रोजेक्ट हैज अ fortnight's deadline and it takes a month to obtain a permit? Asked another interview. अब देखो इस स्टेटमेंट को बोलने का क्या मतलब है। ये स्टेटमेंट, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्राइबरी ना। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट का जो परमिशन है 1 महीना लगेगा, तो तुम ऐसा प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हो इफ इट इज हैविंग अ फोर्टनाइट डेडलाइन। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट ब्राइबरी को लेके हो गया ना, तुम्हें घूस खिलाना पड़ सकता है, इन अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्राइबरी वाला क्वेश्चन और अ डायरेक्ट ब्राइबरी वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट से भी पहले आएगा थर्ड वाला स्टेटमेंट। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस अभी, तो ऑप्शन ये सी भी एलिमिनेट हो गया एंड डी भी एलिमिनेट हो गया, बी तो हो ही गया था, राइट। एंड इफ यू लुक एट इट, अब ए एंड ई ही बचा है। तो वी हैव टू डिसाइड ऑन द फोर्थ सेंटेंस कि ये लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होगा या मोर स्ट्रॉन्गर देन वन एंड टू। A question that intrigued Rakesh was, should a pack of dacoits share their loot with one of their gang who had killed a bystander against their motto, thou shalt not kill? अब देखो ये एक philosophical and ethical question है, and it is more abstract, ये डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, एक अगर philosophical वे में पूछा गया है, it is not a direct question on bribery, तो obviously जो फोर्थ वाला होगा वो लास्ट में आएगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑर्डर इज 3124। okay, so E is the correct answer here. I hope this set is clear to everyone, and still if you haven't got this question correct in one go, just pause this video and again try to go through the questions. ठीक है, and set को भी एक बार देख लो। चलो, let's see the new set now. Two industrial towns, Jayanagar and Ramnagar, about 15 kilometers apart, are similar in land area, population, ethnic diversity, and per capita incomes. मतलब similar है. And Jagdeep Singh owns a bakery named Le Bagwit in Jayanagar. He specializes in croissant, masala bread, and whole wheat bread. Eggless cakes are also a favorite. ठीक है, तो ये सारे उसके specialization थे. Now, among the four bakeries in Jayanagar,
Jagdeep's bakery with a market share of 30% is second only to the oldest Le Creuset bakery whose market share is 40. तो मतलब जगदीप का जो बेकरी है आफ्टर Le Creuset bakery, it is the second in terms of market share. Now Le Creuset commands a royal customer base and does not offer eggless variety. तो ये एक एंटरिंग पॉइंट हो सकता है फॉर जगदीप, बट लेट्स सी द क्वेश्चंस. अभी ऐसे ही रैंडमली गेस नहीं कर सकते. सो लेट्स actually see the question. So the first question is, Jagdeep has decided to open a branch in Ramnagar. Which of the following facts about Ramnagar will best support his decision? So the first point is 3% of Lay Beckwith's current revenue comes from Ramnagar. So this is a bakery owned by Jagdeep himself. ठीक है. तो although 3% might seem like an insignificant amount here, but यहाँ पे काफी हद तक ये डिसाइड करने में हमें हेल्प कर सकता है. सो आई एम जस्ट नॉट एलिमिनेटिंग दिस ऑल टुगेदर बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दिस. तो अभी सेफ रखते हैं. इफ वी फाइंड अ बेटर ऑप्शन देन दिस देन वील गो एट विद दैट, अदरवाइज इसको अभी सेफ रखा है. नेक्स्ट ऑप्शन, जगदीप हैज मैनेज टू अक्वायर अ बिग स्पेस इन रामनगर एट अ नॉमिनल रेंट. अब देखो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज नॉट हेल्पिंग मी आइडेंटिफाई और टेक अ डिसीजन कि क्यों मुझे रामनगर में ओपन करना चाहिए. जस्ट बिकॉज वहां पे अक्वायर कर रखा है बिग स्पेस डज नॉट मीन कि उसको सेटअप कर देना चाहिए. यू शुड ही शुड ऑल्सो लुक एट द अदर फैक्टर्स ना. तो यहाँ पे बी डज नॉट मीन कि जस्ट बिकॉज ही हैज टेकन रामनगर बट डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द मार्केट सिनेरियो ना. तो दैट्स व्हाई ऑन दिस बेसिस आई एम रिजेक्टिंग दिस. Before starting his own bakery, Jagdeep was supplying bread to most bakeries in Ramnagar. अब देखो ये टेम्पटिंग ऑप्शन लग सकता है बिकॉज ये इसको पढ़ के आई कैन ऑल्सो फिगर आउट कि हाँ मे बी ही माइट नो द मार्केट बट ही वॉज सप्लाइंग ब्रेड. इसका क्या मतलब है, उसको कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था. वो रिटेलर्स या फिर जो भी उसका काम था, ही वॉज जस्ट सप्लाइंग ब्रेड्स. तो इसका क्या मतलब निकल के आ सकता है, ही माइट नो, ही माइट नॉट नो द मार्केट ट्रेंड्स. ठीक है. जस्ट बिकॉज यू आर सेलिंग थिंग्स टू अ पर्टिकुलर रिटेलर और वट एवर इट इज डज नॉट मीन कि तुम्हें कस्टमर के साथ एंगेज करने का मौका मिलता होगा. सो बेसिस ऑन दिस स्टेटमेंट ऑल्सो आई कैन नॉट जज वाई ही शुड open up the market in Ramnagar. Next, Ramnagar is served by four bakeries with the two largest bakeries having market shares of 55 and 25. तो अब देखो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तो जगदीप और स्केप्टिकल हो जाएगा ना, मतलब डाउट में पड़ जाएगा बिकॉज 55 एंड 25 इज ऑलमोस्ट 80%. तो इसका मतलब है जगदीप के पास अब मार्केट कैप्चर करने के लिए जगह ही नहीं बची ना. 80% मार्केट ऑलरेडी हैज बीन कैप्चर. तो एंट्री पॉइंट तो दिखेगा नहीं ना यहाँ पे. इंस्टेड यहाँ पे जगदीप डिस्करेज हो जाएगा रामनगर में अपना बेकरी खोलने से. तो डेफिनेटली नॉट द करेक्ट आंसर. लास्ट इज लेक क्रोजॉन्स रामनगर ब्रांच स्ट्रगल्स विद द मार्केट शेयर. अगेन दिस इज काइंड ऑफ discouraging or this will discourage Jagdeep to open a branch in Ramnagar because यहाँ पे struggle हो रहा है. So I can clearly see although 3% might not seem a significant amount, but it is the best course of action to take a decision on Ramnagar. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इस सेट के. जगदीप विशेस टू ओपन अ 100% एगलेस ब्रांच इन रामनगर. नाउ टू एक्सप्लोर feasibility he collected the following facts. अब क्वेश्चन पढ़ लेते बिफोर रीडिंग दीज. फ्रॉम द कॉम्बिनेशन बिलो व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस. चूज द वन दैट बेस्ट सपोर्ट्स जगदीप्स डिसीजन. अब जगदीप का डिसीजन था कि उसको 100% एगलेस ब्रांच खोलना है. तो ऐसे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की एगलेस जो स्टोर खोलना चाहता हूँ वो अच्छे से चलेगा और समथिंग पॉजिटिव अबाउट द एगलेस मार्केट दैट यू हैव टू प्लेस इन फ्रंट. ठीक है. तो स्टेटमेंट फटाफट से आप पढ़ते हैं. एगलेस प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ ले बेगवेट सेल्स. तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट ही करता है बिकॉज उसको खोलना तो है 100% एंड उसकी स्पेशलिटी है एंड एगलेस प्रोडक्ट्स 30% ऑफ ले बेगवेट सेल्स है. तो दिस इनफैक्ट इज अ पॉजिटिव ट्रेंड. अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है या नहीं वी हैव टू डिसाइड बट यस आई एम टेकिंग दिस सो दैट हमें ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन लेना है वो याद है. ठीक है. ऑर्डर हम बाद में डिसाइड कर लेंगे.
Second is at least 20% of all bakeries sales in Ramnagar is from eggless products. Again, a strong point फॉर जगदीप टू मेक अ डिसीजन कि उसको रामनगर में एगलेस ब्रांच खोलना है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 20% ऑफ बेकरी सेल्स एगलेस प्रोडक्ट्स ही आता है. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई जगदीप शुड ओपन अ ब्रांच. तो ऑब्वियसली देखो सेकेंड वाला इज अ मोर कन्विंसिंग आंसर देन फर्स्ट. तो इसका मतलब है जो भी ऑर्डर होगा टू पहले आएगा वन से, एंड बोथ विल कम. थर्ड इज द एगलेस वेराइटीज ऑफ ले पिक्विट्स कंटेन माइन्यूट ट्रेसेस ऑफ एग. अब ये तो उल्टा पॉजिटिव नेगेटिव साइड ऑफ वो दिखा रहा है कि जो इनका एगलेस वेराइटी उसमें ट्रेसेस ऑफ एग है, ये तो डिस्करेज हो जाएगा. मतलब दिस विल नॉट हेल्प मी. तो जहां पे भी ऑप्शन 3 गिवन होगा दैट वी कैन डेफिनेटली एलिमिनेट. नेक्स्ट, ले बेक्विट्स currently makes 3% of its revenue from Ramnagar customers and all of it comes from eggless products. Yes, again a strong point कि क्यों उसको रामनगर में एगलेस ब्रांच खोलना चाहिए. तो जस्ट यू नीड टू डिसाइड 2 4 1 में क्या ऑर्डर होगा. बट यस, 2 पहले आएगा देन 1, बट बिकॉज इट इज अ मोर कन्विंसिंग आंसर देन बाय जगदीप शुड ओपन अ एगलेस ब्रांच इन रामनगर. ठीक है, तो 2 4 1 तो आएगा. एंड यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे क्रुसॉन्स रामनगर ब्रांच स्ट्रगल्स, तो इसका मतलब ये डिस्करेज कर रहा है. अगेन 2 4 1 में से ही आएगा. एंड इफ यू सी दी ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन सी यू विल फाइंड वेयर यू हैव 2 4 and 1 टुगेदर. ठीक है, तो ये काफी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ऑलवेज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस गिवन. ठीक है, एलिमिनेट करना इजी हो जाता. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेट. फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, जगदीप हैज लर्न दैट अमेरिकंस यूज देयर ओन ovens टू बेक रेडी टू बेक बेकरीज. ठीक है, घर पे लाके रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स स्टार्ट करते हैं, सोल्ड बाय सम बेकरीज. दिस idea is apparently catching up in Indian metros as well. Now Jagdeep wants to try this out in his bakery. He has gathered the following facts. ठीक है, तो रेडी टू मेक प्रोडक्ट्स उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे टू सपोर्ट हिज डिसीजन. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बिफोर सेलेक्टिंग दी. सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द अबव फैक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस. तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस मतलब हमें सबसे पहले वो पॉइंट रखना है जो कि रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स सही डिसीजन है अपने शॉप में रखने का, वो वाला बताए. ठीक है, तो लेट्स क्विकली सी द सीक्वेंस. अब देखो सीक्वेंस में सारे ही ऑप्शन आएंगे, तो वी हैव टू अरेंज दैट एक्चुअली. यूएस बेकरीज दैट आल्सो सेल रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स अर्न हायर रेवेन्यूज कंपेयर टू दोज दैट डू नॉट. ऑब्वियसली अब एनालॉजी ले रहे हैं यूएस मार्केट का, बट ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में वो चलेगा या नहीं चलेगा, अगेन दैट डज नॉट एक्सप्लेन. बट यस, एग्जाम्पल ड्रॉ करके कि जो रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स रखते हैं उधर हायर रेवेन्यूज होता है. बट यस, ये वाला जो पॉइंट है ये ज्यादा सिग्निफिकेंस रख नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमें इंडियन मार्केट के बारे में नहीं पता ना उतना भी. तो ये लोअर दी ऑर्डर रहेगा. यस, बट इंपॉर्टेंट है इसको रखना. बट लोअर दी ऑर्डर में रहेगा, मतलब शुरू के उसमें मैं बैड शुरू के उसमें 1 आएगा तो डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज दिस डज नॉट हेल्प मी एक्सप्लेन कि इसका सक्सेस इंडियन मार्केट में भी होगा. ठीक है, तो ऑप्शन सी तो यही एलिमिनेट हो गया. नाउ लेट्स सी. अब देखो 1 आएगा, जरूरी नहीं है लास्ट में आएगा, बट यस उससे पहले या फिर थर्ड लास्ट भी हो सकता है. सेकेंड इज अराउंड 7% ऑफ जगदीप्स रेगुलर कस्टमर्स ओन बेकिंग ovens इन देयर होम्स. अब देखो ये अच्छा पॉइंट है. इट इज अ वेरी गुड पॉइंट बाय जगदीप कैन इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज घर ले जाके उनको बस अवन नहीं तो चलाना है ना. अब अवन नहीं होगा कस्टमर के पास तो मुश्किल हो जाएगा ना. बट ही नोस 7% इज अ गुड अमाउंट, इज अ गुड नंबर. हमें नहीं पता टोटल कितना है, बट 7% जो भी है, इट डेफिनेटली सपोर्ट्स हिज डिसीजन टू स्टार्ट विद रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स इन हिज बेकरी. ठीक है, तो 2 डेफिनेटली हायर अप द ऑर्डर तो आ सकते हैं. ठीक है, नाउ let's see the third point. The sale of baking ovens in India is forecast to increase by 12% every year for the next 3 years. अब देखो कौन सा इन दोनों में से इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा है, अवन घर पे होना या फिर बेकिंग ovens
जो है सेल उसका ज्यादा होना। ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी, उसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए ना। अब नेक्स्ट 3 इयर्स के बारे में, ये फ्यूचर के बारे में बात की गई। हाँ डेफिनेटली इट इज अ गुड पॉइंट टू कीप इन माइंड, क्योंकि अगले 3 साल में वो इंक्रीज होगा। बट आज के डेट में अब बेटर अप्रोच इज, आज के डेट में लोगों के पास 7% लोगों के पास ऑलरेडी अवंस है, तो मैं आज अगर बेचूंगा तो वो बिक जाएगा। तो 2 विल हैव अ बेटर रैंकिंग देन 3। ठीक है, तो 2 के बाद मतलब कोई भी ऑप्शन होगा हमेशा 2 के बाद, मतलब इट्स नॉट दैट कि इमीडिएटली नेक्स्ट होगा, बट यस 3 विल हैव अ लोअर रैंक देन 2, क्योंकि 2 मेरा आज का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। 3 इज सॉल्विंग अ फ्यूचर प्रॉब्लम, बट यस अगेन सिग्निफिकेंट है देन 1। तो ऑप्शंस देख लो, जिसमें भी अगर 3 पहले हुआ 2 के, वो गलत हो जाएगा। नाउ ये वाला भी गलत हो गया, सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। अब देखो यहाँ पे 1 का ऑर्डर आई सेड कि ये बाद में आएगा, यहाँ पे फर्स्ट है, बट लेट्स सी अगर 5 पहले आया या नहीं। 5 और 3 में अगर डिसाइड हो गया देन डेफिनेटली हम दोनों में से चूज कर सकते, तो 5 पढ़ लेते। इन इंडियन मेट्रोज रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स गिव हायर प्रॉफिट मार्जिन्स कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट्स। अब देखो 5 और 3 में मोर सिग्निफिकेंट कौन है? इन ऑर्डर टू गिव मी द आंसर, इन इंडियन मेट्रोज रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स गिव हायर प्रॉफिट मार्जिन्स कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट्स, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा होगा? यस देखो, यहाँ पे अगर फोरकास्ट करोगे तो डेफिनेटली फिर इसके बाद अगर जब इंस्टॉल हो जाएगा, लोगों के पास आ जाएगा, देन यू कुड थिंक ऑफ हायर प्रॉफिट मार्जिन्स ना। बिक्री होगी, व्हेन यू विल सेल ऑल द थिंग्स देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ मार्जिन्स ना। पहले मार्जिन थोड़ी ना आएगा, पहले प्रोडक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, देन फोरकास्ट होगा, देन पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ प्रॉफिट्स ना। तो 3 विल ऑलवेज कम बिफोर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 3 4 5 1 4 इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट इट 50% ऑफ जगदीप्स रेगुलर कस्टमर्स आर फुल टाइम वर्किंग कपल, सो दिस इज द लीस्ट इंफॉर्मेटिव थिंग विच शोज कि इंडियंस को रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स पसंद आ सकते हैं। मतलब ये आई एम 100% श्योर कि 4 लास्ट आएगा। ठीक है, एनीवेज ए एंड डी में दोनों में ही 4 लास्ट है, बट यस जब लोगों के घर में बेकिंग अवंस होंगे तभी तो जाके बाद में हम सोचेंगे ना प्रॉफिट का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट सेट पे चलते हैं अब हम। A powerful, intelligent king Vanamali once ruled over an ancient kingdom, Vanrajya. The kingdom was known for its high mountains and sprawling plains. So दो टाइप के landscapes थे, high mountains and plains. And 90% of its land was under forest cover. Trade in forest produce was the mainstay of its economy, supported by subsistence agriculture. With the increase of population over time, the forest in the plains was cleared for agriculture. ठीक है, तो प्लेन्स जो है उसको एग्रीकल्चर सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा क्लियर करना पड़ा था। द फॉरेस्ट इन द माउंटेन्स कंटिन्यू टू सप्लाई न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर एंड अबंडेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द प्लेन्स। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चरल yields were bountiful. The plains prospered as compared to the mountains. Obviously थोड़ा एग्रीकल्चर था तो वहां पे पैसा ज्यादा बन रहा था एज कंपेयर टू दी माउंटेन। तो आप क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ सकता है इसमें। The first question of this set is, the increasing prosperity of the plain people tempted those in the mountains to divert forest land for agriculture. Obviously, अब mountains में क्योंकि वो दिख नहीं रहा था प्रॉफिट, एंड सीइंग द कंडीशंस ऑफ द प्लेन की दैट दे आर प्रॉस्परिंग, उनको भी टेम्प्ट हुआ कि हमें भी अपना माउंटेन्स के जो पेड़ है उसको काट के एग्रीकल्चरल लैंड सेटअप करना चाहिए। Now, Vanamali was afraid that expansion of agriculture would result in deforestation of the mountains. Absolutely a concerning point. Now, which of the following is the best course of action for Vanamali to conserve the mountain forest? तो क्या argument दे कि वो conserve कर पाए forest को? Institute a mechanism that ensures plain people pay royalty to be transferred to mountain people for maintaining forest cover. So this is absolutely doable. क्यों? क्योंकि तुम्हें बोल रहे हैं कि दिस वुड डिस्करेज माउंटेन पीपल टू कट द फॉरेस्ट ना, बट एट द सेम टाइम रॉयल्टी पे करने से क्या होगा कि
यहाँ पे इट्स नॉट अनडिस्करेजिंग थिंग, हमें दोनों पार्टीज के पॉजिटिव्स देखने हैं। अब एग्रीकल्चर प्लेन में सेटअप हो सकता है, बट अगर माउंटेन में ज्यादा हो जाएगा तो डिफॉरेस्टेशन के खतरा है। तो यहाँ पे ए इज डायरेक्टली माउंटेन पीपल टू इम्प्रूव फाइनेंशियली ना। फाइनेंशियल क्राइसिस ही तो बेसिकली हमें सॉर्ट आउट करना था। माउंटेन पीपल का प्रॉब्लम क्या था, उनको ज्यादा पैसे नहीं आ रहे थे, दैट्स व्हाई दे गॉट टेम्पटेड ना। तो फाइनेंशियल स्टेटस अगर इंप्रूव कर दोगे देन दैट वुड हेल्प टू सॉल्व द पर्पस ना। तो यहाँ पे आई कैन सी this as a potential answer. But let's see the other ones. Declare a mountain day where plain people meet and thank mountain people again. कुछ भी given है यहाँ पे, this is not the correct course of action. Constitute a committee to protect the forest with powers to punish those who fell trees. Again, punishing them because just because they want to earn a livelihood, that is not altogether a better way. Obviously, first is a better one than this. Next, urge the elders of the mountains to come up with agricultural practices that to ensure no erosion of forest occurs. Again, agricultural practices के लिए तो उनको काटना पड़ेगा ना, ये तो उल्टा ऑपोजिट हो जा रहा है। इट वुड नॉट इम्प्रूव द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द माउंटेन पीपल ना। तो यहाँ पे इट इज रॉन्ग। लिवाय टैक्स ऑन ट्रेडेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेन्स टू क्रॉस सब्सिडाइज सप्लाईज टू माउंटेन पीपल। अब यहाँ पे देखो, टैक्स लिवाय करना यहाँ पे डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा। टैक्स तो गवर्नमेंट ज्यादा रखेगी ना। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट, सी दिस इज ऑल्सो अ गुड आंसर, मतलब बट इफ आई हैव टू चूज बिटवीन ए एंड ई, यहाँ पे ज्यादा हार्म नहीं होगा प्लेन पीपल को, बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। यहाँ पे तुम बोल रहे हो लिवाई टैक्स करो प्लेन पीपल पे टू क्रॉस सब्सिडाइज सप्लाईज। यहाँ पे सप्लाई को क्रॉस सब्सिडाइज करके क्या फायदा होगा? दिस डज नॉट हेल्प द माउंटेन पीपल ना। माउंटेन पीपल को हेल्प होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ बेटर वन, दिस इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वनमली अफ्रेड ऑफ फर्दर डिफॉरेस्टेशन इशूड अ दिक्कत against felling of trees in the mountains. In due course, thanks to the booming agriculture, the king, along with plain people, began to prosper. However, mountain people became relatively poor thanks to Vanmali's diktat. Although deforestation होने से बचा दिया, but they were relatively poor. So question क्या पूछ रहा है यहाँ पे? Which of the following options should mountain people choose to best protect their long term interest? अब long term interest में mountain people को भी तो पैसा चाहिए होगा ना, बिकॉज दे आर रिलेटिवली पुअर। तो अब माउंटेन पीपल को बेसिकली ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि उधर उनको पैसा आता रहे। सेल फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली टू द नेबरिंग किंगडम्स। फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली करोगे, दिस डज नॉट अगेन हेल्प मी एक्सप्लेन कि क्यों उनका लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अगेन दिस इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। सीक एम्प्लॉयमेंट इन द प्लेन्स। अगेन, अब माउंटेन्स प्लेन्स पे जाके वेदर यू विल गेट एन एम्प्लॉयमेंट और नॉट, इट इज नॉट वेरी मच क्लियर। ठीक है, हमारा इस पूरे क्वेश्चन में मोटिव ये होना चाहिए, माउंटेन पीपल टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड सस्टेन द अर्निंग। राइट, फॉरेस्ट भी कंजर्व रहना चाहिए, एट द सेम टाइम उनका जो अर्निंग्स है वो भी सस्टेनेबल वे में चलता रहना चाहिए। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। इग्नोर वनमलीज दिक्कत। अगेन यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज यू नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट, दिस इज रॉन्ग। चार्ज अ प्रीमियम ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड इशू हंटिंग परमिट्स। यस, डेफिनेटली यू कैन डू दिस ना। हंटिंग परमिट्स के लिए इशू करोगे तो तुम चार्ज भी करोगे, प्रीमियम भी ले रहे हो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, जो भी तुम सप्लाई कर रहे हो फॉरेस्ट से उसके लिए प्रीमियम कर रहे हो, ताकि तुम्हारा पैसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे विद रिस्पेक्ट टू माउंटेन पीपल आई एम टॉकिंग। एंड यहाँ पे इशू हंटिंग परमिट्स विच वुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। ठीक है, तो दोनों ही हमारा मोटिव यहाँ पे मीट हो रहा है, सो दिस इज माई बेस्ट आंसर। ठीक है, ये स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस सेट के। द विलेज एल्डर्स ऑफ द माउंटेन्स हैड इन्फॉर्म्ड बनमली about the presence of precious metal in abundance under a large part of the forest. They pleaded with him to repeal his diktat and permit felling of trees for mining. Vanmali knew that the precious metal would make his kingdom prosper,
However, he was worried that mining would reduce the flow of nutrients, water and forest produced to the plains. Vanmali's advisor, Van Pandit, presented the following action plans for consideration. अब उसको पता है कि माइनिंग टू सम एक्सटेंट करना भी पड़ सकता है, बिकॉज अगर ये प्रेशियस मेटेरियल मिल जाए तो हमारा जो किंगडम है वो प्रॉस्पर करे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बिफोर सीइंग द पॉइंट्स। Which of the following sequence in the descending order of their ability to contribute वन राज्य सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी? तो मतलब ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी भी देखना है, पूरे जो किंगडम है उसका सस्टेनेबिलिटी देखना है। तो मतलब माइनिंग करना भी पड़ सकता है, एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट द ट्रीज आल्सो। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में हमें ऑप्शंस चूज करना। Repeal the forest diktat and charge hefty royalty for mining in the mountains again. Altogether, this is not the best course of action. तो यहाँ पे वी नो डेफिनेटली वन कभी बाद में ही आएगा, इफ नॉट द लास्ट, लास्ट में ही कहीं रहेगा। परमिट माइनिंग इन द माउंटेन्स एंड एनफोर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, सेकेंड से तो एटलीस्ट बेटर है। ठीक है, सेकेंड से एटलीस्ट बेटर है, आई कैन से दैट। Permit mining mountains and begin afforestation in the plains. Again, out of 2 and 3, I will rank 3 above. It is in a better interest. 3 has a better interest for one Rajya than 2. ठीक है, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ साइड थिंग, बट एफॉरेस्टेशन अगर प्लांट्स उगाओगे इट इज अब इवन अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो 3 विल प्रिसीड 2। नाउ कंटिन्यू विद द फॉरेस्ट दिक्कत इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे द प्रॉब्लम इज, फॉरेस्ट दिक्कत करोगे तो देन तुम्हारी माइनिंग एक्टिविटी ऑल टुगेदर वो चल नहीं पाएगा। सो डेफिनेटली 3-2 से तो कहीं बाद में ही आएगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि 4 लास्ट में आएगा, बट 1 and 4 लास्ट में आएंगे, दैट वी नो। तो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, 3-2 पहले आना चाहिए, एंड यहाँ पे 3 लास्ट में आ रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग, एंड 4 इधर आ रहा है, तो दिस इज रॉन्ग एब्सोल्युटली। अब 4 इधर इसमें पहले कर दिया, दिस इज ऑल्सो 4, 3 में भी गलत है यहाँ पे। नाउ यहाँ देखो 3 आगे है, 2 इधर है, तो माइट बी पॉसिबल आंसर। तो लेट्स सी, फिफ्थ को डिसाइड करना होगा वेदर इट विल हैव अ हायर सी ओवर 3 और नॉट, बिकॉज डी एन ई ऑप्शन से ही बचे ना। तो फिफ्थ देख लेते हैं। परमिट लिमिटेड माइनिंग इन रोटेशन बट मेंटेन द फॉरेस्ट दिक्कत इन द रेस्ट। यस, देखो यहाँ पे तुम परमिट भी कर रहे हो माइनिंग इन रोटेशन, ऑल्सो जो फॉरेस्ट दिक्कत है विच इज टू कंजर्व द फॉरेस्ट, ये भी इंश्योर हो रहा है। तो विच इज अ बेटर ऑप्शन, 5 या 3? yes, obviously 5 ना, 5 solves the overall purpose. Then permit कर दो mountains में mining and afforestation. So 5 will precede 3. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, और ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेट ऑफ दिस होल सीरीज। So you are a human resource manager in the HR department of Vikas Educational Charitable Trust. You organize and support recruitment and training, provide secretarial support for disciplinary investigation, and keep personal records of staff. You report to Miss Dilipa, one of the 2 senior HR managers who reports to the HR director. ठीक है, so let's see the question. First question. For the post of consultant professor in the trust, 2 internal candidates, Mr. Rana and Mr. Charan, were interviewed. Mr. Charan was selected as he was considered to be academically gifted with impressive leadership skills, even though he had less experience than the other. 3 days later, Mr. Rana came to your office complaining that the selection was unfair as he had more experience than Mr. Charan. तो राणा के पास ज्यादा एक्सपीरियंस था, इस वजह से वो कंप्लेन करने आ गए। Now, what is the best way to handle the issue raised by Rana? So let's see the options. First is, tell Mr. Rana that you empathize with him, but the process was fair and details of the assessment could be seen. Yes, this is the best possible way. Obviously, सारा का सारा detail नहीं, but assessment कैसा हुआ, that an HR can definitely share with the internal candidate ना, कि किस किस बेसिस पे तुम लोग की वो हुई है जजमेंट, नॉट टेलिंग देम कि इतने पॉइंट्स मिले, बट यस
प्रोसेस में क्या क्या फैक्टर्स थे दैट लेड us to decide why Mr. Charan was selected over you. ठीक है? At the same time, you are also empathizing with him, ना? So this is the correct or the best way to address the overall situation. अब बाकी options देख लो. It won't be as good as this one. Tell Mr. Rana that if he is interested, he could write to the HR director again. Escalation यहाँ पे नहीं कर सकते तुम ऐसे करके. If this HR refuses to help you. HR ही तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर दे रहा है ना. तो this is always a better option. तो ये तो eliminate हो गया. Offer tea to Mr. Rana and say that you can understand why he is upset. Let him have a bit of a moan again, not the correct way of addressing any problem. Tell Mr. Rana that the institute finds the right person for the job, not the one who has been around the longest. अब देखो ये थोड़ा सा rude sound कर रहा है. यहाँ पे empathy show करके then you are saying this is obviously a better one. This is the formal way of saying such things. Warn Mr. Rana again, warn ऐसे नहीं कर सकते. ठीक है? तो A is the best possible way. Last question. Miss Dilipa has asked you to conduct a non-teaching staff induction training. You are to call for a tender from various agencies with specifications that include the contents, duration, experience, budget, and other relevant information. You then need to shortlist 5 agencies from a list of 20 and make a presentation within 2 days. Now review the following responses. अब क्या करना है? Best following responses in the descending order of effectiveness. हमें अब सबसे important क्राइटेरिया चूज करना है फॉर दिस ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का कैसे हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. 5 एजेंसी चूज करनी है आउट ऑफ 20. तो फर्स्ट इज रेट ऑल 20 एजेंसीज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 on information available. अगेन यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन. ये लास्ट में तो हो नहीं सकता बट आई विल कीप दिस फॉर श्योर क्योंकि 3 करने हैं 4 में से तो 1 को तो मैं रखूंगा. Select the 5 lowest bids based on price quoted. Yes, one of the important factors क्योंकि यहाँ पे बजट भी लिखा हुआ था ना. I will keep this. But obviously first पहले आएगा then second. है ना? क्योंकि हमें तो शॉर्टलिस्ट करना है ना. बाद में हम you can go through the budget ना. Right? तो first पहले आएगा then second. So if you look at the options, ये ठीक है अभी ये ठीक है. इसमें तो फर्स्ट कंसिडर ही नहीं किया तो ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेटेड. इसमें सेकंड कंसिडर नहीं किया दिस आल्सो गेट्स एलिमिनेटेड. दिस आल्सो यू आर जस्ट लेफ्ट विद डीएन. तो 3 का प्रेफरेंस देख लेते हैं. सीक सिलेक्शन क्राइटेरिया फ्रॉम दिलीपा एंड द एचआर डायरेक्टर एंड शॉर्टलिस्ट द बिडर्स अकॉर्डिंगली. यस बेस्ट थिंग. अब दिलीपा ने ऑर्डर दिया है ये करने के लिए तो ऑब्वियसली सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया दिलीपा से पूछोगे ना. तो उसने तो जस्ट ये बोला था. सो द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू आस्क डायरेक्टली फ्रॉम दिलीपा की क्राइटेरिया क्या है. ऑन बेसिस आई कैन शॉर्टलिस्ट दीज. तो ऑब्वियसली 3 will preside over 1 and 2 ना. तो ऑप्शन ई is definitely my correct answer. ठीक है? So I hope guys you all enjoyed this particular series of decision making questions. And if you have followed till this question, then definitely I am very hopeful that you will get very good marks because these kind of questions are directly taken from previous year XAT papers and on similar lines only XAT prepares the question papers. ठीक है? So I'll end the session here. And also guys, if you want to check out our other courses here, and these are some of the testimonials which we have collated and you can as well as read them. ठीक है? ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर एंड दिस करंट ईयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिव्यूज दे रखे हमें. So you can go through them. You can pause. ठीक है? And JBIMS में भी बहुत सारे converts रहे हैं from our previous batches. You can see this. ठीक है guys? So I hope you all enjoyed this session and all the best for that. ठीक है? चलो. Bye bye.